Vamos lá, drop one half, drop one to it. आपल्या सूचना दिल्याशिवाय कृपा करून जाऊ नका. आपल्या सूचना महत्वाच्या आहेत. त्या सूचना दिल्यानंतर आम्ही बाहेर जाऊ. एवढी फक्त आपल्यासमोर विनंती करतो आणि आपल्यासमोर हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। नहीं, मेरे को कोई आवाज नहीं, तो पिक्चर भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं आ रही। अब ये हेलो। आवाज आ रही है आपकी, लेकिन जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी कोई आवाज नहीं आ रही है और ना ही पिक्चर दिख रहा है। हाँ सर, वो उसकी आवाज, प्रोग्राम की आवाज भी नहीं आ रही और पिक्चर भी कोई दिख नहीं रहा है।
Continue.
So, dear friends, today I am standing before you just like a wrong number. What I am saying, this word, the wrong number. Already we have a decided guest, Honorable our Vice Chancellor, Dr. Bokhare sir. But unfortunately, due to his health issue, he is unable to join today as a inaugural function. So yesterday, Dr. Kishore and Dr. Shinde come to our college and told me, sir, we have to change our inaugural function and please you inaugurate this national level seminar. लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी, एक कहावत नहीं, एक एडवर्टाइजमेंट चल रही है टीवी पे कि दाग अच्छे होते हैं, तो उसी प्रकार कभी कभी रॉन्ग नंबर भी बहुत अच्छे होते हैं. तो एनीवे, गोवाना यूनिवर्सिटी गडचिरोली, डॉक्टर सच्चिदानंद मुनगंटीवार नाइट कॉलेज चंद्रपुर, सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपुर and Rajiv Gandhi College of Management Studies, Ghansoli, Navi Mumbai, in collaboration with Association of All Computer Science Teachers, jointly organized one-day methodologies and plagiarism prevention techniques, a comprehensive workshop for faculty, researchers, and students. Today we have a president of this function, Honorable Dr. Suravarji, Secretary Sri Kanyaka Mata Seva Sanstha Chandrapur. Our keynote address is Professor Ajay Kushwaha sir, Charvai University, Noida, officiating principal of the college, Professor Santosh Shinde sir, Dr. Kishore sir, our ex-principal Dr. Ingole, and Dr. Dinesh Gabne, principal RGCMs Navi Mumbai, and all the participants, teachers, students, research scholars, and dear friends. Today I am not delivering any speech regarding research work or inaugural function.
I want to ask 2-3 questions, and I'm interacting with you. What things is going on in the scenario of research work or PhD work? ये अच्छा टॉपिक चुना है, उसके लिए आई कांग्रेचुलेट all the organizers, because methodology and plagiarism is one of the major part of your research and thesis. लेकिन मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, टीचर्स है, जो रिसर्च करने वाले हैं या जो गाइड है यहाँ पर बैठे हुए, क्या सही में रिसर्च हो रहा है? हम एक पीएचडी का थीसिस बनाते हैं या कोई रिसर्च वर्क करते हैं, तो क्या रिसर्च हो रहा है? रिसर्च का मीनिंग क्या है? जब हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई कंक्लूजन पे आते हैं, तो वो थीसिस या जो भी आपका रिसर्च वर्क है वो गवर्नमेंट के पास जाए और उस कंक्लूजन के आधार पर गवर्नमेंट कुछ अपनी योजना बनाए, स्कीम बनाए। क्या ऐसा हो रहा है? मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, when I went to so many other universities for taking PhD Viva as an examiner. When I asked the question to the research scholar, why you select this topic? He have no answer. हमने PhD का Viva लेना ही छोड़ दिया। In the year 2005, I did my PhD. My guide was Dr. Tapan Kumar Datta. He is a gold medalist of LNIP, Rani Lakshmi National Institute of Physical Education, being university situated at 100 acres in Gwalior. जब हमने उनके अंडर में PhD किया तो 2005 में मीन क्या होता है, व्हाट इज मीन, व्हाट इज मोड, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज परसेंटाइल, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन, व्हाट इज टी रेशियो, व्हाट इज एफ रेशियो, ये खुद हमने उनके साथ रात रात भर बैठकर कैलकुलेशन किया है। लेकिन आज जो सिनेरियो हमको दिख रहा है कि एक पैकेज डिसाइड होता है, मीन्स राइट फ्रॉम योर सिनॉप्सिस टू अप टू द टू अवर डिग्री। तो क्या हम रिसर्च कर रहे हैं? और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, हम क्या गेन कर रहे हैं? एजुकेशन फील्ड में जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो ये सारी चीजें, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जब हम कोई चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं तो आपने वो स्टडी करना चाहिए। और ये जो मेथडोलॉजी का जो पार्ट है, जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, जो प्लैगियरिज्म के बारे में आपको आज बताया जाएगा, विश्वास सर नोएडा से आए हुए हैं। मैं सभी रिसर्चर्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा जो रिसर्च के फील्ड में हो रहा है बहुत दुख होता है कि स्टूडेंट्स कुछ नहीं करता है, रेडीमेड थीसिस उसके हाथ में आता है, उसका वाइवा होता है और उसको डिग्री अवार्ड होती है। ऐसे डिग्री को लेकर हम क्या करेंगे? इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका जो टॉपिक है वो बहुत इनोवेटिव होना चाहिए। टॉपिक सर्च करने के लिए बहुत सारा टाइम रिसर्च स्टूडेंट्स ने उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। मेरे अंडर में फर्स्ट स्टूडेंट अवार्डेड इन माय सुपरविजन, कैन यू इमेजिन व्हाट इज हर टॉपिक? इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ऑन जुवेनाइल डायबिटीज। इतना सुंदर रिसर्च हुआ है कि बचपन से जिनको डायबिटीज है बाय बर्थ, क्या उसके कंट्रोल के लिए फिजिकल एक्सरसाइज का कुछ उपयोग हो सकता है? मैंने 2005 में पीएचडी किया, मुझे आज भी मेरा टॉपिक याद है। हम जब जाते हैं वहां पर वाइवा लेने के लिए तो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर को उनका टॉपिक भी पता नहीं होता। 20 साल पहले मैंने जो रिसर्च किया आज मुझे याद है। मेरा टॉपिक था कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फिजिकल फिटनेस
and health-related physical fitness components of tribal and non-tribal students of rural and urban area of Chandrapur district. मैं ये बातें इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी रिसर्च करेंगे। कितना कोऑर्डिनेशन आपका होता है गाइड के साथ, कितना टाइम आप गाइड के साथ बिताते हो, सुपरवाइजर के साथ बिताते हो, कितना समय आप रिसर्च सेंटर पे बिताते हो। आई एम ऑल्सो द हेड ऑफ रिसर्च सेंटर ऑफ सरदार पटेल कॉलेज। जब थीसिस आते हैं, जब हम स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, तो पता लगता है कि उनको रिसर्च के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो आप जब भी रिसर्च करोगे वो ऑनेस्टली रिसर्च करो, ताकि जब भी आपको आपके रिसर्च के बारे में पूछा जाएगा तो यू नो ईच एंड एवरीथिंग। जब हम एग्जामिनर करके वहां पे जाते हैं और when we ask very simple question to researcher, how many parts of your thesis, we don't know, right from introduction, review of related literature, methodology, conclusion, bibliography, we don't know anything. तो ये जो सिनेरियो है रिसर्च का, वो बदलना बहुत जरूरी है। और प्लेगरिज्म और ये मेथोडोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो आज हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर प्रोफेसर आए हुए हैं जो आपको बताएंगे। और गोंडवाना यूनिवर्सिटी में रिसर्च के बारे में जब मैं व्हेन आई वाज अ मैनेजमेंट काउंसिलर इन गोंडवाना यूनिवर्सिटी, हमने बहुत प्रयास किया कि इस रिसर्च को स्पेसिफिक और सिंपल कैसे किया जा सकता है। जब कोई रिसर्चर रिसर्च करता है उसको क्या तकलीफ होती है, ये हमने उसका एक्सपीरियंस किया है। जब गोंडवाना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और हमने उनको बताया कि यहाँ से रिसर्च का थीसिस जाने के बाद में 2-2 साल स्टूडेंट्स का वाइवा होता नहीं है, क्योंकि जिसके पास थीसिस गया है वो आपको डेट ही देता नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है या अभी नहीं होता, बाद में देखेंगे वगैरह वगैरह। हमने सजेस्ट किया था कि आप ऑनलाइन वाइवा लो। वो एग्जामिनर को गोंडवाना विद्यापीठ में आने की जरूरत नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में होगा, दिल्ली में होगा, पंजाब में होगा, हरियाणा में होगा, वो वहीं रहेगा, वो ऑनलाइन ज्वाइन करेगा और यहाँ से ऑनलाइन वाइवा होगा, ताकि स्टूडेंट का थीसिस जाने के बाद उसका इमीडिएट वाइवा लगेगा। और जो आने जाने का टीएडीए है जो गोंडवाना यूनिवर्सिटी बेयर करती है, उसकी भी आवश्यकता नाही। विद्यापीठाचा जो टीएडीए आहे तोही वाचेल आणि तुमचा वाइवा पण पटकन होईल। आणि बाकीच्या ज्या माल प्रॅक्टिसेस आहे, आय यूज दिस वर्ड पुष्पा सर इंटेन्शनली टू माल प्रॅक्टिसेस ज्या होत असतात, म्हणजे तो एक्झामिनर आल्यानंतर त्यांची सेवा करा, त्याला कुठल्या तरी हॉटेलमध्ये थांबवा, मग काही पॅकेट वगैरे द्या, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत या सगळ्या तुम्हाला थांबवता येतील। परंतु 5 वर्षानंतर गोंडवाना विद्यापीठाला आता जाग आली आणि गोंडवाना विद्यापीठाच्या अकॅडमिक काउन्सिलमध्ये मी प्रस्ताव ठेवला की वायवा हा तुमचा ऑनलाईन झाला पाहिजे। त्या प्रस्तावाला विद्यापीठाने मान्यता दिली आणि आता तुमचा वायवा ऑनलाईन पण होऊ शकतो। दुसरं एक महत्वाची गोष्ट अशी होती की प्लॅगरिझमला तुमचं थेसिस देत असताना विद्यापीठाने डिमांड केली आहे की तुमच्या 2 सीडी मध्ये तो असला पाहिजे। आता मला एक सांगा, आता जो नवीन कम्प्युटरचा व्हर्जन येतो त्याच्यामध्ये सीडी ड्रायव्हर्स नाही आहे, आणि जर त्या संबंधित विद्यापीठाच्या लिपिकाला किंवा कर्मचाऱ्याला जर बदमाशी करायची असेल तर तो पत्र लिहून पाठवतो की तुमची सीडी करप्ट झालेली आहे, सीडी राईट होत नाही। म्हणजे ते पत्र थेसिस प्लॅगरिझमला दिल्यानंतर 6 महिन्यांनी तुम्हाला पत्र येतं, म्हणजे 6 महिने ते डिले झालं। आम्ही त्यांना सांगितलं की सीडीचा वापर न करता तुम्ही पेन ड्राईव्ह मागवा। 2 दिवसापूर्वी मी विद्यापीठात पेन ड्राईव्ह पाठवला एका रिसर्च स्कॉलरच्या संदर्भात। तिथला डिलिंग क्लर्क सांगतो की साहेब आम्ही पेन ड्राईव्ह घेत नाही, आम्हाला फक्त सीडीज पाहिजे। आम्ही त्यांना समजावून सांगितलं की सीडी आउटडेटेड झाली आहे, अकॅडमिक काउन्सिलमध्ये निर्णय झालेला आहे, तरी तो क्लर्क ऐकायला तयार नाही। मग मी 2 दिवसांना फोन केला
तो दिवशी त्या क्लर्कला फोन केला की सीडी आता आम्ही बंद केली आहे, तुम्ही त्यांचं ते पेन ड्राईव्ह शिका. म्हणजे किती त्रासदायक काम आहे एखादी पीएचडी करत असताना. त्यानंतर प्लॅगरिझम करता जेव्हा आपण थिसिस सबमिट करतो तेव्हा विद्यापीठाकडे याच्या आधी उत्पन्न नावाचं सॉफ्टवेअर होतं. आता ड्रिलबिट नावाचं सॉफ्टवेअर ते यूज करतात आहे. आणि मुझे लगता है कि ड्रिलबिट के सीईओ ही अपने यहाँ पे रिसोर्स पर्सन करके है, बहुत अच्छी बात है. इंग्रजी जो थेसिस असतो वो इंग्लिश के थेसिस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्लैगियरिज्म हो जाता है. लेकिन मराठी का जो थेसिस है वो 6 महीने यूनिवर्सिटी में रहने के बाद 7वें महीने में आपको लेटर आता है की हा मराठीतला थेसिस मंगल चौदा मध्ये नसल्यामुळे आमचं सॉफ्टवेअर ओळखून त्याला एक्सेप्ट करत नाही, त्याच्यामुळे हे थेसिस तुम्ही मंगल 14 मध्ये कन्वर्ट करून पाठवा. अब जो स्टूडेंट ने थेसिस सबमिट किया है पीएचडी का, ये सब प्रोसेस होने के बाद यूनिवर्सिटी बोलती है कि आप उसको मंगल 14 में कन्वर्ट करके भेजो. क्या करेगा वो स्टूडेंट? और एक समझ जाता हूँ, मराठी का थेसिस एग्जामिन होने के लिए आउट ऑफ स्टेट जाता है, आउट ऑफ स्टेट जाता है. पुष्कळदा असं लक्षात येतं की तो मराठीत तयार केलेला थेसिस तो साऊथ इंडियामध्ये जातो आणि मग 6 महिन्यांनी त्या एक्झामिनरचं पत्र येतं की मला मराठी समजत नाही, याला इंग्रजी ट्रान्सलेट करून पाठवा. हा काय प्रकार आहे? आम्ही विद्यापीठाला सुचवलं की त्याला मराठी समजत नाही, त्याच्याकडे तुम्ही पाठवू नका, किंवा मग ऍटलीस्ट त्याच्यासोबत इंग्रजीत कन्वर्ट केलेली समरी तरी पाठवा. या गोष्टी बंद झाल्या पाहिजे आणि त्याचा आम्ही प्रयत्न केला. या सगळ्या गोष्टी अकॅडमिक काउन्सिल मध्ये ठेवल्यानंतर त्या सगळ्या गोष्टींना मान्यता मिळालेली आहे आणि तुमचं हे जे रिसर्च वर्क आहे हे अगदी सोपं होणार आहे. पुढे विद्यापीठाची स्थापना कशाकरता झाली आहे की विद्यार्थ्यांचे जे प्रश्न आहेत, पालकांचे जे प्रश्न आहेत, त्याला कुठेतरी सोडवणूक मिळाली पाहिजे, त्यांना कुठेतरी एक चांगला प्लॅटफॉर्म मिळाला पाहिजे. ते न करता विद्यापीठाचे काही अधिकारी, म्हणजे मी 3 वर्षापूर्वी मॅनेजमेंट काउन्सिल असताना हे सगळे प्रस्ताव दिले होते, पण त्याच्यावरती कुठलीही काहीही कार्यवाही झालेली नाही. आणि आता मागच्या अकॅडमिक काउन्सिलच्या मीटिंग मध्ये ते सगळं आलेलं आहे, त्यामुळे तुम्हाला त्याचा बराच फायदा होणार आहे. पण मित्रांनो, माझी तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे की कुठलेही रिसर्च करत असताना तो रिसर्च तुम्ही प्रामाणिकपणे करा, त्याच्यामध्ये तुम्ही इन्व्हॉल्व व्हा, गाईड सोबत इंटरॅक्शन करा, गाईड सोबत आपला वेळ द्या, आपल्या रिसर्च सेंटरला वेळ द्या. आताचं जे पॅकेज सुरू आहे फ्रॉम सिनाप्सिस टू बाइंडिंग, त्या फंदात तुम्ही बिलकुल पडू नका, कारण तसा केलेला रिसर्च तुमच्या काहीही कामाचा नाही. आणि इथे जर गाईड बसले असतील किंवा जे होणारी गाईड आहे, पीएचडी करणं सोपं आहे, सोपं आहे म्हणजे मी सोपं आहे म्हणत नाही तुम्हाला, पण पीएचडी प्राप्त झाल्यानंतर एखाद्या विद्यार्थ्याला गाईड करणं, एखाद्या टॉपिकशी जेव्हा तुम्ही त्याला गाईड करता तेव्हा तुमच्यामध्ये काय क्वालिटी आहे आणि तुमचा खरा ट्रस्ट लागतो. मित्रांनो, पीएचडी डिग्री मिळवणं सोपं आहे, पण जेव्हा एखाद्या स्टुडंटला तुम्ही गाईड कराल तेव्हा तुम्ही स्वतःचं इव्हॅल्युएशन करून बघा वेदर यू आर एलिजिबल ऑर नॉट. त्यामुळे रिसर्च हा अतिशय महत्वाचा विषय आहे आणि आपण सर्वांनी सिरियसपणे त्याच्याकडे लक्ष द्यावं. आणि जे गाईड या ठिकाणी बसलेले आहेत की त्यांनाही माझा एक प्रश्न आहे की हे सगळं करत असताना आपण असं का करतो? त्या विद्यार्थ्याला का बोलवत नाही, त्या विद्यार्थ्यासोबत इंटरॅक्शन का करत नाही, त्या विद्यार्थ्यासोबत आपण त्याला गाईड का करत नाही? मी सगळ्यांच्याच बाबतीत बोलत नाही, परंतु मी जे बघतो आहे की बऱ्याचदा रिसर्च स्टुडंटला माहिती नसतं त्याचे गाईड कोण आहे, असेही पॅकेजेस आहेत. त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांना नम्र विनंती आहे, तुम्ही त्या भानगडीत पडू नका. आणि गाईडला पण माझी विनंती आहे की अशा प्रकारचं एज्युकेशन ट्रेंड मध्ये हा पॅटर्न बिलकुल येऊ नका. आणि हे सगळं करून आपण काय करतोय, हे कशासाठी करतोय, आणि इथे बसलेले जे पार्टिसिपंट आहेत ते उद्याचे गाईड होतील, त्या सगळ्यांना माझी विनंती आहे की त्यांनी हे प्रकार थांबवावे. आणि रिसर्च सारखं हे जे पीएचडीच्या क्षेत्रामधलं सगळ्यात मोठी जी डिग्री आहे ती तुम्हाला ऑन मेरिट चांगल्या पद्धतीने कशी मिळवता येईल आणि त्याचा फायदा तुम्हाला पुढे कसा होईल याचा सगळ्यांनी प्रयत्न करावा. मी या सेमिनारचे जे ऑर्गनायझर्स आहेत
डॉक्टर किशोर सर, डॉक्टर शिंदे सर, सच्चिदानंद कॉलेजचे सर्व टीचर्स, त्यांचे नॉन टीचिंग स्टाफ, या सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आणि मला आज या ठिकाणी तुम्ही उद्घाटन करण्याची जी संधी दिली, अँड नाऊ आय डिक्लेअर this national level workshop is inaugurated. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring inaugural words. Your thoughts have truly added value to today's program, motivating us all to embrace the innovation in research. Next, I invite Dr. R.P. Imbole, sir, our esteemed guest, Director of SNDT, to share his thoughts on today's workshop. Good morning to all. Today's national workshop organized by the Gondwana University Gadchiroli, led Dr. Sachidananda Mungantiwar Knight College, Chandrapur, Rajiv Gandhi College of Management Studies, Ghansoli, Navi Mumbai, and Sardar Unmute Patel कीजिए सर. Mahavidyalaya. एक सेकंड. I have already unmuted, sir. Hello, good morning. Audible. Yes, thank you. Today's national workshop organized by Gondwana University Gadchiroli, led Dr. Sachidananda Mungantiwar Knight College, Chandrapur, Rajiv Gandhi College of Management Studies, Ghansoli, Navi Mumbai, and Sardar Patel Mahavidyalaya, Chandrapur, in collaboration with the Association of All Computer Science Teachers, and jointly organized one-day national workshop on innovative research methodologies and plagiarism prevention techniques, a comprehensive workshop for faculty, researchers, and students. Today's president of the inaugural function, respected Rajeshwar Surawarji, Secretary, Sri Mata Kanyaka Seva Sanstha, Chandrapur, inaugurator of the today's workshop, Principal Dr. P.M. Katkar sir, President, Principal Forum Gondwana University Gadchiroli, as well as organizer and convener Sri Santosh Shinde, Professor Santosh Shinde, officiating principal of led Dr. Sachidanand Mungantiwar Knight College, Chandrapur, Dr. S.B. Kishore, convener as well as coordinator of the management department of Sardar Patel Mahavidyalaya. I first of all congratulate all the organizers for organizing this kind of national workshop on an important topic, which is related to the new researcher as well as students, those who are going for the research. I am also congratulate to the Knight College of one of the collaborator of the national workshop, Dr. Sachidananda Mungantiwar Knight College. It is for only 2 years standing, and they have organized the second national workshop in the particular field. I give my opinion about this. The research is related with the financial matters. जसं काटकर सरांनी आज बोलले, काटकर सर म्हणाले की कुठेतरी आपल्या रिसर्च मध्ये रिसर्च बाजूला राहतं आणि त्याचबरोबर कुठेतरी फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन वगैरे होतात. पण त्यामध्ये महत्वाचं कारण आहे की ज्या ठिकाणी आपल्या गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स आहेत, गव्हर्नमेंटच्या योजना आहेत, गव्हर्नमेंटचा नियम आहेत की लेक्चर असोसिएट प्रोफेसर व्हायचं असेल तर पीएचडी पाहिजे, त्याचबरोबर पीएचडी केल्यानंतरच तुम्ही लेक्चरर होऊ शकता. या सर्व गोष्टी कुठेतरी रिलेटेड झाल्या आणि त्यामुळे आजकाल जे काय आहे हे पीएचडी होत असताना कशा पद्धतीने ती आपल्याला पूर्ण करता येईल त्याकरता प्रत्येक जण प्रयत्न करत असतो. पूर्वी असं नव्हतं. पूर्वी जी के प्राध्यापक होते त्यांना कोणताही बेनिफिट पीएचडी मुळे मिळत नव्हता. त्यामुळे सर्व प्राध्यापक किंवा सर्व विद्यार्थी जे इंटरेस्टेड असतील, ज्या फील्ड मध्ये त्यांना स्टडी करायचं आहे तो फील्ड त्यांनी निवडला होता आणि त्यानुसार त्यांनी ते पीएचडी कंप्लीट केलं होतं. पण आजचे एम बदलले असल्यामुळे बदललेल्या एम नुसार विद्यार्थी देखील आपण पीएचडी कशा पद्धतीने होऊ याबद्दल विचार करतात. पण हे सर्व काही बाजूला ठेवून आपण हा विचार केला की आज जी काही कॉन्फरन्स आपण आयोजित करतोय नक्कीच नवीन रिसर्चर करता आणि त्याचबरोबर जे काही नवीन फॅकल्टीज असतील किंवा नवीन स्टुडंट जे पुढे जाऊन रिसर्च वर्क मध्ये जातील त्यांच्याकरता नक्कीच लाभदायक ठरेल. जे काही विषय आपण ठरवलेले आहेत मेथोडॉलॉजी ॲज वेल ॲज प्लॅगरिझम
हे सर्व विद्यार्थ्यांना कामी येतील. आजच्या वर्कशॉप करता मी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. त्याचबरोबर मला या इनॉग्रल कार्यक्रमाला आपण इन्व्हाइट केलं त्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्स टू ऑल. Thank you, Dr. Ingole, sir, for your valuable insight. We now move to a special segment of the program where I have the privilege of reading the message from Dr. Prashant Bogare, sir, esteemed Vice Chancellor of Gondwana University. Under his leadership, Gondwana University has become a hub of academic excellence. Because of his health issue, he was not able to attend the program, so I am going to read his message. Dear esteemed members and honorable participants, it is with great pleasure that I extend my warmest wishes to all the participants of National Workshop on Innovative Research Methodology and Plagiarism Prevention Techniques, a comprehensive workshop for faculty researchers and students to be held at late Dr. Sachidanand Mungantiwar College, Chandrapur on 25th September 2024. This workshop serves as a vital platform for collaboration and intellectual exchange, bringing together scholars, researchers, and professionals from across the nation to explore advancement in research methodology and integrity. I am confident that this event will not only inspire groundbreaking ideas, but also foster rich discussions and forge lasting connections that will evaluate the standards of research and scholarship. Wishing all the participants a day of insightful dialogue and productive collaboration as we collectively strive for academic excellence. Thank you. Thank you, Dr. Bogare, sir, for your enlightening words. Your message underscores the importance of research integrity and the responsibility we carry as researchers. As we proceed, I request Shri Santosh Shinde, sir, to felicitate Dr. Ajay Kushwaha. Now I invite our keynote speaker, Dr. Ajay Kushwaha, to deliver his address. He is a renowned academician with experts in research methodology, and we are privileged to have him as guide through today's discussion. Keynote address by Dr. Ajay Kushwaha, sir. Good morning, everyone. So, welcome all. First of all, it's an honor and privilege to come from Noida here. So, I would like to first of all congratulate for the successful opening and the grand opening of one-day national workshop. That is based on the two important pillars of a research. One which talks about innovative research methodology. Age is changing, world is changing, we have to think of it, which is rightly said by all our esteemed guests. Next, it's very important to understand plagiarism and its various consequences that we will already discuss. I would like to first of all congratulate and I would like to thank the organizing committee from Dr. Lee Sachidanand Mungantiwar Night College, Chandrapur, in collaboration with Sardar Patel Mahavidyalaya, Chandrapur, in collaboration with Rajiv Gandhi College of Management Studies and Surrey in Navi Mumbai, and in collaboration also with our AASPP, that is the Computer Science Teachers Association. Especially this all comes under one umbrella where Gondwana is standing. And the main important aspect to understand, we all talk about collaborative research, and I think this is a platform where collaboration comes from different parts of area, and they are together to understand how the research can be done. I would like to also thank, first of all the dignitaries on live, especially I listened to the words of Dr. Karthik. He was telling, because this is a platform where we are having the research guides, we are having the mentors, we are also having the scholars and certain research who are going to, such a research who are going to
finish their research work. This is a platform for brainstorming session to understand how the research can contribute in this 21st century of the research. Because if somebody says, I hope ज़्यादा English हो रही है, थोड़ा हिंदी बोल देते हैं. But anyway, it's a flow and that's what something happened. So एक research का जो माध्यम है, काटकर सर ने बहुत सही कहा, मुझे बहुत inspiring और touching लगा कि that is very important. Also, I would like to thank here Dr. Prashant Bokale, Vice Chancellor, उनका मैसेज हमने देखा. Would like to also thank Dr. Atin Gole sir, जिन्होंने अभी ऑनलाइन के माध्यम से they have also conveyed his concern and also he solicited for the research. I would also like to thank our President, Dr. Shri Rajeshwar Kunawar sir, Secretary, for Dr. Lee, Sachinand Mungetiwa Knight College, Chandrapur. Would also like to thank, we have our Dr. Vinay Gavane, Principal from Rajiv Gandhi College of Management, Mumbai. Also, we have many people who have joined for this organization to come and to make this successful. With this all, if I have left someone's name, you all can consider everyone. So when we talk about the keynote address, why we gather them, why we organize such kind of a conferences or a national workshop. First is to understand where we are standing. Because अगर कोई रिसर्च कर रहा है अपने आइसोलेशन में, तो मुझे नहीं लगता है कि क्या वो रिसर्च का यूटिलाइजेशन होगा. जैसे आज हम किसी भी बात करते नॉर्मल कॉलेज की बात करेंगे, if we talk about college, if we talk about how basically the studies are going on, we always talk on outcome now. If we are teaching outcome to our students, why we don't set up the outcome for research? Why our research? Because I would like to say recently we must happy for ourselves. Our India is now growing in such a way that 5.1% contribution of the research is going on across the world. And that too in the patent also. That is one of the good signs where our India is also getting highlighted. क्या इसके साथ में एक और चीज समझना है कि इसका conversion कितना हो रहा है. A conversion means, for example, if somebody is doing a research, whether the research is actually getting contributed or useful for someone. यहाँ से शुरुआत जब होगी तो मुझे लगता है कि रिसर्च के थ्रू जो आप कहते हैं कि आउटकम्स है वो मिलेंगे. बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे. मैं आज जो सेशन लेने वाला हूँ प्लेगरिज्म पे बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है. आई विल मोस्टली टॉक ऑन इनोवेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी. क्या आज के जमाने में रिसर्च मेथडोलॉजी चेंज होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि रिसर्च मेथडोलॉजी जो आज हम ट्रेडिशनल देख रहे हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अलावा भी और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. इसके साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ. थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग. I really thank everyone for giving me this opportunity to come again and to what we call keep my words in front of you. We can always have a good discussion. Thank you everyone. Thank you, Dr. Kushwaha sir, for your profound insights. Your experience and knowledge have provided us with a roadmap to tackle the challenge of modern research. I request Dr. P.M. Katkar sir to please felicitate Shri Rajeshwar Surawar sir with memento. As we move towards the presidential speech, I am honored to invite Shri Rajeshwar Surawar sir. He has been a guiding force in the academic community and his leadership has been instrumental in driving many educational reforms. Sir, I request you to address the gathering with your presidential speech. मंचावर उपस्थित डॉक्टर प्रमोद काटकर सर, प्राचार्य सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपुर, डॉक्टर अजय कुशवाहा सर, शारदा विद्यापीठ नालंदा, SNDT महिला महाविद्यालय बल्लारपूरचे ते संचालक आरती इंगोले सर जे ऑनलाईन होते, प्रभारी प्राचार्य श्री संतोष रात्रपाई महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य संतोष शिंदे सर व समस्त शिक्षक व संशोधक व विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्यासमोर बोलायचं ही माझी काही पातळी नाही आहे, पण अध्यक्ष बनवलं आहे म्हणून मी तुमच्यासमोर 2 शब्द बोलतो. आज दिनांक 25 सप्टेंबर 2024 रोजी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी सार्वजनिक वाचनालय चंद्रपूर येथे गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली, डॉक्टर सच्चिदानंद मुनगंटीवार रात्रपाळी महाविद्यालय
चंद्रपूर सरदार पटेल महाविद्यालय, राजीव गांधी कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज मुंबई आणि असोसिएशन ऑफ ऑल कॉम्प्युटर सायन्स टीचर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिक्षक व संशोधन आणि विद्यार्थ्यांसाठी इनोव्हेटिव्ह रिसर्च मेथोडॉलॉजी आणि साहित्यिक चोरी प्रतिबंधक तंत्रे या विषयाच्या अनुषंगाने एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. आता रिसर्च सर्वांनीच केलेले आहे. महाभारतात महर्षी वेदव्यासांनी सुद्धा भगवद्गीता ही लिहिलेली आहे, ती एक रिसर्चच आहे. त्यानंतर ज्ञानेश्वरांनी सुद्धा एक रिसर्चच केलेला आहे, ज्ञानेश्वरी लिहून. आणि लोकमान्य टिळकांनी गीता रस्ते लिहून सुद्धा एक रिसर्च केलेला आहे. विनोबा भावे यांनी गीता लिहून सुद्धा रिसर्च केलेला आहे. रिसर्च ही नवीन पद्धती नाही आपल्याकडे. फक्त आता त्याला तुम्ही डॉक्टरेट देता आणि त्याच्यावर नोकरी मिळते म्हणून तुम्ही रिसर्च करता. पण रिसर्च हे मुळात केलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये आत्मा आलेला पाहिजे, त्या रिसर्च मधून दुसऱ्यांना काहीतरी भेटलं पाहिजे, हे महत्वाचं आहे. माझी शंका आहे. Thank you, sir, for your motivating speech. Your words of wisdom have truly encouraged all the participants to approach research with a sense of responsibility and integrity. As we come to the conclusion of this inaugural session, it's time to express our heartfelt gratitude. An event like this cannot happen overnight. The wheel starts rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for detail. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated team who know their jobs and are result oriented. To thank their efforts, I would like to call Ms. Rajeshwari Dayalwal to propose a vote of thanks. Thank you, ma'am. Good morning, all the honorable guests, students, and researchers. Distinguished guests, it's my esteemed privilege to deliver the vote of thanks on behalf of all the organizing today's workshop on the topic innovative research methodologies and plagiarism prevention techniques. This collaboration event has been great success, and it wouldn't have been possible without the collective efforts and support of the several individuals and institutions. First and foremost, thanks to Shri Rajeshwar Surawal Sir, Secretary of Shri Mata Kanyaka Seva Sanstha Chandrapur. We express our deepest appreciation for your leadership and vision in making this event a reality. Our continued dedication to promoting quality education and research is truly commendable. I would like to extend our heartfelt gratitude to Dr. Ajay Kushwaha Sir, our keynote speaker, for his enlightful address, which has not only broadened our understanding of research methodologies, a critical aspect of academic integrity. Your knowledge and experience have greatly enriched the workshop. This special thanks to Honorable Professor Prashant Gokale Sir, Vice Chancellor, Gondwana University, Gadchiroli, for his best wishes for his workshop. I would also like to thank our honorable guest, Dr. R.P. Ingole Sir, for gracing the occasion with his presence and sharing his valuable perspective on the importance of maintaining the ethics in research. A special thanks to our inaugurator, Dr. P.M. Kadkar Sir, whose inspiring words set the perfect tone for the day, motivating us all to strive for excellence in and academic endeavors. Our sincere thanks to officiating principal Santosh Shinde Sir for his insightful introductory remarks, which laid a strong foundation for today's discussion. I am very grateful to thanks Dr. S.B. Kishore Sir for being here. I would like to extend our thanks towards Assistant Professor Meghraj Jogi Sir, PGDT, Gondwana University, Gadchiroli, for his presence in the workshop. A big round of appreciation goes to Assistant Professor Sheetal Bora Ma'am, our anchor, for his incapable management of the event, ensuring its smooth and flow over the day. We are grateful to the organization, Dr. Sachidananda Mungantiwar Night College, Chandrapur, Sardai, Gondwana University, Gadchiroli. The collaboration among these institutions exemplify the power of unity in the education and the sheer goal of fostering academic excellence.
Finally, I extend our gratitude to all the participants, faculty, research scholars, and students who joined us today. Our enthusiasm and active participation have made this workshop a fruitful experience for everyone involved. We hope the knowledge and ideas shared today will serve as a valuable resource in our academic and professional journey. Once again, thank you all for being part of this wonderful workshop. We look forward to many more such collaboration in the future. Thank you. Now would like to call upon stage for a Thank you for that beautiful expression of gratitude. We will start the first technical sessions within some time. With the permission of dais, I would declare that inaugural ceremony has been concluded.
हो गया? Good morning, respected dignitaries, faculty members, researchers, and dear students. I'm Shweta Salami, your host for the first session. It gives me immense pleasure to welcome you all to this one-day national workshop on innovative research, methodology, plagiarism prevention techniques. We are about to begin our first session titled Innovative Research Methodology by none other than Dr. Ajay Mishra, Department of Computer Science and Application, Sada University, Greater Noida. Before we proceed, my kindly request to our esteemed guests to please take their seats on the dais. दूसरे मोमेंटस बोले थे ठीक है मैं इसका ये ऑप्शन निकाल दूंगा वो तो डेट निकाल लेगा टाटा को बोल ये यहां पे टाटा सेक्शन है आप शेयर कर रहे हैं पहला है कि बोला है क्या बोलो लगा बोलो I kindly request our esteemed guests to please take their seats on the dais. now chairperson now Our chair session, Dr. Aslam Surya sir. applicants सुनना Now to give a brief introduction for our session, Dr. Aslam Surya, Janta Mahavidyalaya Chandrapur, I would like to invite Ms. Karishma Sayyed to the stage. Ms. Karishma, please. A very warm good morning to one and all present here. I, Karishma Sayyed, Assistant Professor at late Dr. Sachidananda Mungantiwar Night College, Mahavidyalaya Chandrapur. I am here to introduce our chairperson for first session of our today's workshop, that is Dr. Aslam Surya sir. He is working as an assistant professor of computer science at Janta Mahavidyalaya, Chandrapur, affiliated to Gondwana University, Gadchiroli. He has 18 years of teaching experience. He has published more than 33 research papers in reputed Scopus UGC peer-reviewed journals. He has published one patent in intellectual property rights, India. He is member of many professional bodies including ISCA Delhi, CSCA New York, CSI Mumbai, IAENG, that is National Association of Engineers. He got the first and second prize at university level research competition, which called as Avishkar at 2040 and 15 respectively. Here by Gondwana University, Gadchiroli. He is working as a PhD supervisor for computer science and currently 4 research students are working under his guidance. So it's all about Dr. Aslam Surya sir. Lastly, I would like to thank Ms. Shweta Salami ma'am for giving me the opportunity to introduce Dr. Aslam Surya sir. Thank you so much. Thank you, Ms. Karishma, for that wonderful introduction.
Now I request to our principal, Mr. Santosh Shinde sir, to felicitate Dr. Aslam Surya sir by offering a bouquet. Bouquet and memento. Now to our distinguished guest speaker for today's session, Professor Ajay Kushwaha. I would like to request Dr. Aslam Surya sir to kindly come forward and present a token of appreciation in the form of bouquet and memento. With the formality is now complete, it's time to dive into the core of today's session. Now I invite Dr. Ajay Kushwaha to enlighten us on the topic innovative research methodology. Let's give him a warm round of applause. It's okay. Hello. Okay, good morning to one and all. Guests on the dais, my colleagues, faculties of various colleges, students, research scholars, and staff of all the various colleges, organizing colleges. It's a very happiest and a proud moment to introduce one of my good friends and earlier my colleague, Dr. Ajay Kushwaha. We worked combinedly so many years in Chandrapur. After he quitted, let me introduce him. He has 16 years of academic experience specializing in network and cybersecurity, digital forensic, and IT GRSM. He has authored 4 books, secured 4 patents, and published over 45 research papers. His primary research areas include open source software, blockchain technology, and machine learning in healthcare. He is actively supervising PhD scholars and guiding them in advanced research areas. He has served in roles such as mentor, NAC coordinator, and conference convener. He is a lifetime member of IEEE and Indian Science Congress with editorial roles in peer-reviewed journals. He regularly contributes to international conferences and journals as an editor and reviewer. This is a very short intro. Apart from this, he has so much qualities and a very great academician also. Let's welcome him with a big round of applause for the further proceedings. Thank you. Hello. So, hello. ठीक है. So, let me tell you.
if I am sharing the screen, I hope. Yeah, I hope it's visible. Okay. So first of all, let me thank okay, so before we say something, we should be very comfortable. So what the first of all, thank you, Abdul sir, for great introduction. So it means a lot for me. We have worked a lot. So without wasting our time, we will focus on important aspect which actually not taken much into consideration. English or Hindi fine? मराठी मध्ये try करतो. So reason being, जो हम बोलना चाहते हैं वो पहुंचना चाहिए. That is intention. And I hope कि सब लोग यहाँ कुछ ना कुछ होप से बैठे होंगे कि हमें कुछ करना है. यहाँ पर जो हमने टॉपिक चुना है, the topic which I have selected is basically for innovative. That is the innovative research. And when I talk innovative, I need to say there is something which is going to happen. So innovative research, by the name itself suggests that research methodology, अगर हम select कर रहे हैं या हमें जिस पे रिसर्च करना है, इसकी methodology समझना बहुत जरूरी है. अगर कोई बोलेगा कि somebody want to say that okay, I am going to do a research, we will select the topic, we will start writing the chapters, paper writing और हम submit करके research thesis submit करते हैं. But क्या ये चीजें आज की डेट में relevant है or not? That is very important. That's what the reason we have to understand what are the important understanding of research methodologies. So ये मैंने टॉपिक चूज किया है. I hope it will make sense. मैं आप लोगों को इस entire session में I'm going to also give certain tool names. You might be familiar with some of them. We will try to elaborate and we will tell you some another interesting tools also. So basically, if you are doing the research methods, you can see this small diagram. A credit goes to researchmethods.net. So basically, सबसे पहला रूल ये है, if you take something from any part of the published things, you must cite them. Cite का एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि मैंने किसी चीज का कोई रेफरेंस लिया, तो मैं उसे क्या करूंगा, एक सम्मान दूंगा, एक साइटेशन दूंगा. ये प्रैक्टिस अगर हम लोग हर एक स्लाइड के लिए करें, हर एक word means number of words and the combination, that is the sentences, then I think it makes a lot of sense. So basically, if I say the research methods have various different options, मैं बताऊंगा आपको और क्या क्या होता है, लेकिन ये एक छोटा सा स्लाइड है that I want to show you. So basically, innovative research methods are a variety of techniques and approaches that can use to conduct the research in a new and very important creative way. Problem क्या है? What is the problem? The problem is that we are following the traditional approach, only categorizing our research into two important parts, जिसको हम बोलते हैं qualitative और दूसरा बोलते हैं quantitative. आज लोग बात करते हैं मिक्स्ड अप्रोच की भी, बट मोस्टली हमारा पूरा फोकस ये दो सेक्शन में बट के रह गया है. लेकिन क्या ये दो सेक्शन ही है जो हमारे रिसर्च को कर सकते हैं? क्या हमारे रिसर्च को जो आज सब लोग बोल के गए हैं डायस पे, आपने सभी का भाषण सुना, सबके मन में एक ही क्वेश्चन है कि भैया हमने जो रिसर्च की थी 20 साल पहले, 15 साल पहले, और आज की डेट में जो रिसर्च हो रही है, क्या वो रिलेवेंस है या नहीं? हाउ टू मेक इट रिलेवेंट? त्याला कशी व्हॅल्यू द्यायची, आउटकम म्हणजे काय, त्याला काही उपयोग आहे का? आय विल ट्राय विथ सम वर्ड्स. चुकलं तर ऑलरेडी सॉरी बोलतो. तर इसमें है क्या, व्हाई इट इज सो दैट
अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे रिसर्च का अगर कुछ फायदा हो रहा है एक छोटे से पार्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, then I say that yes, the research has certain things. Now I also take something with certain connections like NBA, NAC and all. We all know. Now we all are happy of NBA, NAC आपका बाइनरी हो गया है। अब खाली बोलेंगे हाँ या ना बोलेंगे, एक्रेडिटेड है या नहीं है। पहले पॉइंटर पे चलता था, ए मिल गया, ए प्लस मिल गया, सब कुछ। मैं ये इससे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी टीचर्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट एस्पिरेंट है जो रिसर्च करके आगे जाके टीचर या प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। यस, ये नॉवेल प्रोफेशन है, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए हम सबकी भागीदारी बहुत जरूरी है। अगर नॉवेल्टी हम लोग सब लोग मिलकर नहीं लाएंगे, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक बहुत ही नोबल नहीं रखेंगे प्रोफेशन से, शायद कहीं ना कहीं ये छवि थोड़ी सी धुंधली हो जाएगी। So let's move on and understand what are the things. सबसे पहला, अब हम लोग बहुत फोकस वे में आते हैं, समझते हैं क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस ये एक टेक्निक है जो यूज की जाती है मेथड के रूप में। अब इसका मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। Cluster analysis is a data analysis technique that can be identified natural grouping in a sample survey based on behavior activity. अब ये मुझे बताइए, अगर सब लोगों को पता होगा, सबने रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स किया होगा, अगर नहीं भी किया है तो ये जो बिहेवियर और एटीट्यूड हम लोग देखते हैं, ये कौन सी कैटेगरी के रिसर्च में आ रहे हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? सॉरी मैं क्वेश्चन आंसर पूछ रहा हूँ, लेकिन शायद इससे कुछ और इंस्पिरेशन मिले। आजकल लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यार एंगेजिंग होना चाहिए, थोड़ा सा इनोवेटिव होना चाहिए, तो 10 से मारती है। या हाउ डू यू फील, किस कैटेगरी में आ सकता है? क्वालिटेटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग बिहेवियर, अच्छा थोड़ा सा साउंड देख लीजिए, उनको लाउड नहीं आ रहा है। बिहेवियर, एटीट्यूड, ये कहीं ना कहीं क्वालिटी दर्शाता है। अब क्लस्टर एनालिसिस ये टेक्निक है जो क्या करती है, अब इसके लिए आपको नहीं जब मेथोडोलॉजी यूज करनी होगी, एआई भी यूज हेल्प करता है, लेकिन मैं आज एआई के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप सभी लोगों ने एआई सुन के ऐसा लग रहा होगा कि यार रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, बंद करो, एआई सब कर देगा मेरे लिए, चैट जीपीटी पे डालो कमांड, सारा बना के दे देगा। लेकिन प्लीज याद रखिए, फिर वही कहानी हो जाएगी, पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, अब कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे हिसाब से यूज करने के लिए भी हमें सीखना पड़ेगा। इसके लिए आजकल बहुत फेमस कोर्स चल रहा है जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जिसने वो कोर्स किया है उसको आउटपुट मिलने में कम से कम वो 15 से 20 इटरेशन ऑफ प्रॉम्प्ट्स को मॉडिफाई करता है। उसके बाद भी वो फिर वेरीफाई करता है डेटा को एक्चुअल में जाके। यानी कि जो हम लोग मेहनत अगर फ्रॉम द स्क्रैच करते, लगभग उतनी ही मेहनत बंदा चैट पे करता है या जीपीटी पे करता है। एक चैट जीपीटी बोलूंगा तो पॉपुलर हो जाएगा, बहुत सारे आपके जनरेटिव एआईज है, हाँ, लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा जरूर। क्या हमें इससे बचना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। बचोगे तो फिर क्या होगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे कि आज की डेट में पावर क्या है। आपको एक सोच देगा, एक क्रिएटिविटी देगा, एक इनोवेशन देगा सोच में कि जो मैंने किया उसके कितने और तरीके हैं जिससे मैं अपने रिसर्च को और एनहांस कर सकता हूँ। प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि जब मैं क्लस्टर की बात करूंगा तो यहाँ पे जब भी बहुत बिग अमाउंट ऑफ डेटा होगा, इसको पहले ग्रुप्स में आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट इज आइडेंटिफाइंग द ग्रुप, देन टारगेट मार्केटिंग। मोस्टली दिस रिसर्च फोकसेस ऑन पीपल हु आर डूइंग फॉर कॉमर्स, जो मैनेजमेंट साइड के लोग हैं। आज का मेरा पूरा टॉपिक सिर्फ कंप्यूटर पे नहीं है, मुझे स्पेशली बोला गया था ऑर्गेनाइजर से कि आप लोग ये जनरेट करो, ताकि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं किसी भी डोमेन से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, वो अपने आप को इसे कोरिलेट करता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे समझिए, और ये जरूरी नहीं कि कॉमर्स का स्टूडेंट करेगा टारगेटेड मार्केटिंग या क्लस्टर, नो, एक कोई भी कर सकता है जिसके पास डेटा है और वो सैंपल करना चाहता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड। अब ट्रेंड मतलब क्या? लोगों ने बहुत सारी पोस्ट सुनी है कि आज हम हमारे बच्चों को भी बताते हैं, हमारे रिलेटिव, हमारे कजिन को बोलते हैं कि बेटा जाके डेटा साइंटिस्ट बनो। डेटा साइंटिस्ट है क्या? अल्टीमेटली एक रिसर्च का आउटकम है जहां पे एक आदमी डेटा को समझकर उसके काफी ट्रेंड्स निकाल के देता है। जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यार आज इंडिया हमारा 5.1% से स्पीड से ग्रो कर रहा है रिसर्च के फील्ड में, जहां पर वो आज हम लोग एक अच्छे पोजीशन पे आए हैं पिछले 15 सालों में। स्पीड कहां से बोल रहा हूं मैं? देयर इज अ सर्टेन डेटा व्हिच हैज बीन प्रोसेस्ड
और उसके बाद हमें कुछ ना कुछ आउटकम मिला। तो डेटा ट्रेंड्स बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है कि जब आप स्टार्ट करते हो अपना रिसर्च, आप एक स्मॉल सा एक क्या कहते हैं अपना सिनॉप्सिस या एक टॉपिक आइडिया लेके जाते हो अपनी गाइड या होने वाले गाइड के पास, तो आपको ये बहुत जरूरी समझना है कि गाइड क्या सुन के इम्प्रेस होगा, उसको ऐसा क्या लगेगा कि ये मेरा शिष्य बन सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी गाइड है वो भी ट्रेंड्स पे ध्यान रखें, क्योंकि रिसर्च एब्सोल्यूट हो रहा है या रिसर्च में कुछ दम है, ये डिपेंड करता है आपके डेटा ट्रेंड्स पे। इसके बाद नॉर्मली जब आप प्लॉट करोगे तो इस तरीके का डेटा ट्रेंड होगा। यहाँ पे आपको अलग ग्रुपिंग दिखेगी। तो एक ये पूरा टाइप है कैटेगरी क्लस्टर का। सेकेंड टाइप हमारा आता है इंपॉर्टेंट बेंचमार्किंग। अब कभी भी रिसर्च में कहा जाता है कि कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते। अगर कोई रिसर्च कर भी रहा है, अगर उसको कुछ हाइपोथेसिस में बिल्ड करनी है, हाइपोथेसिस बिल्ड करनी है, तब भी उसे कुछ ना कुछ रिलेवेंसी रखनी पड़ेगी, तब जाके उस डेटा के बेस पे या उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हाइपोथेसिस बिल्ड करेगी। बेंचमार्किंग एक्चुअली प्रूव्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू एज ए रिसर्चर, और बाद में दुनिया को कि जो आप कर रहे हो वो सही हो रहा है और उसमें आपने कहीं गलती नहीं की। So benchmarking is a tool that allows audience to interact with research data. अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके से इसको ले सकते हैं। हम हमारे ऑडियंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऑडियंस यानी आपके टारगेटेड ऑडियंस हो सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपैरिजन। बहुत लोग बोलते हैं यार मैं किसी से अपना रिसर्च कंपेयर नहीं करूंगा, मेरा तो यूनिक है। बट आई थिंक दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। जब तक रिसर्च आपका कंपेयर नहीं होगा, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रिसर्च का बन ही नहीं सकता, जिसको हम लोग कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू में कहीं ना कहीं कंपैरिजन जरूर आएगा, या तो पहले आएगा या तो बाद में आएगा। तो एक सबसे नॉवल वे से देखेंगे तो पहले तो लिटरेचर रिव्यू करना है, उसके बाद हम कंपैरिजन की बात करेंगे। लेकिन कंपैरिजन होना चाहिए, बेंचमार्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर वो नहीं हो रहा है तो हम कहीं भी किसी भी कंडीशन में नहीं बोल सकते कि हमारा रिसर्च किस तरह जा रहा है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होता है कि टूल के साथ, जैसे अगर मैं बोलूँ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में मोस्टली परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बेस पे ही रिसर्च के आउटकम्स को फाइनलाइज किया जाता है। जैसे किसी ने कहा कि मैंने एक्यूरेसी 90% कर दी, आज तक के जितने भी रिसर्चर थे उन्होंने 80% रखी थी। अब कर दी, ये स्टेटमेंट गलत है, बायस है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने इनोवेटिव से किया और फाइनली आपका रिसर्च बना और आ गया, तो ये आपका क्वालिटेटिव। तो आपने क्या किया, आपने परफॉर्मेंस मेजरमेंट किया। उसके लिए काफी टूल्स है, SPSS है, काफी अलग अलग टूल्स इसका यूज किया जाता है। अभी मीन मीडियन वो सारी सर ने बताई थी, तो ये सारा करते हैं। लेकिन ये एक तरीके का मेजरमेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सारे मेथड, ये सारे टेक्निक, ताकि आप लोगों को जब भी आप करो, आप ये पहले में डिसाइड करो कि मैं पहले कौन सा मेथड यूज करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा एरिया क्या है। अगर ब्रॉड एरिया मेरा क्लियर नहीं है, ब्रॉड एरिया बोलो, मैं तो नैरो बोल ही रहा हूँ, टॉपिक की बात हम कर ही नहीं रहे। टॉपिक आपका 6 महीने बाद भी बदल सकता है, और शायद फर्स्ट आपका जो RSC होगा उसके बाद भी चेंज हो सकता है। लेकिन आपका ब्रॉड एरिया होना चाहिए, और आपका गाइड जो आपके मेंटर बनेंगे वो आपको नैरो डाउन करके एक्चुअल में ले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो रिलेशन है जो कहीं पेड हो रहा है उससे फिर से ग्रो अप करने की जरूरत है। बाकी चीजों पे मैं नहीं जाऊंगा, जो लोगों ने कहा क्या हो रहा है, दैट इज समथिंग, सारा पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए। बहुत ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है, लेकिन एज अ रिसर्चर हमारे पास अगर कुछ है तो कभी छूटेगा नहीं, वो हमेशा सामने आएगा, एंड दैट विल हेल्प अस। नेक्स्ट वी विल टॉक ऑन डेटा ड्रिवन इनसाइट। जैसे मैंने डेटा साइंटिस्ट की बात की, अब डेटा ड्रिवन इनसाइट ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ बेंचमार्क विच प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट दैट कैन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। अब कई बार ऐसा होता है कि मैंने सोचा तो कुछ था, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो मैंने ड्रॉ किया, तो मेरा जो डेटा जो कलेक्ट हुआ और जो उसका रिजल्ट है वो कहीं और तरीके से डायरेक्ट हो रहा है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मेरे डेटा पे सुनना चाहिए। अगर मेरा डेटा अनबायस्ड है, अगर मैंने मेरे डेटा पे कोई भी ऐसे तरीके का कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं किया है, तो वो होगा। मोस्टली ऐसे रिसर्च जो मास्टर, जो MBA वाले होते हैं, जो कॉमर्स वाले होते हैं, वो बहुत ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट हुआ है, शायद प्रोडक्ट एनालिसिस होता है MBA में। प्रोडक्ट पे अगर मान लो किसी ने बहुत सारे उनके फीडबैक और कमेंट आए हैं मार्केट में, और अगर उन्होंने उसको प्रॉपरली नहीं लिया या उनको मैनिपुलेट किया, तो क्या होगा? एट द एंड वो कभी भी उसका जो प्रॉब्लम है उसका सॉर्ट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे फाइनली, और एट द एंड क्या होगा
कि उसका कभी तो आउटपुट को सही मिलेगा नहीं। इसीलिए डेटा ड्रिवन इंसाइट के बेस पे डिसीजन मेकिंग हमेशा ही सही रहता है, चाहे वो आज की डेट में डिसीजन आपका थोड़ा सा निगेटिव जाए या थोड़ा करेक्टिव में लेना पड़े, लेकिन लेना चाहिए। तो ये बेंचमार्किंग है, काफी चीजें बेंचमार्किंग में आप देख पाओगे, परफॉर्मेंस, प्रोसेस, सर्वे, मेजरमेंट, कंपेयर, टारगेट, इंडिकेटर। इंडिकेटर्स भी आजकल काफी यूज किए जाते हैं, सेंटिमेंट्स को जताने के लिए, दिखाने के लिए सारी चीजें होती है। नेक्स्ट, अब कई बार, अब मुझे नहीं पता कि आप इसको कैसे रिलेट करोगे, लेकिन क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग एक अनदर मेथड है जिसके बेस पे आप रिसर्च को अच्छे से लेके जा सकते हो। इसमें क्या होगा, जैसे आज की डेट में अगर मैं बोलूं, कोई बोलता है कि सर रिसर्च का मतलब ये है कि पीएचडी डिग्री मिल जाए मुझे, शायद नहीं। एक आपके घर में एक छोटा सा पिन लेने से लेके तो आप बड़े से बड़े इक्विपमेंट या लाइफ के बड़े डिसीजन आप रिसर्च करके ही लेते हो। हम उसको डायरेक्ट रिसर्च नहीं बोलते, इनडायरेक्ट रिसर्च बोलते, लेकिन हम लोग करते वही है। तो मार्केट की स्ट्रैटेजी एनालिसिस और सारी चीजें होती है। तो कई बार क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है और उसको इंस्पायर कर सकती है, जिसमें काफी चीजें होती है, कंटेंट होता है, इमोशंस होते हैं, कम्युनिकेशन होता है, दिस ऑल कम्स अंडर देयर। तो व्हाट शुड बी द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इंक्लूड्स वीडियोस, इंटरैक्टिव इन्फोग्राफिक्स एंड बेंचमार्किंग टूल्स। हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब भी हमारा रिसर्च करते हैं, हम कई चीजों का यूज करते हैं टूल्स का, जैसे ग्राफ्स हो गए, विजुअलाइजेशन हो गया डेटा का। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, आज की डेट में आप देखो, कई लोग सोचते हैं कि पेपर पब्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक यूजीसी पीयर रिव्यू या फिर एससीआई है। आज की डेट में एससीआई पेपर पब्लिकेशंस, अगर आप लोग कोई क्रिएटिव और इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग के माध्यम से अपने रिसर्च को बता देते हो और उसे अपलोड करते हो, तो उसके एक्सेप्टेंस रेट मोर देन 60% बढ़ जाते हैं। ये शायद किसी को नहीं पता होगा कि पहले तो लोग सिर्फ डेटा मांगते थे, आपका सेकेंडरी डेटा, लेकिन आज की डेट में बोल रहे हैं कि सेंड अस द वीडियो। क्या वो वीडियो कैसे क्रिएट होगा, हाउ यू विल एम्फसाइज द व्हाट रिसर्च आई हैव डन, हाउ आई हैव कंडक्टेड दैट, अगर वो करके डालते हो तो फ्री पब्लिकेशन होता है, जो कि वर्ल्ड में टॉप साइंटिफिक लेवल पे जाने के लिए यूजफुल है। बहुत लोगों ने नहीं किया, हमने स्टार्ट किया प्रोसेस। एक आध पेपर हमारा भी अच्छा आया था एसटीआई का, तो बाद में हम लोगों को बोला गया कि आप इसका एक वीडियो बनाइए और उसको भेजिए। तो ये लोग बड़े बड़े फोरम में अगर कोई अच्छा रिसर्च है उसको प्रमोट करते हैं। पहली बात बता दूं, यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर है, सोच के थोड़ा सा आउटडेटेड लगेगा, अच्छे पेपर को पब्लिश करने के लिए कभी भी 1 रुपए भी नहीं लगते, कंप्लीटली फ्री होता है। शर्त इतनी होती है कि क्या आपके पेपर में कुछ है, अगर उसमें इनोवेशन है, अगर उसमें नॉवेल्टी है, नॉवेल्टी आप कैसे भी ला सकते हो, आपके पास सही है, और अगर नॉवेल्टी लाने के लिए जो आपने प्रोसेस को फॉलो किया अगर वो सही है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग पेपर पब्लिकेशन इज नॉट अ टॉप जॉब। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बहुत बड़ा ट्रुथ है, मैं खुद रिसर्चर हूँ अभी भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलते हुए मुझे भी दुख होता है कि हम लोग रिसर्च छोड़ के बाकी सब करते हैं। जैसे आज की डेट में लोग बोलते हैं टीचर टीचिंग छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहा है, अगर ऐसा है तो गलत है और नहीं होना चाहिए। शायद हम लोग ये होने के लिए जो करेक्टिव मेजर्स लेंगे, विल टेक करेक्टिव मेजर्स, बट व्हेन वी आर डूइंग रिसर्च, आर वी सीरियसली कंट्रीब्यूटिंग व्हाट वी हैव टू डू, इफ नॉट देन दिस इज द वे टू स्टार्ट। ये सोचना बहुत जरूरी है, एंड मेथोडोलॉजी विल हेल्प यू ऑल टू डू दैट। तो एंगेजिंग ऑडियंस कैसे करोगे एंगेज? कई बार लोग बोलते हैं कि यार मार्केट हमारा हमारा प्रोडक्ट का मार्केट अच्छा बढ़ेगा, कई बार एड्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार एंगेजिंग ऑडियंस, आप एंगेज करते हो ऑडियंस को, तो आप अच्छे से एम्फेसिस कर सकते हो, आप अपनी बात को रख सकते हो। कई बार आप कॉन्फ्रेंस में जाओगे, बेस्ट पेपर अवार्ड होगा, कैसे मिलेगा अवार्ड? सिर्फ रिसर्च से। कैसे पता चलेगा लोगों को आपने क्या रिसर्च किया? आपके पास लोगों के पास टाइम नहीं है सुनने का, आपको 15 मिनट का लेक्चर सुनकर नहीं समझ पाएंगे। कोई ऐसा एक मोमेंट होगा जो वाउ मोमेंट रहेगा, चाहे वो 30 सेकंड का, 1 मिनट का, अगर आपने उनमें एंगेज कर दिया, ऑडियंस आपकी समझ गई, तो हो सकता है आपका रिसर्च आगे बढ़ जाए। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एंगेज कैसे होंगे ऑडियंस व्हेन द रिसर्च इज प्रेजेंटेड। सो दैट इज वन ऑफ द पार्ट। सेकंड, डेटा विजुअलाइजेशन। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, फैक्ट्स फिगर्स पे बात की जाती है, अगर आपका डेटा विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो समझ में नहीं आता है। ये ऐसा नहीं कि फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर कोई नॉर्मल रिसर्च कर रहा है और कई हजार लोगों ने उस पर रिसर्च की है, तो आपने क्या उसमें आइडेंटिफाई किया? क्या उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाके विजुअलाइज कर सकते हो कि किसने क्या क्या पैरामीटर पे काम किया, क्या क्या उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, और उसके आगे मेरे लिए क्या बच रहा है? अगर ये कर सकते हैं तो एक तरह से हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन करना चाहिए। इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन,
So impactful communication, again, you can create a story and you can do that. Next, a biometric measurement. लोग बोलेंगे सर साइंस की बात हो रही है, क्या हो रहा है, देखते हैं. So what is biometric measurement? What do you understand? क्या हो सकता है? बहुत सारे इमेज प्रोसेसिंग में, अगर ये कंप्यूटर साइंस की बात की जाए, तो यहाँ पे हम लोग बहुत ऐसे रिसर्च हुए जिसमें हम लोगों ने इस पे काफी ध्यान दिया कि कैसे हुआ. लेकिन क्या सिर्फ ये कंप्यूटर के लिए है या मेडिकल साइंस के लिए? Again, it's a fact. We have to check that. So what is over there? A biometric measurement is a market research technique that can use to gather data from various participants. अब वो कैसे डेटा हो सकते हैं, चलिए देखते हैं. और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये स्लाइड के आगे बताने के पहले एक छोटा सा ब्रीफ दूंगा. आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा, एक रिसर्च ने बोला है कि हम लोग 28 डिजिटल ऑब्जेक्ट से नियर बाय घिरे हुए. डिजिटल ऑब्जेक्ट का मतलब आप IoT ले लो, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले लो जो एक सेंसिंग कैपेसिटी रखती है, कम्युनिकेट करती है और डेटा को कैप्चर करती है. अगर ये सच है तो क्या इसमें रिसर्च की पॉसिबिलिटीज है? लोग कर रहे हैं, लेकिन कैसे होगी तब देखते हैं. पहला, फिजियोलॉजिकल डेटा. क्या होगा? बायोमेट्रिक मेजरमेंट कैप्चर्स डेटा लाइक हार्ट रेट, फेशियल. क्यों? अब लोग बोलते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस करो. सेंटिमेंट कैसे हो, तुम दुखी हो, नाराज हो, आजकल इसमें भी हो रहा है एनालिसिस. इवन ऐसे अजीबोगरीब नहीं बोलूंगा, बहुत इनोवेटिव रिसर्च बोलूंगा, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये एनालाइज करके बता देते हैं कि बंदे का एक्सप्रेशन क्या है. और उसमें डेटा ही नहीं बता देगा. आउट ऑफ 100, 50 पीपल आर इन अ डिफरेंट मूड, 50 पीपल आर एंग्री, 40 पीपल आर आउट ऑफ द बॉक्स. दैट मीन्स व्हाट वी आर एक्चुअली प्लेइंग विद डेटा. एंड डेटा कहाँ से आएगा? कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं कैमरे लगे होंगे, आपके पास सेंसर होंगे. हार्ट मॉनिटरिंग कैसे होगी? आपने घड़ी पहनी है. आज SpO2 बहुत फेमस हो गया था कोविड के बाद. सारे मेकर्स ने मार्केट के सेंसिटिव को समझा और सब ने SpO2 डाला. उनका मार्केट से लगभग 2000% बढ़ा था. क्या हम लोग कभी डेटा की बात करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कि ये क्या इम्पैक्ट कर रहा है, शायद मार्केट या रिसर्च बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा. और किसी भी फील्ड में हो सकता है. नेक्स्ट, लेट्स टॉक ऑन द कंज्यूमर इनसाइट. कंज्यूमर इनसाइट में क्या हो सकता है? दिस टेक्निक प्रोवाइड्स द इनसाइट टू द कंज्यूमर रिएक्शन एंड प्रेफरेंस. अब कैसे करेंगे रिएक्शन? किसी के पास टाइम है, आप कुछ भी बाय करो प्रोडक्ट. मैं लोकल स्टोर में नॉर्मल ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ. कुछ नहीं बोलते हैं, पहले लोगों ने फॉर्म भरो, रेटिंग दो, कोई नहीं देता, इधर टाइम नहीं है. फिर लोगों ने बोला रिएक्शन ही दे दो. हाउ यू लाइक द प्रेफरेंस 0 to 10. अब सोचो वो डेटा का करेगा क्या? वो सारा डेटा कलेक्ट करेगा और देखेगा कि यार हमारा कंज्यूमर क्या सोच रहा है, व्हाट ही इज थिंकिंग, वेदर ही इज हैप्पी और नॉट. तो ये इंसाइटफुल डेटा आपको मार्केट में सस्टेन करने के लिए हमेशा जरूरी है. थोड़ा कमर्शियल हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, रियल टाइम फीडबैक. रियल टाइम फीडबैक, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया. एक जगह पे बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा था. एक ने क्या किया, अपने मतलब एक मशीन के इक्विपमेंट को सेट किया और पूरा होने के बाद उसने डेटा विजुअलाइजेशन किया रियल टाइम में. और उसने ये बताया कि जब लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे सारे, और जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, इसने ये बता दिया कि सबसे अच्छे प्रेजेंटर कौन थे. उसने वो प्रूव कर दिया. अब बताओ कैसे होगा? क्या उसने सर्वे कराया? कोई नहीं भरता है फॉर्म. उसने क्या किया था, क्लैप्स को काउंट किया. एक प्रेजेंटेशन के दौरान कितने लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी डेसिबल कितना है, उस बेस पे काउंट करके लास्ट में ये बता दिया कि यार इनका प्रेजेंटेशन सबसे इफेक्टिव था, क्योंकि इनके इसमें इतनी बार क्लैपिंग हुई, इंटेंसिटी इतनी हाई थी, इसलिए बेस्ट प्रेजेंटेशन. हाउ द थिंग्स हैपन गाइस, दिस ओनली हैपन जब लोग सोचते हैं और हो सकता है. ठीक है. तो ओके, नेक्स्ट वर्चुअल रियलिटी. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी कहीं ना कहीं आगे जाके काम आएगा. आप देख लीजिए कैसे मार्केट टेक्निक पॉपुलर ईयर्स में होगा. हाउ डज इट गोइंग टू इम्पैक्ट? इट इज एक्चुअली गोइंग टू इम्पैक्ट फॉर इमेंसिव एक्सपीरियंस. अगर ये किसी के लिए रिलेवेंट मैं छोड़ दूंगा, कंज्यूमर बिहेवियर और उसके बाद प्रोडक्ट टेस्टिंग. मोस्टली अब आज के बाद जितने भी प्रोडक्ट बनने वाले होंगे, आपको अगर पता होगा, एक हमारे
कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है जिसमें SDLC हम लोग फेजेस भी पढ़ते हैं। अब हम लोग एजाइल पे गए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है एजाइल मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करने की। आज की डेट में अब मान लो अगर कोई एक प्रोडक्ट इनोवेटिव बना रहा है, टूथपेस्ट या कुछ भी बना रहा होगा, या फिर उसको एक्सपीरियंस देना है, अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग इसका पहले सिमुलेशन मॉडल बनाएंगे, इसको एक्चुअली टेस्ट करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट AR VR के थ्रू, और बाद में देखा जाएगा कि वेदर इट इज गोइंग टू बी यूजफुल और नॉट। मतलब एक बहुत बड़ा कॉस्ट जब प्रोडक्शन पे जाता है उसके पहले ही लोग डिसीजन लेंगे, और डिसीजन इसके ऊपर देखेंगे कि हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपैक्टफुल। मतलब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट ये है कि अब जो पहले हर तरह की इंजीनियरिंग होती थी उसके बाद भी कई बार प्रोडक्ट फेल होते थे, उनको देखने के लिए नया रिसर्च कॉन्सेप्ट किया है कि AR VR का यूज करके हम ऑब्जर्व करेंगे हाउ डज द कंज्यूमर बिहेवियर प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड कैन बी एनहांस। और ये बहुत ज्यादा VR का टेक्निक यूज होने वाला है हमारे डिजिटल प्रोडक्ट में। मैं ज्यादा इसलिए बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग शायद उसका आइडिया नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट यानी क्या है, काफी सर्विसेज होती हो, चाहे गेमिंग सर्विस हो गई, चाहे आप सोशल मीडिया सर्विसेज यूज करते हो, ये सारी सर्विसेज के लिए ये बहुत जरूरी है। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है पार्ट, दैट इज पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। अब ये है क्या, क्या होता है इसमें हर तरह के रोल इन्वॉल्व किए जाते हैं पीपल के और इसके डिसिप्लिन। तो फर्स्ट इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। और अगर आप देखोगे शायद हर रिसर्च में बोला जाता है कि हाउ योर रिसर्च इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। शायद ये क्वेश्चन हर इस रिसर्च में आना चाहिए। एक्चुअली ये मैंडेट है, UGC भी बोलता है कि आपका रिसर्च कैसे हेल्प करेगा सोसाइटी को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है शायद फॉर्म में या कहीं ना कहीं आपके आएगा। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा, इसके लिए आप क्या देखोगे, इसके लिए आपको पार यूज करना होगा। ठीक है। सेकेंड, एम्पावरमेंट, whether it is going to empower or create a new change। हाइपोथेटिकल रिसर्च जब हम लोग बिल्ड करते हैं तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट को रखते हैं जिसको हम लोग क्वालिटेटिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस प्रोडक्ट से या फिर मैं इस रिसोर्स से एक एक्सपीरियंस चेंज करूंगा, बिहेवियर चेंज होगा सोसाइटी का, एक एटीट्यूड चेंज होगा। अगर ऐसी कुछ चीजें आती है, अगर बात क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, तो हाउ डज इट गोइंग टू हैपन, देन वी रिक्वायर सर्टेन थिंग्स। So it involves empowerment, social justice. It goes and addresses social justice also with the issues. So this is the path. A path की जरूरत क्यों है? Because of certain things designed with sustainability, implementation, implementation. ये सारे जो sections है, ये section ये decide करते हैं कि how basically the research is going to help when the people are involved and how they are going to do that. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग जो भी देख रहे हैं अभी ये सारे मेथोडोलॉजी है। ठीक है, आपको ये सोचना है कि इनमें से कौन सी मेथोडोलॉजी आपके रिसर्च को फिट कर सकती है। नेक्स्ट इज वी हैव एप्रिशिएटिव इंक्वायरी, जिसको AI भी बोला गया है। तो एप्रिशिएटिव इंक्वायरी इज अ पॉजिटिव रिसर्च अप्रोच दैट एम्स टू रिडायरेक्ट द फोकस अवे फ्रॉम प्रॉब्लम एंड नेगेटिविटी। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें बोलना जरूरी है। रिसर्च जब करने जाता है तो कोई ना कोई माइंडसेट लेके हम लोग चलते हैं। कितने लोग ये होते हैं, आज आपने देखा होगा कि हम लोग पॉजिटिव रिसर्च की बात करते हैं, इंक्रीमेंटल 90 से 95%, लेकिन किसी ने निगेटिव रिसर्च की बात की है? ऐसे कई जर्नल्स हैं बहुत हाई क्वालिटी के जो निगेटिव रिसर्च में पब्लिश करते हैं। इमेजिन अ रिसर्च कम्युनिटी और रिसर्च पीपल doing the research for a long years and they didn't got a result, but they got the negative result. Mostly it happens in the medical field. Does it go waste? No. It could be one of those pillars which can be actually used by other people. जो लेके जा सकती है, तो वैसे रिसर्च भी पब्लिश होते हैं। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ, we are talking on the positive, that is appreciative inquiry. Appreciative inquiry actually helps us to ensure that we are only focusing on the positive aspect of the research and we are ignoring all the negative parts. मतलब अगर रिसर्च में अगर 10 सेक्शन है जिसमें आपको लगता है 7 या 8 नेगेटिव जा रहे हैं, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को लो और रिसर्च को आगे बढ़ाओ। कैसे होगा? इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसको इसलिए आपको देखना होगा स्ट्रेंथ बेस, हाउ टू मेजर द स्ट्रेंथ। देन अगेन यू गो एंड डू द लिटरेचर रिव्यू, आप उसमें रिवाइज करोगे एंड देन यू विल गो एंड कंक्लूड दैट ओके दीस आर ऑल माय स्ट्रेंथ्स वेयर आई कैन गो एंड वर्क, जहां पे मुझे लगता है। तो फोकस करना होगा हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई योर एंड बिल्ड योर स्ट्रेंथ। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, पॉजिटिव चेंज। हाउ व्हाट इज द पॉजिटिव चेंज? Again, it's something which is going to create something new or innovative.
नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव प्रोसेस। रिसर्च में अगर कोई सोचता है कि सर हम अकेले कर लेंगे, शायद नहीं है। आज तक कोई भी रिसर्च सिंगल हुई नहीं है, एटलीस्ट एक मेंटर की साइड। अब जमाना चेंज हो गया है, हम लोग कोलैबोरेशन की बात करते हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कोई अच्छा फ्रेमवर्क मैंने अभी तक नहीं देखा जहाँ पे कोलैबोरेटिव रिसर्च हो रहा है, लेकिन ये होना चाहिए। और अगर मैं बोलूँ कि मुझे मार्केट में या मुझे इंडस्ट्री में कम्पीट करना है एजुकेशन सेक्टर में, देन वी रिक्वायर टू हैव सर्टेन पीपल टू कंट्रीब्यूट। शायद आप लोगों ने एनबीए, एनआरआईएफ, यूएस रैंकिंग या फिर मैथ सुना होगा। इनमें कई स्पेशली जहाँ पे कोलैबोरेटिव रिसर्च को प्रेफरेंस दी जाती है एंड दे यूज टू गेट अ मेजर एडवांटेज ऑन इट। अगर ये नहीं हो रहा है तो शायद हमें आज भी स्टार्ट करना होगा और देखना होगा। ठीक है, सो दिस इज एन अप्रिशिएटिव इंक्वायरी पार्ट। नेक्स्ट, इफ यू सी व्हाट डज दिस प्रोसेस इंक्लूड, अगर किसी को ये मेथडोलॉजी यूज करनी तो उसके लिए क्या सिंपल मेथड हो सकता है? यू हैव टू फर्स्ट गो एंड टॉक ऑन डिस्कवर, ड्रीम, डिजाइन एंड डिलीवर। So discover what is the best for you and for your research part. How you are going to do the dream. So dream is what you thought, what the positive can come on that part. And second, the design, how you are going to design, and last is the delivery. Delivery is something which actually talks only on the outcome. Outcome नहीं रहेगा तो delivery का impact नहीं रहेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे रिसर्च का उद्देश्य है कि एटलीस्ट पेपर पब्लिश हो जाए तो होने चाहिए। अगर वो हाई क्वालिटी इम्पैक्ट होना चाहिए तो होना चाहिए। और इसके कई अलग अलग तरीके हैं करने के। कुछ लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते करते उनके पास इनोवेशन आ जाता है, वो क्या करते हैं, आइडिया को कॉपीराइट कर लेते हैं। अगेन इट्स वन पर्टिकुलर आउटकम। आइडिया कॉपीराइट करने के बाद उनको लगता है प्रोडक्ट मेरा बन रहा हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, वो पेटेंट कर लेते हैं यूटिलिटी में। यूटिलिटी पेटेंट होते होते उनको ये ध्यान में आता है कि यार जो मेरा आर्किटेक्चर है वो काफी इंप्रेसिव और इनोवेटिव है, तो वो डिजाइन पेटेंट कर लेते हैं इंडियन का। और डिजाइन पेटेंट होने के बाद पता चलता है कि 3-4 मेथड से मेरे 2-3 पेपर पब्लिश हो गए और एट द एंड मेरी डिग्री अवार्ड हुई। तो डोंट यू फील कि ये सारी चीज करते करते हमने कुछ एक्स्ट्रा किया? नहीं किया। हमने हमारे रिसर्च को पढ़ा और हमारे रिसर्च में हमने तरीके ढूंढे, मेथड्स को समझा, आइडेंटिफाई किया एंड एट देन वी कम विद द लॉट ऑफ इनपुट। फ्रैंकली स्पीकिंग, लोग बोलते हैं मेडिकल साइंसेज में, बायोटेक में, केमिस्ट्री ऐसे साइंसेज फील्ड में या इवन सोशोलॉजी, हर जगह पे रिसर्च ज्यादा से कंप्यूटर वाले नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा है। फ्रैंकली आई वुड लाइक टू टेल यू, बिकॉज प्रॉब्लम ये थी हम लोग पहले कुछ और डिसाइड करते हैं, स्टार्ट हम लोग गलत करते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी टॉपिक पहले डिसाइड नहीं हो सकता। आप उसका एक कॉन्सेप्ट रख सकते हो, फिर आप उसको जब पढ़ते हो थोड़ा, जिसको बेसिक प्रिलिमिनरी स्टडी कहा जाता है, तो उसमें आप आइडिया को अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर बनाते हो और फिर बाद में आगे जाके बढ़ते हो। तो एप्रिशिएटिव इंक्वायरी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप लोग ये समझ सकते हो कि पॉजिटिविटी कौन सी लेनी है, ताकि निगेटिविटी से बचकर हम कहीं ना कहीं आउटकम को लेकर आए। मोस्टली कई बार ऐसा हुआ है कि जब हमारा फोकस सिर्फ निगेटिविटी पे जाता है तो हमारा आउटकम नहीं आ पाता। तो ये एक मेथडोलॉजी, ये टेक्निक इसलिए ताकि इसको हम बच सकें। नेक्स्ट, ओके, एक और है आर्ट बेस्ड एजुकेशनल रिसर्च, जिसको ABER कहा जाता है। दिस आर्ट बेस्ड एजुकेशन रिसर्च इज अप्रोच यूजेस फॉर्म ऑफ आर्ट। अब इसमें क्या होगा? So what is required? First is creative expression. Next is qualitative data. अब qualitative data आपको मैंने बता दिया, इसमें क्या होगा फिर कैसे करोगे qualitative? फिर आपके पास एक सेकेंडरी सोर्स होगा। मोस्टली जब भी हम मैंने देखा है क्वालिटेटिव रिसर्च में, मैक्सिमम लोग हमेशा अपने सेकेंडरी सोर्स, सॉरी प्राइमरी सोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सेकेंडरी गलती हो गया, प्राइमरी पे डिपेंड करते हैं। तो क्या होता है प्राइमरी डेटा सोर्स हमारा? एनी आइडिया? मतलब अगर मैं रिसर्च करूँ तो प्राइमरी रिसर्च हमारा क्या होगा? आर्ट कॉलोगे तो मैगजीन, लिटरेचर, और हमारे कंप्यूटर साइंस वालों को डेटा सेट। शायद हमने सुना होगा कैगल बहुत फेमस है, मैंने देखा आजकल के हमारे सारे बच्चे कैगल के डेटा सेट यूज करते हैं, वेरी पॉपुलर है। आपको और बहुत सारे डेटा सेट मिलेंगे। कुछ लोग अगर साइंस में है, इवन गवर्नमेंट अगर किसी को लगता है कि क्या डेटा सेट में इसमें मिल सकता है तो शायद हाँ, बस आपको उन्हें convince करना होगा कि ये डेटा सेट कहीं ना कहीं यूज होगा।
तो ऐसा काफी चीजें जिससे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें दो चीजें कंबाइन हुई है। आपका एक अप्रोच जिसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोच होगी, एक हाइब्रिड फॉर्म में आएगा, जिसमें क्या होगा कि दोनों चीजें जरूरी होगी। मतलब मैं किस पैरामीटर पे भी बात करूंगा और एट द एंड मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वालिटी को एनहांस करने की बात करूंगा। जैसे एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर मैंने कोई ऐप बनाया और मैंने बोला यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज, तो अल्टीमेटली मैं क्या करूँगा, उसकी क्वालिटी की बात करूँ कि वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और क्वालिटी में मैं बोलूंगा कि ठीक है इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा इंक्रीज हुआ, जिसमें आज जो सिस्टम पहले लैग कर रहा था वो लैग नहीं कर रहा है। तो ये हाइब्रिड अप्रोच, जिसको मिक्स्ड अप्रोच भी कहा जाता है, जो हम यूज करते हैं। ज्यादा क्लियर हो रही है तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्लो रहता है ट्रांसलेशन। Okay, so there is a delay. I think RF frequency problem actually. Next, digital methodologies. Uh, Digital methodology again is the technique by which you can collect your data. So mostly there is online surveys you can go and social media analysis. You can't imagine बहुत सारे ऐसे केसेस है जो ट्वीट के बेस पे एनालाइज किया जाता है। ट्विटर डेटा देगा, यस डेटा एक तो देता है, आपको उसको कॉल करना होगा, प्रॉपर प्रोसीजर है, लेकिन आप व्हाट इज हैपनिंग। अब देखो इसमें कोई बोलेगा कि सर इज इट दिस इज ओनली फॉर द कंप्यूटर साइंस, नहीं, एक कॉमर्स वाला भी कर सकता है, देख सकता है वो क्या है, ट्रेंड देख सकता है, पॉलिटिकल साइंस वाले देख सकते हैं कि आज ट्रेंड क्या है, सेंटिमेंट कहाँ जा रहे हैं। इवन यू कांट इमेजिन, लोग तो न्यूज वाले बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होगा। तो दिस ऑल बेस्ड ऑन द वेरियस डिफरेंट कीवर्ड। कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर वो क्या है ना, डेटा को पकड़ते हो, प्रेडिक्शन करते हो और इसके लिए उसका मॉडल लगाते हैं। ओके, तो मेथोडोलॉजी से थोड़ा शिफ्ट करते हैं और कुछ टूल्स को समझते हैं। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द टूल्स यू माइट बी नोइंग, इफ यू आर नॉट यूजिंग यू शुड स्टार्ट। बिफोर आई जंप टू द टूल्स आई शुड टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप रिसर्च इंग्लिश में करो, यू डू रिसर्च इन हिंदी, और यू डू रिसर्च इन मराठी, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट अ रिसर्चर फेस, क्या होगा बताओ, रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर गाइड पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा एग्जैक्टली डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जब भी हम कभी स्टार्ट करते हैं हम एक स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, हम ना टाइमलाइन बना पाते, और जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डेटा रैंडमली कलेक्ट होता है, ऑन द टोज होता है। ऑन द टोज का मतलब एकदम गड़बड़ी में। मेरे गाइड ने बोला कल चाहिए सुबह, तो आज रात में हमारे को हम लोग उठते हैं और करते हैं। देखिए, लेकिन होता क्या, रात में करना गलत नहीं है, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, आप क्या भूल जाते हो, कहाँ से लिया, साइट किया कि नहीं किया, रेफरेंस कहाँ से कॉपी किए, आज भूल गया तो कल क्या होगा। और जब ये चीजें बढ़ती जाती है, एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ये लास्ट में आदमी कम से कम 6 मिनट ज्यादा इस चीज में वेस्ट कर देता है कि वो जो कलेक्ट किया वो कहाँ से किया, कैसे नहीं हुआ, साइट नहीं हो रहा, रेफरेंस नहीं मिल रही, काम नहीं कर रही, एक आधार हो गया, क्योंकि हमें पता नहीं कि साइट कैसे रखना है, एक्चुअल डेट क्या रखनी है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है भले ही कोई कुछ भी बोले, लगता होगा कि नहीं कंप्यूटर वाले कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल गलत। मुझे लगता है यहाँ पे सभी रिसर्चर ने और सभी गाइड्स ने अपने स्कॉलर्स को एक चीज बोलना चाहिए कि अपने रिसर्च डॉक्यूमेंट या अपने रिसर्च के पूरे डेटा को ऑनलाइन रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना नहीं होगा। अब कैसे रखोगे ऑनलाइन, सर फिर उसके लिए टूल्स खरीदो, नहीं। आज जो मैक्सिमम टूल की बात करके सारे फ्री रहेंगे, शायद आपने सुना भी होगा। सबसे
फ्री टूल जो आपके लिए सबसे इजी है वो है आपका गूगल ड्राइव। फर्स्ट जैसे गूगल ड्राइव पे आपका एक अकाउंट होना चाहिए जिसपे आपका गाइड कोलैबोरेटर में होना चाहिए जरूरी, ताकि जो भी आपका डेटा है ऑनलाइन रहे। कल को आप बीमार हो लेकिन आपका गाइड देख पाए, आपका गाइड आपके डॉक्यूमेंट पे कमेंट कर पाए और बता पाए कि यहाँ गलती हो रही है, या फिर आप 4 लोगों को इन्वॉल्व करके कोलैबोरेटिव रिसर्च कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि रिसर्च करने के लिए सबको एक साथ बैठना और चाय पीने की जरूरत नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं है तो। कैसे होगा स्पीडअप? कैसे हम जो 6 महीने के काम जो होते थे छोटे से मिस्टेक के लिए हम लोग टूट जाते थे, आज उसको कैसे हम लोग रैपिडली कर सकते हैं, जिसके ओनली पॉसिबल व्हेन वी आर यूजिंग द आईसीटी टूल, जिसको आईसीटी हम बोलते हैं लेकिन समझते कुछ और तरीके से। आईसीटी टूल हमारे रिसर्च में अगर यूज नहीं होगा तो नहीं होगा। बेस्ट है आपका, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका डेटा सारा ऑनलाइन होना चाहिए। आप सारी सेटिंग कर लो, आपको जो फॉन्ट रखना है मराठी के रख लो, बंगाल रख लो, कोचिंग, या फिर आप इंग्लिश में रख लो, जो करना है कर लो, सारा एक साथ सेटअप करो और अपने गाइड को इन्फॉर्म करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं और एक दो बोलते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सब लोग मार खाते हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं भी बोलूंगा कि हमने भी जो गलती की है, और हम बताते रहेंगे लेकिन फिर भी वही गलती होती है, तो शायद वो कहीं ना कहीं इसका स्टॉप करना चाहिए। और लोगों ने अपना टाइम इस डेटा मैनेजमेंट या डॉक्यूमेंटेशन के बजाय रिसर्च में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और मैं जाने से पहले ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि कोई भी अपना मैक्सिमम टाइम फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट में नहीं लगाए, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करेगा, लोगों से मिलेगा, अलग अलग मेथोडोलॉजी से लोगों ने रिसर्च की और एक्चुअल में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाए। अगर ये हो रहा है तो फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे रिसर्च का जो लेवल है वो 100% इंक्रीज होगा, एंड आई एम वेरी श्योर फॉर दैट। ओके, फर्स्ट ज़ेटरो। काफी लोगों ने सुना होगा नाम, सर के काफी सेशन भी हुए हैं। लोग ज़ेटरो टूल को कैसे मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये शायद बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत ही इजी है। आप चाहो तो अपने ज़ोटोरो पे एक्सटेंशन लगा के भी रख सकते हो। कोई आपको आर्टिकल अच्छा लगा, एक्सटेंशन इंसाइट करो, इंपोर्ट करो, आपका डेटा मैनेजमेंट में आ गया। जितने भी आप पेपर आर्टिकल पढ़ रहे हो, ज़ोटोरो पे अकाउंट बनाओ, और जब भी आप अकाउंट बनाओ सारे अकाउंट आपके एक जैसे होने चाहिए, मतलब एक ईमेल आईडी से, ताकि सिंक्रोनाइजेशन इजी हो डेटा। आप साइटेशन मैनेजमेंट करने के लिए ये सबसे इंटरेस्टिंग टूल है, आप इसका यूज जरूर करिए। इसमें क्या क्या आपको फीचर मिलता है मैं बता दूंगा। ये छोटा सा इंटरफेस है दिया हुआ। एफर्टलेस ऑर्गेनाइजेशन, क्यों एफर्टलेस बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एफर्ट तो लगता है। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा यार सर ने मुझे सुबह मांगा है, अब मैं रिटर्न करूँ, नहीं, पहले दिन से करो और करके रखो, ताकि आप जितने भी डॉक्यूमेंट ले रहे हो, जितने भी आप रेफरेंसेस ले रहे हो, सारे हमेशा रहेंगे। और याद रखिएगा ये इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, मतलब आप चाहो तो कहीं भी किसी भी जगह पे इंटीग्रेट कर सकते हो और सारा रेफरेंस मैनेजमेंट साइटेशन स्टैंडर्ड में होगा, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड इट्स अ प्रॉमिस एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल। मेंडले का नाम लूंगा मैं, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। एक कहा फादर बोल सकते हो साइटेशन मैनेजमेंट, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा इजी अगर चाहिए तो दूसरे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सीमलेस इंटीग्रेशन, मैंने अभी इस वर्ड का यूज किया, हो सकता है। इसके बाद कोलैबोरेटिव फीचर, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है कोलैबोरेट करने का। यानी कि अगर मान लो मुझे शेयर करना है तो मैं शेयर कर सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ डेटा क्वेश्चन रखते हैं, कुछ हमें शेयर करने होते हैं, लोगों से बोलना होता है, तो हम लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव फंक्शनैलिटी, बहुत अच्छे फंक्शन है, बताने जाऊंगा तो इसके लिए अलग 2-3 सेक्शन लग जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझिए। ऑनलाइन डेटाबेस है, फ्री टूल है, आप ये ओपन सोर्स फंडेड टूल है, आप इसको यूज कर सकते हो, इसका यूज जरूर करिए। सिर्फ जो आपको पता है मैंने मैं किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक की बात नहीं करूंगा, बिकॉज आई वांट टू एंश्योर कि रिसर्चर इस कॉम्प्लेक्सिटी से थोड़ा बाहर जाए और वो सच में रिसर्च करने में फोकस करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टूल इज क्वालिटी। अभी कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे प्लेटफॉर्म है, इसमें अगर आप देखोगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं, सर्वे क्रिएट कर सकते हैं। अब लोग बोलेंगे सर ये कहाँ से नया ले, हमारा गूगल फॉर्म अच्छा है, इट्स ओके फाइन, इट्स ऑल अप टू यू। अगर लोग बोलेंगे सर्वे फंक्शन भी बहुत अच्छा है, ये भी बेस्ट है, लेकिन हर एक की लिमिटेशन है। इसमें भी शायद लिमिटेशन है, इसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर लगे जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसमें कर सकते हो। डेटा कलेक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें है ना, आप इसमें एनालिटिक्स कर सकते हो, मतलब डेटा एनालिटिक्स की बहुत ही खूबसूरत है। मान लो मैंने एक डेटा प्रोवाइड कर दिया, बहुत सारा सर्वे ले लिया, अब मुझे पता नहीं कि रिजल्ट कैसे आएंगे, तो वो आपको जनरेट करके देगा बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट बता देगा, जो आपको शायद पता नहीं था कि यार ऐसा भी हो सकता है।
कई बार ऐसा होता है कि जब एआई टेक्निक यूज होती है तो वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को भी लेके आती है जो हमने शायद सोचा नहीं था। कितने लोग मेरे सर्विस से खुश नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। कितने लोगों ने सर्वे कितनी देर में कंप्लीट किया, ये कैसे पता चलेगा। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि लोग जल्दी में कुछ कर देते हैं। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों के एनालिसिस करना, और कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ अच्छा पॉइंटर मिलेगा जो हमारे रिजल्ट को बनाने के लिए या फिर बेस करने के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका टूल आ रहा है, हाँ, इसको बोलते हैं दो ही टूल कहते हैं, जो आपको एक मिक्स मेथड एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। एक आपका क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड एनालिसिस, इसमें आप कर सकते हो। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो जो आपने क्रिएट किया या फिर जो आपने अपने सोर्सेज से लिए अलग अलग। इसमें आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे फॉर्मेट देखिए सबसे इंटरेस्टिंग, अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ, सिर्फ आप टेक्स्ट नहीं, आप यहाँ पे वीडियो दे सकते हो। मतलब अगर किसी को एनालाइज करना है, इमेज ले सकते हो। That means what? There are various different formats already. कई लोग इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, लोग बोलते हैं प्लान जैसे डिटेक्ट करना है मुझे, तो क्या करेंगे, प्लान की फोटो लेंगे, फिर एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि प्लान में कोई डिफरेंस नहीं है। अलग अलग तरीके हैं, मतलब मैं एक नहीं दूंगा। फिर कोई बोलेगा वीडियो एनालिसिस करना है, वीडियो में देखना है कि क्या हो रहा है वीडियो में, वीडियो पूरा का पैटर्न क्या है, हाउ द वीडियो इज क्रिएटेड, व्हाट इज देयर, दैट हाउ द कैन। बहुत लोगों ने वीडियो सेगमेंटेशन पे भी काम किया, शायद सर ने भी काम किया वीडियो सेगमेंटेशन, सबको पता होगा। और उसके बाद आप कर सकते हो कोडिंग एनालिसिस। अब कोडिंग एनालिसिस ये पार्ट है जिसमें आप टीचर डिसाइड करते हो कई तरीके के, आप इसमें अपने कस्टमाइज कोड देते हो, डिटेल रिपोर्ट पेज तरीके से देखते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन है कोलैबोरेशन का। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जाननी ये है कि मैंने जितने भी टूल्स सिलेक्ट किए, मैंने कहीं ना कहीं एक चीज ध्यान रखी कि कोलैबोरेशन होना चाहिए। अगर कोलैबोरेशन नहीं है तो कई बार हमारा डेटा आइसोलेट होकर रह जाएगा। हो सकता है कि मैंने जिस फॉर्मेट में किया वो मेरे दूसरे किसी फॉर्मेट में सपोर्ट ना हो। इसके बाद हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट पे, टैबुलर। बहुत लोगों ने यूज किया होगा, लोग बोलते हैं आर भी यूज कर सकते हैं। अगेन अगेन इसका प्लेटफॉर्म है विजुअलाइजेशन स्टैंडर्ड, बहुत ही पावरफुल विजुअलाइजेशन देता है वो। अभी क्यों चाहिए हमें, एज अ रिजल्ट हमने कर लिया ना, एक्सपेरिमेंट सेटअप हो गया हमारा, मेथडोलॉजी सिलेक्ट हो गई, रिजल्ट पास आएंगे, कैसे हम बताएंगे लोगों को दिखाने के लिए चाहिए थे, तब हम ये यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हो। अब ये बहुत सारे बिजनेस वाले लोग बनाते हैं, जितने भी लोग कॉमर्स वाले हैं, प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए बनाते हैं, तो आप कर सकते हो। एक और चीज़ मैंने देखा है जो गूगल का फ्री टूल है, जिसको लूकर कहा जाता है, लूकर डेटा। पहले उसको कुछ और नाम दिया था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, फ्री है। टैबुला और ये फ्री फीचर से आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसका आप एक चार्ट अलग तरीके की विजुअलाइजेशन, बार चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, अलग अलग तरीके की चार्ट कंपैरिजन करके आप बना सकते हो, प्लॉट कर सकते हो, हीट मैप बना सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ कैसे। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, बराबर से करूंगा। अगेन अगर क्वालिटी पे हम करना तो एक अनदर टूल है इससे, जहाँ पे आप इसको कर सकते हो, एनवीवा करके नाम है इसका, दैट यू कैन गो इन। यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट, यू कैन गो कोडिंग एनालिसिस सेम पार्ट, एंड देन विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, शायद इसके बारे में बात ना करो तो हम लोग मिक्स करने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम कहते हैं आईबीएम। आईबीएम इसलिए बोला गया क्योंकि आईबीएम ने इस तरह को दिया है एसपीएस से, और हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव, राइट, तो इसमें इसका जरूरी है। और कई बार डेटा हम लोग बहुत सारा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम उसका नहीं करेंगे आगे से तो शायद हमारे रिजल्ट अच्छे से इम्पैक्ट नहीं होंगे। आईबीएम ये पेड टूल है, फ्री नहीं है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे रिसर्च सेंटर में आपको मिल जाएगा। इसका यूज जरूर करिए, एक बार देखिए। और मैं ये जरूर चाहूंगा नए लेटेस्ट वर्जन यूज करके देखिए, जिसमें एआई की हेल्प से काफी अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशन और इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन मेरे लिखे हुए मेथड के बजाय और इंटरेस्टिंग मेथड से भी वो खुद करके देता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं एआई की मदद। तो जनरेटिव एआई आजकल बड़े में आ रहा है, लेकिन कंपनीज इतना ज्यादा रिसर्च करके उसे इम्प्लीमेंट कर रही है, दैट इज द पॉइंट इन क्वेश्चन, एंड आईबीएम इज अ ट्रस्टेड पार्टनर दैट यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट। So again you have data management, तो cleaning statistical analysis होगी यहाँ पे। आप ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, जिसका आप रिग्रेशन और आगे जैसे परफॉर्म करोगे। एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, ये काफी जरूरी है। मतलब प्रेडिक्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे, और इसमें आप अपने हाइपोथेसिस को कहाँ जस्टिफाई करोगे, तो करना भी जरूरी है। नेक्स्ट, मैंडेलिन।
मैंने सोचा कि मैंडे ना ही यूज करें, लेकिन ले लेते हैं क्योंकि मैंडे बहुत पावरफुल रहा है। मैंने काफी समय तक यूज किया। वगैरह भी यूज करो, बट डजंट मीन कि कोई ट्यून खराब या सही होगा। आपको जो कंफर्टेबल लगे, आप पहले से मैंडे यूज कर रहे हो तो डोंट शिफ्ट। मेरा एक मानना है कि आप लोग मल्टीपल टूल कभी यूज करते हो, जो आपको अच्छा लग रहा है फर्स्ट साइट में, आपको लगता है मुझे इसमें कंफर्टेबल है, वो करिए, लेकिन करिए जरूर। ये तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में निकल जाता है, अरे यार मेरे दोस्त ने वो किया तो वो कर लेते, फिर ये किया, तो एट द एंड हमारा कहीं भी नहीं मैनेज होता। ठीक है, रेफरेंस मैनेजमेंट है इसमें। इसमें भी कोलैबोरेटिव फीचर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। चॉइस है, चॉइस। इसके बाद क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन, एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फीचर है। क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन अगेन इंटीग्रेशन में अपने आप आ जाएगा। अगर आप किसी और सर्विस को इंटीग्रेट करते हो तो आपका डेटा किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में शिफ्ट हो जाता है। पीडीएफ एनोटेशन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैं इसे इसे बहुत जरूरी मानता हूँ। कई बार लोग बोलते हैं ना, अच्छा एक काम करो जॉब बुक कर जाओ, है ना, गाइड बोलते हैं, बोलना भी चाहिए। एक काम करो, एक ये रिसर्च मेथोलॉजी की बुक पढ़ जाओ, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। आजकल लोग बहुत स्मार्ट है। आजकल क्या हो रहा है कि एआई क्या करता है, आप बुक अपलोड करो और उसको बोलो गिव मी ऑल द इम्पोर्टेंट इनसाइट, तो आपको जनरेट करके दे देगा। देखो, मास्टर भी खुश, बच्चे बहुत खुश, क्योंकि जो काम वो सच में 10 दिन में नहीं कर सकते, उन्होंने वो कितने मिनट, 1 मिनट के अंदर अगर आपके पास है। प्रो वर्जन मांगता है, लेकिन जेमिनाई है हमारे पास, कैपेसिटी नहीं बोलूंगा ज्यादा, लेकिन है। इवन ऐसे कई टूल है, और ये भी मैंडेट टूल भी है। इसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, अपना पीडीएफ रिपोर्ट करते हो, रेफरेंस मैनेजमेंट के साइटेशन रेफरेंस भी लेगा, साथ में वो पीडीएफ एनोटेशन भी देता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके देगा। और वो सच में कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होगा। इसका मतलब ये है कि लार्ज डेटा सेट से मैं एटलीस्ट मेरे कमांड से मैं इंटरेस्टिंग कंपोनेंट को निकाल दूंगा, जिससे मेरा काफी टाइम बच जाएगा। पहले ये बोला जाता था, ओके, पहले ये बोला जाता था कि मेरा टाइम भी हो रहा है, मैं थोड़ा पहले ये कहा जाता था कि आप रिसर्च में टाइम नहीं देते। अच्छा, कितने लोग ये बोलते हैं कि आपको जब रिसर्च करना, लिटरेचर कम से कम 50-100 पेपर करेंगे, सब लोग बोलते हैं, क्या सच में कोई पढ़ता है 2-3 पेपर? अगर नहीं पढ़ा है तो गलत है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, हम एक ही बंदे के बायस कर जाएंगे। मैंने लिखा कुछ, आपने लिखा पेपर पूरा लिखा कहीं और मैंने कहीं ना कहीं किसी के बायसनेस कर दी, कैसे होगा देखिए। तो मेरा मानना है कि एआई ऐसी जगह पे बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बिल्कुल यूज करिए, लेकिन अपना एक सोच, जब तक आपको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रहेगी, आपका एआई टूल आपको हमेशा मिसलीड कर सकता है। प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। तो एनालिसिस एनोटेशन या फिर आप समरी करने के लिए बिल्कुल आप एआई टूल का यूज कर सकते हो, और इसके लिए काफी ऑप्शंस है। और कई बार क्या होता है कि ट्रस्ट किस ऐप पे करें, तो आप 3-4 लोग कंपेयर करके देखो, और एक बार अपने रियल सोर्स को मैच करके देखो, जो अच्छा लगेगा उसका आप कर सकते हो। इसके इक्वेशन भी है, फिर 4 इक्वेशन के बाद पेपर चेक कर लो, और ये करने का अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं देन इट्स गुड। मैं यहाँ पे की कोई भी सजेशन नहीं देना चाहता कि बेस्ट लुक होता है, बिकॉज हम हमेशा टेस्ट करते रहते हैं। इसके बाद एक और है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसको इंक्रीमेंटल बोला जाता है, दैट इज स्ट्रीमलाइन एकेडमिक राइटिंग। लोग बोलते हैं मीडिया यूज कर लेंगे, अलग अलग चीजें यहाँ पे काफी लोग ये आपके लिए लिख के देते हैं करके, मैं इसको ज्यादा नहीं करूंगा। लोग क्यूबॉट यूज करते हैं फॉर पैराफ्रेजिंग। पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वर्ड पैराफ्रेजिंग शायद ना हो तो बेटर है, लेकिन फिर भी पैराफ्रेजिंग करने के बाद भी अगर आपको लगता है करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका पर्सनल इंक्रीज हो रहा है प्लेगरिज्म में, पैराफ्रेज करने के बाद भी आप उसे ओरिजिनल सोर्स पर साइड जरूर करें। इसके दो एडवांटेज है। एक तो आपने उसके कंटेंट को तोड़ मरोड़ के लिख तो दिया, फिर भी आपने उससे क्या किया, एक रेफरेंस देके उसको साइड किया, और आपने उसके वर्क को रिस्पेक्ट दिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मान रहा हूँ, मैंने ऐसा देखा, कई लोगों को मैंने सुना भी है, हो सकता है शायद मैं गलत, मेरा पर्सनल ओपिनियन है रिसर्च के ऊपर। पूरे के पूरे रिसर्च में अगर आपने 5 से 10% में इनोवेशन काम किया होगा, 90% तक भी अगर आपने रेफरेंस और साइटेशन किया है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जब इनिशियल रिसर्च होता है, जिसमें आप बोलते हो कि एक तरह से सर्वे पेपर पब्लिश करना है, रिव्यू करते हैं, इसका रीजन ये है, आपने कई बड़े बड़े ऑथर के पेपर देखे होंगे जहाँ पे उनके साइटेशन 200-300 तक चले जाते हैं,
और उनका पेपर 2 पेज का होता है, एंड दे आर इन द गुड क्वालिटी एचसीआई, मतलब हर 2 सेंटेंस में उनके 4 साइटेशन है। आप इमेजिन करिए उनके डेप्थ को जाके कि उस बंदे ने वो एक लाइन लिखने के लिए 4-5 लोगों को पढ़ा है, और ये सबसे बड़ा रिसर्च है। रिसर्च 50 पेज का हो जाएगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं, वो 2 पेज में आपने कितना समझा, कितना खुद लिखा, समझ के लिखा, तब भी वो उसका ही काम है। लेकिन जब आपने खुद के मन से आपने डिराइव किया, आपने उसको इवॉल्व किया, नॉवेल लेके आया, तब वो आपका काम है, जहाँ पे नो साइटेशन की जरूरत है। अब लोग बोलते हैं सर इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट में भी रेफरेंस डालू क्या, ऐसा पूछा है किसी ने क्वेश्चन। एब्स्ट्रैक्ट सबसे आखिरी में लिखना चाहिए, कंक्लूजन होने के बाद। अगर कोई पेपर लिख रहा है तो टाइटल, अब इसके पीछे, क्योंकि जब हम सारा चीज कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इज नथिंग बट इंटायर कम्युनिकेशन लगना है, तो इसकी लास्ट लाइन आपका रिजल्ट रहेगा, इसकी लास्ट लाइन आपकी क्या रहेगी, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आपने यूज की, उसके प्रॉब्लम और उसके ऊपर की लाइन नहीं, 5-6 लाइन के ऊपर हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए, ज्यादा पढ़ा लिखोगे। अब ये क्यों, क्योंकि लोग सिर्फ वर्ड में, वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट और आपका कीवर्ड। कीवर्ड मेरा लालच है कि गूगल रैंकिंग में ऊपर आ जाएगा, कोई डालेगा, कोई स्मार्ट हो जाएगा, और टाइटल कॉम्प्रिहेंसिव होना ही चाहिए। तो पूरा रिसर्च, अच्छा ये मेथड से ये कर रहा है, तो इस तरीके से काम करने से ये एक्चुअली कह रहा है इंक्रीज करता है आपके रिसर्च की, क्या बोलते हैं, क्योंकि दुनिया के पास बहुत टाइम नहीं होगा, नहीं जाके पड़ेगा अपने इंट्रोडक्शन में करें तो कोई। ओके, तो या ये मेरा सबसे फेवरेट वेरी इंटरेस्टिंग। एक फूड आपके लिए पहले बात की थी जिसका नाम था जोमेटो या फिर मेंडले, एक और टूल आपको बहुत जरूरी यूज करना और मस्त, तो ओवरलेप क्यों बोल रहा हूँ, लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स करता है, आप मेंटली आप ओवरलीप यूज करो, ओवरलीप ऑनलाइन यूज करो, अकाउंट क्रिएट करो फ्री में, कोलैबोरेट करो, उसको लिंक करो अपने गूगल अकाउंट से, दैट इज राइट, और अपने सारे पेपर और सारे थिंग जो भी लिख रहे हो आप सब ओवरलीप में लिखना स्टार्ट करो। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ इसके बहुत चीजें। आपने पेपर कहीं पब्लिश करना है, एक्स ने बताया ए फॉर्मेट, मूड चेंज हुआ, मेरे कोलैबोरेटर बोला यहाँ नहीं करते यहाँ करते हैं फॉर्मेट चेंज, फिर आदमी ने 10 दिन लगाया उसको फॉर्मेट के लिए। आपके पास मल्टीपल फॉर्मेट सपोर्ट है, आप वहां जाके लेटेक्स के फॉर्मेट में, लेटेक्स व्हाई इट इज सो पॉपुलर, लेटेक्स फॉर्मेट सबसे हाईली एक्सेप्टेबल और रिन्यूड फॉर्मेट है अपने एकेडमिक राइटिंग में। उसके लिए आप पूरी थीसिस लिख सकते हो, पेपर को लिख सकते हो पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और ओवरलीप क्या करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरा इजी करता है लिखने के लिए। आप क्या कर सकते हो, वहाँ के बहुत सारे टेम्पलेट है, उसको उठाओ, खेल के देखो, उसके थोड़ा प्ले करो, प्ले देखो और उसका आउटपुट देखो। थोड़ा समय लगेगा टेबल्स में, फिगर रिपोर्ट में, इसमें, लेकिन आप तो मेहनत हम करते हैं पहले 6 महीने की, उसमें आप कर दोगे तो कोई भी कॉन्फ्रेंस फॉर्मेट चाहिए और सब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है लेटेक्स, तो कई ऐसे जर्नल्स हैं जिनको नहीं था फॉर्मेटिंग, disturbance is there. कहा फॉरेन में लोग होते हैं डिटेक्टिव में लिखा लोगों ने, क्योंकि लोगों को देना इवैल्यूएशन के लिए आजकल भेज रहे हैं, ठीक है। रियल टाइम कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम कोलैबोरेशन इसका बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, जिसमें अगर मान लो वो सिचुएशन आ गई कि यार कल तो प्रेजेंटेशन है, तुम्हारे गाइड बहुत गुस्से में है, ऐसे कैसे नहीं हो रहे, आ जाओ, नहीं आ सकता 200 किलोमीटर दूर, तो दोनों लोग एक साथ बैठो,
वो गलती बताएंगे, आप रेक्टिफाई करो, ऑनलाइन कोलैबोरेशन और रियल टाइम कर सकते हो, जैसे आप गूगल डॉक्स और स्प्रेडशीट पे करते हो। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये पूरे के पूरी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, आपके फोल्डर को, सब फोल्डर, एंटायर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ एक और है, तो इसको मेरे से बेसिकली ये सर्वे प्लेटफॉर्म मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ये शायद रिपीट हो गया, आई थिंक इट रिपीट। Yes, repeated. ओके, तो मेरा प्रेजेंटेशन वैसे खत्म हो गया। आई एम सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। तो पता नहीं जल्दी चलेगा। थैंक यू। मैंने कोशिश ये की कि थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए कुछ टर्म्स, बहुत कुछ मैंने ऐसे जार्गन वर्ड टेक्निक में जो शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे होंगे आपको, लेकिन मेरे ख्याल से रिसर्च में अगर हम लोग थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे आईटी का, या हेल्प नहीं लेंगे, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों ने एटलीस्ट यूज करने चाहिए। आपको बहुत अच्छा लगता है, करिए वर्ड में भी रेफरेंस मैनेजमेंट है, जो शायद काफी लोग करते भी होंगे, लेकिन आज की डेट में बहुत ज्यादा चेंजेस होता है। मैं डेटा वेटा की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के लिए सब लोग हैं, तो मैं सबके लिए बात करूंगा। कम से कम आपका डेटा मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और ये आपको कोई इंपॉर्टेंट कवर है। एक तो मेथडोलॉजी, कई तरह की नई मेथडोलॉजी के टर्म्स सुने हम लोगों ने, जो कि कुछ नए थे, और हमने ये देखा कि कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये सेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस विद मी। If any questions are there, you can ask. सारे लोगों के गिला शिकवा वाइस पे ही है, सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके, बट वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट टू ऑर्गेनाइजर जिन्होंने इतने कॉम्प्लेक्स टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश की है। एक रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन चलाना एक वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। थैंक यू वेरी मच। तो कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ लीजिएगा, आई एम वेरी ओपन, अगर आप पूछ सकते हो तो पूछिए। हेलो, या एनी क्वेश्चन? If anybody want to ask question online, they can also do it. Sir. Hello, sir. A simple question is that, sir, you have explained so many tools. Can you tell me how many tools of them are free and how many tools are paid? Just we said about the SPSS, it is paid. Is there any tool related with the SPSS, any open source tool? Okay, so very good question. सिर्फ एक ही टूल था जो पेड था, जो SPSS, और टैबुला भी पेड है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर विजुअलाइजेशन करना है आप लोगों को, तो सारे टूल्स पे मत जाइए आप मोस्टली। चलिए मैं इसको कैसे बताऊँ आपको, फ्री और पेड में क्या है। कुछ फीचर्स आपको फ्री मिलेंगे, नहीं मिलते देखिए ट्राई करिए। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि विजुअलाइजेशन के लिए क्या आपको कोई ऐसा टूल चाहिए जो आपको बहुत सारे विजुअल्स बनाते दे? नहीं सर, जैसे एसपीएसएस जो है काम है, नहीं होगा। मैंने इसलिए आपको एक वर्ड इसको आप सेंटर पे जरूर लीजिए, क्योंकि
आज जो एक्चुअली उसमें इंसाइट्स है काफी पहले जो फॉर्मूला बताइए हमारे आज वो हमें कुछ नहीं कर मैं जरूर चाहूंगा जितने भी लोग आप लोग सारे लोग मैं उसके अगर देखा जाए आपको बताऊं आपको लगेगा लेकिन आपको मैं इसलिए इस बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि यहाँ पैसा लग रहा है और एसपीएसएस का बात इसलिए किया बिकॉज ये आईबीएम का रेनॉन टूल है और जितने भी आपके सेंटर्स हैं रिसर्च सेंटर उनके पास ये टूल होगा ही और नहीं तो प्लेटफॉर्म ओपन है मैं कुछ वर्ड नहीं बोल सकता आपको टूल और कहीं से मिल सकता है आप कहीं से भी ले सकते हैं लेकिन इसका यूज जरूर करिए मेरा ये मानना है कि रिजल्ट शायद आपको मिलेगा लेकिन और रही बात डेटा मैनेजमेंट ठीक है लेकिन मेरे लिए हर रिसर्चर के लिए डेटा एनालिसिस बहुत जरूरी है सॉरी डेटा मैनेजमेंट बहुत जरूरी है जिसके लिए मैंने जो दो टूल बताया वो फ्री वो आपके लिए पे नहीं करते हैं गुड क्वेश्चन मैं इसका आंसर आपको अलग से भी दे सकता हूँ जिसमें बताया जाता है कि टूल मिल जाता है आपको आपके सेंटर से मिल जाएंगे आपके फ्रेंड्स के पास मिल जाएंगे लेकिन यूज जरूर करिए जितने भी लोग यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं ठीक है प्लीज एक बार जरूर यूज करिए लार्ज डेटा सेट बहुत अच्छे से प्ले करता है पहले के वर्जन हम लोग जब यूज करते थे मेरे ख्याल से 26 का वर्जन आज शायद 30 के अबाउ है लेकिन और बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने देखा है उसके ऊपर और मैंने उसके प्रेडिक्शंस को भी देखा जो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको अच्छे देता है ओके थैंक यू गुड क्वेश्चन सर थैंक यू सर थैंक यू क्या प्लीज तो ये हमारी मैम है Nice session, Ajay sir. थैंक यू मैम I have one question. You said that this is just really something, someone, many of these are open source tools and all that. But when we use it and when we install from our data or when we try to utilize it, but that are not installed, not even utilized properly. कोई स्पेसिफिक टूल के बारे में पूछे क्या चैट जीपीटी फ्री नहीं है पहली बात Yeah, you said that the pro version. प्रो वर्जन में देखिए क्या होता है कि इसमें लिमिटेशंस है अभी चैट जीपीटी ने अपना 4 फ्री किया नहीं कुछ इंटरेक्शन के लिए लेकिन मैंने देखा है कि मैंने आपको बताया था ना एक छोटा सा आउटपुट लेने में कम से कम 10 से 15 इटरेशन करते हैं और वो आपका रूटीन में खत्म कर देता है तो मेरे हिसाब से वो फ्री नहीं है मैम आप उसको यूज कर सकते हो अगर आपको जैसे कोई अगर बहुत ही हार्डकोर रिसर्चर जिसको करना ही है महीने का ले लो 2500 का सब्सक्रिप्शन है लेकिन मानिए मेरी बात इतना पावरफुल है कितना बड़ा डेटा को अच्छे से सिर्फ चैट जीपीटी की बात करें बाकी मैंने जो टूल बताया अगर आईटी खोल दोगे बाकी सारे टूल आपको फ्री में मिल जाएंगे मतलब डेटा विजुअलाइजेशन हम फोकस मत करिए डेटा विजुअलाइजेशन के बहुत ऐसे ऑप्शन हैं आप जब तक इनके अपने रिजल्ट को लेकर आओगे तब तक आपको खुद को पता चल जाएगा कि डेटा विजुअलाइजेशन यार ये एक्सेल भी बहुत अच्छा बना के दे रहे हैं सॉरी एक्सेल पावर पॉइंट भी बना के दे रहे हैं अच्छा एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा मैं मैम ने जो क्वेश्चन पूछा सर का भी था ये क्या मुझे अभी डिसाइड ये करना है कि मैं टैबुला यूज कर लूँ पैसे देंगे या फिर कुछ और विजुअलाइजेशन मेरे हिसाब से विजुअलाइजेशन के लिए पेशेंस रखिए आपको इसकी जरूरत विजुअलाइजेशन की शायद पेपर में पड़ जाए पहले या बाद में ऐसी काफी चीजें हैं अगर आपका डेटा बहुत अच्छा है ना तो आपका एक्सेल भी आपको फ्री में और बहुत अच्छे क्या बोलते हैं आपको विजुअलाइज करके दे सकता है सिर्फ क्या है कि आप किस तरीके से डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है और कई बार आपने देखा होगा शायद आपका ऑफिस वगैरह में
आपको ये पावर दिया और इसके लिए एक स्ट्रैटेजी मैंने बताया था। आप कर रहे हो रिसर्च, लेकिन हाँ वो पेड है उसके चैट जीपीटी फ्री तो है, लेकिन वो शायद यूज नहीं होगी। There are several basic limitations when we excel some data, when we interact with our topic or our research area, then I think that it is not applicable that much level. आपको नहीं मिला तो मैम मेरे हिसाब से system में पहले मैं आपको बता दूं, एक बार आप ये जो हर्डल पार कर लिए ना प्रो और फ्री वाला, इसके बाद आता है प्रॉम्प्ट। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ जो उसके प्रीवियस वर्जन से चैट, क्योंकि चैट जीपीटी मैंने बहुत पहले देखा है, मैंने काफी उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया, उसके मॉडल को पढ़ा दिया, तो उसके जो मॉडल थे 3.5 और ये काफी मॉडल थे क्या फास्ट हो लेकिन बहुत इनएक्यूरेट थे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ 2 वर्जन में भी आप डेटा के ऊपर, लेकिन मैं अलग बता रहा हूँ, आपने सारे रिजल्ट जनरेट किए गाइस, आपने इनपुट प्रोवाइड किया प्रो वर्जन लेके और फिर बोले कि मुझे इसके इनसाइट दो, तब वो आपको एक्यूरेटली एग्जैक्ट देगा। लेकिन इसमें भी जब वो पढ़ता है ना तो क्या करता है, हर कीवर्ड को एक टोकन बनाता है और वो मल्टीपल, एक्चुअली टेक्निकल लैंग्वेज हो, वो क्या करता है मल्टीपल सोर्सेस से डेटा को पुल आउट करता है और फिर बाद में एनालाइज करके देता है। तो इसके लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक फंडामेंटल पूरा होना चाहिए। मतलब प्रॉम्प्ट लिखना कैसे है, तो एक्चुअल बनाना क्या ओके कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं भेज दिया उसे समझ, उसको ट्रेन करना होगा। एक और फीचर है बहुत इंटरेस्टिंग अभी, जो मेमोरी अपडेट करता है, स्टोर करता है। मतलब मैंने जितना अभी तक बोला उससे आज बोल रहा हूँ, आज से 10 दिन बाद बोलूंगा, वो सारा मेमोरी में स्टोर रखेगा, अगले दिन पूछूंगा फिर बताएगा मुझे। ये उसकी कैपेबिलिटी है एक्चुअली। सॉरी, एक्चुअली ये क्या है ना, एक मशीन लैंग्वेज है, ये खुद का दिमाग नहीं लगाएगा जब तक हमसे प्रॉम्प्ट क्लियर भी नहीं है। मेरे हिसाब से प्रॉम्प्ट पे है मैम। और दूसरी बात, प्रो वर्जन तो रहेगा अगर आपको और एक्सप्लोर करना है, लेकिन आप जेमिनाई या फिर और कैसे प्लेटफॉर्म में ट्राई करिए। एक और है, किसी ने शायद नाम ना सुना हो, परफेक्सिटी, ये बहुत पॉपुलर है, कल्चर में काफी पॉपुलर है। मैं शो कर सकता हूँ? शायद सभी को शो कर दूंगा, प्रो वर्जन है। ये कोलैबोरेशन में प्रो वर्जन है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप समझ पाओ, मैं आपको कुछ मॉडल का बताऊँ। पहली बात फोकस देखिए, एकेडमिक रिसर्च ये है, मैथ, सोशल, वीडियो, रीजनिंग और कुछ मिले। अगर मैं आपको मॉडल दिखा पाऊँ तो मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ ये देखिए आप, अगर आप ये एआई मॉडल देखोगे तो यहाँ पे जो हमने देखा चैट जीपीटी 4.0 तो अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये है सुना जो कि 31.7 टेराबाइट डेटा चलता है, यहाँ पे 31.5। ये जो मॉडल थी काफी लेटेस्ट और काफी रिसर्च ओरिएंटेड है। मैं ये बता रहा कि ये फ्री है, पेड है, इसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन आप ले सकते हो। प्रो वर्जन आप लोगे तो आपको मिल जाएगा। खुद का प्रो वर्जन यूज करना जरूरी है क्योंकि रिसर्च कर रहे हो। अगर आप कहीं से किसी से ऐसे बाय कर रहे हो तो गड़बड़े आप अपना करिए, बिकॉज डेटा अगर लीक हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी।
तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपके कई अलग मॉडल है और यहाँ पे अलग अलग चीजों के डायग्राम और चीजें बना सकते हैं। तो यहाँ पे कई चीजों की इंसाइट, अब जैसे मुझे भी कुछ पूछना था यार, अगर मेरा ऑडियंस ये है तो मैंने क्या बताऊँ। अच्छा कुछ बोल रहे थे। अच्छा ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार जब हम लोग कुछ बताते भी हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑडियंस क्या सोच सकती है। अगर मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी बोलता, अगर मैं क्वालिटेटिव क्वांटिटी और मिक्स पे चले जाता तो शायद मैं प्रोफेसर हर जाए तक कम नहीं कर पाता। तो मैंने तो उससे पूछा कि अगर मेरा ये आइडिया है तो मुझे कौन से टॉपिक को कंसिडर करने चाहिए, फिर इसके बाद आप अपने इंडस्ट्री। एक सिंपल सी बात ये है कि अगर रिसर्च की बात की जाएगी तो रिसर्च कभी भी एक वन लाइन जो अंडरलाइन बोलूंगा कि सिर्फ एआई से नहीं हो सकता। और प्लीज करिए भी मत, एथिक्स तो बहुत दूर दूर तक कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ रिसर्च आपके लिए क्या कर सकता है, आपको एक एड ऑन सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, आपको एक ऐसा थॉट प्रोसेस दे सकता है कि आप अपनी चीजों को और अच्छे से समझ पाए। जैसे मैंने एक डेटा दिया और मैंने पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, उसने एनालिसिस दिया, फिर आपने बोला कि मेरा पर्सपेक्टिव ये है, मेरे ये ऑब्जेक्टिव थे और मैं ऐसा देख रहा हूँ, तो आपको और बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो एट द एंड अगर मैं बताना चाहूँ तो प्रो और फ्री में मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, किसी को अच्छा लगे तो बुरा लगे, लेकिन टूल्स का यूज करके आप एटलीस्ट ये समझ जरूर पाओगे कि जो हमारा डायरेक्शन है या हम सही पे जा पाए या नहीं जा पाए। ओके थैंक यू, गुड क्वेश्चन मैम। Someone is asking some question online. अच्छा ऑनलाइन क्वेश्चन, ये सब जो कि क्वेश्चन मिलता है। हेलो, अच्छा टूल यूज फॉर फोटोग्राफ, हाँ इसका यूज आप कहाँ करना चाहेंगे दीपा मैम ये बताइएगा। अगर स्टोर करना है फोटोग्राफ, आप डेटा सेट बनाना चाहते हो जैसे आपको कैटल में मिलता है किसी चीज में, सही है। नहीं तो आप नॉर्मली इसको स्टोर कर सकते हो, फिर उसको डेटा में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको फिर कई सारे पैरामीटर लिखने होंगे, फीचर्स उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है। फोटोग्राफ स्टोर करना मैं इसका मतलब अच्छे से नहीं समझ पाया। टूल्स अगर आपको चाहिए तो आप देखिए, डेटा सेट बनाने के लिए और उसको स्टोर करने के तरीके हैं। लोग क्लाउड पे भी स्टोर करते हैं और डेटा को वैल्यू को पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कैटल से किसी ने डेटा डाउनलोड किया है क्या, डाउनलोड किया होगा तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखा है, उसको पूरा क्या किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है और उसको एनहांस करके फिर स्टोर किया जाता है। लेकिन ये सब करने के लिए भी हमें इसको मॉडलिंग करनी होगी, यानी कि एक मॉडल लिखना होगा और फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो एक होता है आपका प्री प्रोसेसिंग होती है, ये टेक्निक है जिसमें क्या होता है डेटा क्लीनिंग के बाद जैसे कोई भी अगर उसमें अनवांटेड डेटा है जो यूज में नहीं है जो नहीं चाहिए वो निकलेंगे अपने पैरामीटर के हिसाब से और फाइनली स्टोर होगा। तो स्टोरेज का ऐसा कोई मेथड नहीं है, आप उसको डेटा को लीजिए फोल्डर में स्टोर करिए और सेव करिए बस। और मुझे ऑनलाइन आपको करना है तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा फ्री में आप गूगल ड्राइव यूज करिए, 15 GB तक का है, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव यूज करिए, या फिर आप क्लाउड सर्विस में कुछ भी देख लीजिए कोई यूज कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट है आप अपना डेटा सेट बनाइए कैटल में स्टोर कर दीजिए अपने नाम से। जैसे मान लो मैं अगर हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं रोज इमेज एक्सरे स्कैन करता हूँ और मुझे लगता है कि यार एक सिमिलर पैटर्न की इमेज बार बार आ रहे हैं, मैं कुछ रिसर्च भी कर रहा हूँ एक इमेज कैसे चलते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मैं जितने भी आएंगे उनको स्टोर करते जाऊंगा और कोई एग्जिट फाइल बना के अपलोड करूंगा कैटल में, लोग मिलेंगे और उसको यूज करेंगे। तो शायद ये हो सकता है आंसर, या बेटा आप पूछ लीजिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, माय सेल्फ राजेश्वरी धालीवाल। सर मैं आर्ट से बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो आर्ट वाला है, ह्यूमैनिटीज वाला है। तो सर मुझे ये पूछना था कि अगर हम लोग को जो पेपर है रिसर्च पेपर, आप बोल रहे हो कि ऐसा कुछ है तो उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा ना जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश कर सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चर क्या है, मतलब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अगर आप बताते हो तो हम लोग के लिए वो ज्यादा इजी रहेगा। बहुत अच्छा लगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये स्पेसिफिक आप पब्लिकेशन की बात कर रहे हो बेटा, तो सबसे पहले तो कैटेगरी डिवाइडेड है। अगर आपने यूजीसी अगर पुणे वाले में साइट पर भी गए होंगे, पुणे जो हमारा रिसर्च है कैटेगरी डिवाइडेड है साइंस एंड सोशल साइंसेज में। इसके बाद अगर आप जाओगे तो हर जगह जर्नल की साइट पे जाना,
मैं पहले फिर से बोल रहा हूँ, कई बार लोग नीचे अलग अलग सोर्सेस पे जाते हैं, और एक सबसे बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन आज के डेट में, जितने भी ये शोध गंदा और अलग अलग नाम है ना, इसमें इतना ज्यादा ये हो गया आज के डेट में कि हर दूसरा टीचर एक स्कैम करने को बैठा हुआ है पेपर छापने में। मेरा आई एम वेरी सॉरी टू से, शायद किसी ने किया होगा, अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले अगर आपको ये फाइंड करना है कि मुझे पेपर कहाँ पब्लिश करना है, तो उसके पहले आपके पास दो ऑप्शन है बहुत बेस्ट। अगर आपको पता होगा, एल्सवेयर की साइट है जहाँ पे आप नीचे अपने एब्स्ट्रैक्ट को डाल के आप क्या देख सकते हो कि कौन से रिलेवेंट जर्नल हैं। उसका नाम मेरे को लिंक याद दिया तो याद दिलाएगा, जहाँ पे हम लोग जर्नल फाइंडर, ठीक है, जर्नल फाइंडर पे जाओ। सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट या कीवर्ड डालो या अपना इंट्रोडक्शन ये डालो, वो डेटा स्टोर नहीं करता है, वो सब सर्च करेगा। तो रिलेवेंस पता होना चाहिए। रिलेवेंस का मतलब क्या है ये समझो। अगर आप देखते हो कि कोई अगर जर्नल बता रहा है कि ये आपके कंटेंट से या कीवर्ड से मैच कर रहा है, तो वो परसेंट बताएगा। जब वो परसेंट बताएगा, तो जो भी हाईएस्ट परसेंटेज है, अब इसमें आपकी चॉइस है। अब उसमें एक्सेप्टेंस रेट लिखा होगा, उसमें रिजेक्शन रेट पता चल जाएगा आपको, उसमें क्वालिटी और पब्लिकेशन टाइम लिखा होगा, और सबसे बड़ी बात लिखी होगी पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। दो मॉडल चलते हैं पब्लिकेशन के, एक होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, जहाँ लिख के है वहां पे जितना डालो तो वहाँ पैसे मिलेंगे, और एक होता है गोल्ड एक्सेस या ओपन एक्सेस। तो मोस्ट ऑफ द जर्नल गोल्ड एक्सेस ओपन एक्सेस में पैसे लेते हैं, जिसको सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे मांगते हैं ओपन एक्सेस करने के लिए। ये एक तरीका उनका मॉडल है, बिजनेस मॉडल। वी विल लीव दैट बिकॉज वी आर प्योर एक्सप्लोरेशन। सब्सक्रिप्शन बेस को टिक करके जैसे ही आप टॉपिक डालोगे, उसके बाद आपको वहां पे मिल जाएगा रिलेवेंस। आपको लगता है कि मुझे थोड़ा जल्दी डिसीजन चाहिए, 1-2 महीने मुझे जरूरत है, तो आप उसको देखिए, ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको होम पेज मिलेगा। होम पेज के ऑथर इंस्ट्रक्शन में सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। मैं पहले ही बता दूं कि कई बार ना वो ये बोलते कि आप वर्ड में लिखो, ना वो लेटेक्स बोलते हैं, या तो वो फॉर्मेट देंगे या तो वो सिर्फ टेक्स्ट देंगे कि स्ट्रक्चर क्या होगा। टाइटल, इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, देन इंट्रोडक्शन, देन सब टॉपिक्स, देन उसके बाद आपका जो भी रहेगा एक्सपेरिमेंटल वर्क या रिसर्च मेथोडोलॉजी। कंक्लूजन के बाद बोलेंगे एक्नॉलेजमेंट, फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है रिसर्च फंडिंग, इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। ये 4-5 एक्स्ट्रा कॉलम आते हैं, जो वो इसलिए आते हैं बिकॉज ये काफी जरूरी है कि आपको फंडिंग मिली है, क्या आपने कुछ एडिशनल डेटा सोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, एक्नॉलेजमेंट करना चाहते हो, कंट्रीब्यूशन डालना चाहते हो, ये डालने के बाद रेफरेंस। तो मोस्टली लगभग हर जगह यही फॉर्मेट होता है, थोड़ा 19-20 होगा, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रक्चर की बात है। इससे भी बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो आपका जो एरिया है, क्या उनके पेपर के ऑब्जेक्टिव और पेपर का एम को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब क्या होगा, पेपर तो मैंने लिखा, जर्नल तो मुझे फाइंड करके दे दिया, लेकिन जो स्पेसिफिक पार्ट है, क्या आपको उसके एम ऑब्जेक्टिव में कहीं पे लिखा हुआ मिल रहा है, या कहीं पे उसका कोरिलेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जरूर देखो। अगर वो लगता है कि बहुत ही एब्सोल्यूट नहीं मैच हो रहा, तो बेटा उस जर्नल को स्किप कर दो। लेकिन अगर वो मिल गया और आपको लगता है कि मेरा पेपर इस क्वालिटी लेवल का है, तो आप उसमें जरूर सोच सकते हो डालने का। लेकिन उससे पहले एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब इम्पोर्टेंट क्या होती है, जो भी लेटेस्ट अभी पब्लिश हुए पेपर उनके जर्नल पे, आप उनके पेपर के 3 या 4 पेपर जरूर पढ़ते हो। देखो कि वो लोग कैसे लिखे हैं, कंपेयर करके देखो कि क्या उन्होंने जो लिखा है हमारा कैसा है रिजल्ट, और फिर उसे पब्लिश करने के बाद इसके बाद आज और एक चीज चल रहा है सबसे ज्यादा मैटर, कि आपका पेपर का वेटेज कैसे होगा। मैं एज ए रिसर्च स्कॉलर हूँ, क्योंकि ये बहुत चलता है, ये एक ग्रे साइड है, गंदा साइड है थोड़ा सा, जहाँ पे कोलैबोरेशन की बात की जाती है। अगर मान लो सही में किसी ने आपके साथ अच्छा कोलैबोरेशन किया है, तो आप अगर चाहते हो तो उसे इंक्लूड करो, और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लो, 3 पेपर आपके साथ, 3 पेपर इनके साथ। तो इससे क्या होगा कि आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाएगा और वो आपके कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर आपका पेपर सही में अच्छी क्वालिटी का है, अनबायस्ड तरीके से, बहुत जर्नल थे इसमें आज भी लोग बोलते बहुत होंगे, लेकिन पेपर पब्लिश होते हैं विदाउट चार्जेस भी पब्लिश होते हैं, और इतने अच्छे जर्नल होते हैं कि लोगों के लगभग आपको मैं मेल दिखा दूंगा, वो लोग बुलाते हैं आपको कि आपका पेपर अच्छा है, आप हमें इसके वीडियो या कुछ बना के तो हम इसे कहीं प्रेजेंट करें अवार्ड देने की। तो ये तरीका है, ये अपनाओ।
इसके अलावा और किसी भी रॉकेट साइंस में मत जाना, ऐसे काफी चीजें सर सबने बोली हुई है। ये तरीके से क्या होगा कि आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा जर्नल कौन से है, और एक नहीं आपको कई मिल जाएंगे। मैंने तो आपको एसबीआई के बारे में बताया कि फ्रीजर जो पूरा नेटवर्क चलाता है, दूसरा है आपका जो क्लैरिटी चलाता है डेवलप साइंसेस, उसके पास भी जर्नल फाइंडर है, उसका भी सेम प्रोसेस है, तो वो भी अपनी सारे दे देगा। इसके बाद इंडियन साइंस का बहुत बड़ा ग्रुप है, वो भी कर देगा। तो ऐसे काफी सेक्शन है जो आज भी अच्छे पेपर्स को हमेशा प्रोवाइड करते हैं और पब्लिश करते हैं। थैंक यू। तो ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन आर ओवर। थैंक यू वेरी मच। और देखिए सेशन में जब तक क्वेश्चन ना पूछा है ना तो अजीब सा लगता है। आई एम वेरी हैप्पी आपके क्वेश्चन है, और भी काफी हो सकते हैं। और एक बात है इम्पोर्टेंट कि कोई भी एक आदमी आपको हर चीज नहीं बता सकते, एक्सपीरियंस होता है। रिसर्च इज समथिंग, लोग बोलते हैं ना रिसर्चर डॉक्टरेट बन जाए, तो कैसे एक्सपीरियंस नई चीजें सीखते हैं। शायद मेरे कुछ एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किए, आप जब रिसर्च कर लोगे, जब आप प्रोवाइड करके आपका एक्सपीरियंस चलेगा। रिसर्च इज नथिंग बट एन एक्सपीरियंस, जहाँ पे आपको हाईएस्ट डिग्री अवार्ड की जाती है। तो ये आप देखिए और अपने क्या बोलते हैं उसके डिसीजन लीजिए। थैंक यू। Thank you, Dr. Ajay Gupta sir, for leading us today. Also, thank you all for your engaging questions. Now, I would like to request Dr. Aslam Surya sir for his insights on the topic. Really, it was a very fantastic, informative, and innovative session. Sir has explained the things from ground of research to the top of the research. He has opened doors of new technology by simple methods of explanation. Sir has given the example of feedback of conference. I think you remember. Let me share or tell you one more example. और टाइम दूंगा 5 मिनट, ज्यादा नहीं। जैसे कि आजकल हम लोग सभी लोग इंस्टा पर रील्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ऐप भी देखते हैं। तो अगर आप लोग इंस्टा पर कोई स्पेसिफिक रील देखते हो कुछ 2-3 बार, तो जब भी आप लोग अगली बार विजिट करते हो तो वही रील्स आपको बार बार दिखाई जाती है। सेम फॉर यूट्यूब, अगर आप लोग कुछ सर्च करते हो तो अगली बार जब आप लोग दोबारा जाते हो यूट्यूब के ऊपर तो आपको उसी से रिलेटेड वीडियोस ही दिखाई देंगे। सेम ऐप पे वही चलता है। अगर आप लोग अमेजोन पे कुछ चीजें सर्च करते हैं, फ्लिपकार्ट पर कुछ सर्च करते हैं, मीशो पर सर्च करते हैं, तो वही चीजें उसी से रिलेटेड चीजें आपको फेसबुक मार्केट प्लेसेस पर या एड के रूप में दिखाई जाती है। दिस इज द डाटा कैप्चरिंग जो कंपनीज करती है, जिससे वो कस्टमर्स क्रिएट करती है। And back to, he has explained so many tools for doing the research in a best way. One more thing, now the student asked about the journal. जो जर्नल में क्या होता है कि यूनिक पूरे की जो वेबसाइट है उसमें यूजीसी केयर के 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। Group 2 contains the Scopus and the Web of Science and other journals, where the Group 1 is the viewers, UGC care journals. तो उसमें भी क्लोनिंग चलती है। 2 टाइप की क्लोनिंग मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है, मेरे रिसर्च स्कॉलर्स ने भी एक्सपीरियंस की है। क्या होता है पहली क्लोनिंग में, क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर जर्नल का नाम ABCD है तो दूसरा जो क्लोन जर्नल है, जो डुप्लीकेट जर्नल है, वो क्या करेगा, उसकी वेबसाइट में एक आधा कैरेक्टर ऐड कर देगा या एक आधा कैरेक्टर निकाल देगा। स्ट्रक्चर वैसा ही दिखाई देगा आपको जो प्योर जर्नल का है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हाँ भाई इसका लुक तो ऐसे दिख रहा है, सेम इसमें अबाउट है, सेम इसमें होम है,
कॉन्टेक्ट अस है, ऑथर्स है, तो हम लोग उसमें बिलीव कर लेते हैं उस क्लोन जर्नल के ऊपर, ठीक है, एक्चुअली दैट इज द डुप्लीकेट जर्नल। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका भी नया चल रहा है। हैकर्स जो उधर में देखा कि भैया जो ऑथर्स है, जो रिसर्च स्कॉलर्स है, वो ज्यादा स्मार्ट हो गए, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है। वो लोग क्या करते हैं, हम लोग जब स्कोपस पे जाते हैं या यूजिंग केयर के इस पे जाते हैं, सर्च करते हैं अबाउट द जर्नल नेम। वन सेकेंड, एबीसीडी जर्नल, हमने scopus.com पे सर्च किया, जर्नल का नाम दिखा हमें abc.com, नीचे में उसकी होम पेज दिखा होता है स्कोपस की वेबसाइट के ऊपर। हम लोग जब उस पर क्लिक करते हैं तो हैकर क्या करते हैं, हमें डाइवर्ट करते हैं वो खुद के जर्नल के ऊपर। तो हमें लग रहा है कि हम लोग ओरिजिनल पे जा रहे हैं, लेकिन हैकर हमें लेके जा रहे हैं खुद के जर्नल पे, डुप्लीकेट जर्नल पे, क्लोन जर्नल पे। तो ये दूसरा तरीका है। तो जब भी हम लोग पब्लिश करते हैं तो ये आपको प्रिकॉशन लेना है कि जो क्लोन जर्नल की लिस्ट यूजीसी केयर की वेबसाइट पर ऑलरेडी दी हुई होती है, पहले उससे चेक करो कि कहीं ये जर्नल क्लोन में तो नहीं है। ओके, एंड लास्ट वन पॉइंट, शायद टाइम में ज्यादा ले रहा हूँ इनसाइट के ऊपर ही। अगर आप लोग कोई टूल इस्तेमाल करते हैं, एआई टूल को इस्तेमाल करते हैं, चाहे जो चैट जीपीटी हो, चाहे जेमिनी हो, चाहे कोई भी टूल हो, तो उसी एक ही टूल को इस्तेमाल करो पैराफ्रेजिंग के लिए। क्योंकि क्या होता है, आप लोग चैट जीपीटी कोई पैराफ्रेजिंग डालते हो, सेंटेंस कोई पैराग्राफ डालते हो, तो उसका रिजल्ट चैट जीपीटी में अलग आता है, जेमिनी में अलग आता है, दूसरा कोई और टूल है पैराफ्रेजिंग क्विल बोर्ड है, तो उसमें उसका रिजल्ट अलग आता है। फ्रॉम द बिगिनिंग किसी एक टूल के साथ भी आप लोग चलोगे तो आपका रिजल्ट कंसिस्टेंटली चलेगा। अगर मूव करते हो तो प्रॉब्लम होता है। okay? सर ने ही इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, और सर के सेशन के ऊपर इंसाइट करना मतलब that's why thanks to the Dr. Ajay Kishore sir to inciting to fulfilling all the details about the research, about the innovative research, and he explained all the things about the beginning of the research and the tools to complete the research. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir, for your valuable insights. We will now break for your lunch. Please enjoy your meal and we will be continuing for the next session. हाँ, ये चलता रहेगा क्या? टाइम बता दो फिल्माने का टाइम। लाइट नहीं, लाइट नहीं, Actually, the lunch time was 12 to 1. Okay, but we can gather here after 1:30, right? So, thank 1:15, no? So 1:15. Okay, but probably come here at 1:15. एक बंदा कोशिश कीजिए क्योंकि ऑनलाइन पार्टिसिपेंट भी है, सेशन शुरू करना है। थैंक यू। चलेंगे? हाँ बेटा, चलना पड़ता तुमको, हाथ बिल्कुल डेलीगेट से मैंने नहीं लिखा, मैं सिर्फ ये लिखा। स्टार्ट 1:15 1:20 का 1:15 मतलब सवा ना?
प्रैक्टिकल पढ़ा तो सबको पूछा ये अभी प्रैक्टिकल क्या कर भी क्लास में थे वही भी प्रैक्टिकल नहीं चलो 5 मिनट का मैडम आप मुझे बता देना कैसे बता मैडम अरे ये क्या है हेलो हुआ क्या तुम्हारा फॉर्म भरे सर this certificates are अपना कचेरी पंचायत समिति प्राइवेट में काम ये भी ऐसे हाई करा है रेट वाली हाई प्रिंसिपल साहब डेलीगेट को लेके जा रहे हैं तुम नहीं मैं डेलीगेट को बोलेंगे ना लेके जाना चलो चलो खाना खा रहे पेशेंट मेरा में पकड़ मिलेगा आप खेल कूपन है खाना खाइए बोला चले
वो सरप्राइज हो गया, मैं भी, मेरा भी ऐसा एकदम से मेरा भी छोटा है, मेरा डेली आना तुम्हें दे दिया नहीं, मतलब क्या नहीं, दिया है कि तुमने कुछ बनाया इंटीग्रिटी तू ऐसे भी एक्सपर्ट आदमी सॉफ्टवेयर में फिर वो एक है और दूसरा एक बार गुरु है, बताओ अभी तो बहुत चांगले मिल रहा है, ठीक है आता ठीक है। एग्जाम मॉडल पे काम चल रहा है, बहुत मुश्किल, इतनी जल्दी नहीं होगा क्योंकि पता है उसमें बहुत बेसिक लेवल के चैलेंजेस हैं। सभी को है, एबीसी सभी को कंपल्सरी है। एबीसी का सबसे बड़ा क्या है, क्या करता है क्योंकि अब बच्चे इनके साथ करेंगे। चलिए वो भी ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो मुझे पेरेंट्स और कितने दिन में कर सकते हैं सोल्यूशन बोल गलत मत समझो। पंद्रह गाँव कर रहे हैं, छोड़ बच्चे को गाँव होना ये भी कनेक्टिविटी अच्छा अगर सब लोग बात नहीं ना पैसे नहीं देना, पांच गाँव और बच्चा गाँव में जाके पता चल जाता है अगले दो पुलिस स्टेशन वाले को बोल दे दें कि भाई ये काम सब हो जाता है। ऐसा मेरे को लगता है ट्राई करना चाहिए कोई भी भी जाएंगे 120 अब पूरा ग्राउंड सपोर्ट चाहिए आपको, सर्वे करने का पूरा क्रॉस चेक करेंगे तो 20 रुपए हमको दे दो, ऐसा भी बोल सकते हैं तो पूरा ही आप करो कि आपको काम आना चाहिए, आप कंप्लीट होना चाहिए बराबर। किसी को किसी को क्रॉस नहीं मैं भी करूँ राजगढ़ थामूंगा सर क्या पूछो ही मत, अभी मेरे को बता बता इस बंदे को कम भेजेंगे पैसे मैंने नहीं खाएंगे तो आप नहीं खाएंगे तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन सोल्यूशन अपने को निकालना पड़ेगा, कौन निकाल के देगा मेरे को बताओ। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ ठीक है
एजुकेशन के अंदर कम से कम 10-15 गाँव है उनके, और उनका टच है ना सर, हमेशा 15 गाँव में जाते हैं। और ये पुलिस वाला उसके पीछे डंडा लगा था ना, उसको 10,000 पेमेंट कब देना बताओ। उसने इतना इतना काम किया तो उसको 10,000 पेमेंट देना, इसका मतलब क्या है? अभी गाँव में आपका पुलिस वाले भी पहचानता है, सरपंच भी पहचानता है, लोग भी पहचानते हैं। तो मुझे ना, और देखा देखा इतना कठिन नहीं है लेने में। मैक्सिमम उसमें से आप नाम अगर नाम के बाद फिर डेटा आता है 5 लोग, 5 लोग ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, नहीं वो मेरे पे छोड़ो। तो मंडे से मैं खुद से काम कर रहा हूँ। इस तारीख तक हम लोगों ने देख रहे हैं 30 तारीख का काम को अपडेट आया। अगर इस तारीख को हम जॉब का नहीं आया तो वो दूसरे दिन को पहले 3 दिन के बाद ये जिम्मेदारी लेके तो गाँव के पूरा गाँव एक दिन पहला मैं पूरा ट्रेन पूरा 100% के साथ जाके पूरा एक एक करके लगाऊंगा। हाँ 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 हाँ, वो भी बहुत सही है, 100% आइडिया। अपना एक्सपीरियंस सबसे सुविधा तो देते हैं सब जगह, सुविधा देते हैं। प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके हिसाब से आएंगे, तो सबसे मेन चीज अपना सर्वे, बाकी सारी चीजें बाद में आएंगे। हाँ, इनको देखो, नए लोगों को तो अपन पहले करेंगे वो पहले मीटिंग लेंगे। हाँ, पहले मीटिंग लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बोलो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, नहीं उनको देंगे सर, उनको पूरा पूरा ट्रेनिंग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उस लड़की को करेंगे। हाँ, ठीक है। और सबको एक्सप्लेन करवा डेटा भरने के लिए, डेटा भरने के लिए ना, उसके बाद जैसे और ये अपना खुदरा टीम का डेटा जब डालेगा तो वो सर को मैंने वो भी पूछा कि सर मैंने आज सर्वे किया, फिर डेटा आपको दिया, तो सर ने पूरा बताया। और जब उनके पास के डेटा आएगा तो सर को क्या नहीं करूंगा, आपके पास भी पता चलेगा कि सारा डेटा है कि नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो आपने जिस गाँव का सर्वे किया वो मेरे को बताना, तो उसका एक बार चेक कर लूंगा सही से डेटा आया है। ठीक है, काम ही कर, अगर फोटोग्राफी का प्रॉपर, ठीक है। तो लेकिन आप पहले एसपी ऑफिस में जाओ और ये वाला करो, ये करेंगे तो एकदम इजी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मेरा
जिल्हा परिषद सांभाळा ना कॉम्प्लेक्सला
करायचं का तुम्ही? हो. Oh, yes. नाही भरपूर आहे. आता असेल ते त्याच्या काउंटरचे निघले. तुम्ही रजनी मॅडमची बाहेर काढला हो. आणि मग त्याच्यानंतर फोकस त्यांचे सर ते दिसत नाहीये ते त्या सरांना बोलून पण आदिल सर येतील तेव्हा काउंट ठेवायचे. मग संतोष तर मी सगळी काम केले. ज्वाइन कर लो सर, आगे के देख रहे जेएनएस रखे करूँ सबको अप्लाई एडमिट कर इनको एडमिट और जेएनएस रखे क्या नाम डालू क्या है क्या नाम है जेएनएस सर है ना? Yes sir, we are starting the session. Yes. Please. Good morning and welcome back everyone. I hope all of you had a refreshing lunch. I am Vaishnavi Halkare, your host for the next session of the day. We are now moving to our second session, which is focused on a crucial topic, plagiarism prevention techniques. This session will be conducted by our distinguished resource person, Mr. Jayanna Velavadi. Before we begin the session, I would like to invite and introduce our respected chairperson for this session, Dr. Rajni Singh. Dr. Rajni Singh, head of the MCA department at Ballarpur Institute of Technology, has over 15 years of experience in computer science, teaching, and research. He holds a PhD in science and technology, specializing in advanced database management, data privacy, and security. A prolific author of over 10 books and a university topper for 2021 batch.
She received the Charles Babbage Young Woman Best Writer Award in 2015 and the Best Teacher Award from KK Foundation Nagpur 2024. Her expertise includes Java, Big Data, and Hadoop. Dr. Singh is dedicated to curriculum development and fostering innovation in education. I request Dr. Singh to please come on the dais. To felicitate our chairperson, I would like to request Mr. Santosh Shinde sir, principal of Dr. Sachidananda Naik College, Chandrapur, to kindly felicitate Dr. Rajni Singh with a memento and a bouquet. Now, I request Dr. Rajni Singh to introduce our resource person for the session, Mr. Jayana Belavadi. So, using another person's word, ideas, or work, without mentioning him or her in your own work is a type of plagiarism. So, as a student, researcher, or content creator, we should always strive for originality because it greatly affects the legitimacy and the efficiency of our work. So, paraphrasing others' idea without giving them a credit is a one kind of plagiarism. Legal ramification and reputational harm are the two types of the one of the many negative approaches one should use. So, to avoid plagiarism and keep our work intact, we should know what the plagiarism is. So, to make a brief highlight on the plagiarism topic, I invite Mr. Jayana Velavadi sir. He is a founder and CEO of Drillbit Plagiarism Detection Software. Drillbit is a Bangalore-based startup company and serving more than 1,500 plus institutions across 30 countries. He has done his master's from Bangalore University and is having 50 years of industry experience in business development. So from all of our side, I invite him for his session. This session will be an online session. Now I request Mr. Jayanta Belavadi to please dive into our session on plagiarism prevention techniques. Thank you. Am I audible? Am I audible? Yes, yes, sir. Okay, thank you so much. Good afternoon, all of you. I welcome all of you for the national workshop, and I thank university and college for organizing this national webinar and giving us opportunity to showcase Drillbit software. Myself, I am Jayanna Belwadi from Drillbit Softech India Private Limited. This is Bangalore-based startup company and working with more than 1,500 institutions across 13 countries. One of the preferred plagiarism software in India. It's a AI-based plagiarism software, and we are in this industry from last 7 years, and we are dedicatedly working on plagiarism detection software. And our intention is to provide quality software at affordable cost to the Excuse institution. me, sir. Sorry to interrupting you. Yes, sir. But for a minute, there is a sound problem. So we are working on that. Just for a minute. Yeah. Sorry for the inconvenience. It's okay.
Sir, speak something like hello. Hello, hello, hello. Is it audible? Just a minute. Yes, sir, it is audible at my end. Online, it is audible. We are conducting the offline session, and there is a sound box connectivity, and we are trying to loud your voice here also. Okay. Sir, am I audible? Yeah. So at our end, it is loud as well as clear. So in online mode, I don't think there is any problem with sound and clarity of voice. Sir, say something like hello. Hello, hello. Is it audible now? Just a minute, sir. Just a minute. Yes, sir. Yes, sir. Hello. 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 Yes, hello, hello. Is it okay now? Just a minute, sir. Hello. बोला म्हणून सर. Hello. Hello, hello. Is it okay now? Is it okay now? So checking. It's audible issue. येते का आवाज सरदा? हे लाव ना हा केबल चालू होतं ना आता रे. हायर टीवी क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? बदल इसको. ये हायर टीवी दिखा रहा हूँ. कौन सा? नहीं वो नहीं उसका नहीं होना माइक्रोफोन नीचे है. स्पीकर है ना बरोबर है. स्पीकर चाहिए ना. स्पीकर सेटअप कहाँ से आता? आवाज नहीं देना. Yes, sir. Hello. Hello. सर चला गया. सर चला गया. फिर साउंड चेंज कैसे हुआ उसका? अरे अपन नीचे गए थे. अपन नीचे गए थे. कॉल कर दो. Hello, sir. Hello, can you hear me? Yes, your voice is audible on laptop. Ox मध्ये लाव बरं लवकर. Okay. आता मम्मी बस only 1-2 minutes sir बस. Okay, no problem, no problem. Thing is there which is not. ये हायर बोल के आवाज कहाँ से जा रहा था इसमें? हाँ? ये हायर टीवी क्या है?
अलग सिग्नल चेक कर अलग है हाँ? चालू है त्यांचा आवाज यहाँ ये चेंज किया था किसने ये वाला पण इधर आएच क्यों रुको ना, रुको, ये किसने चेंज किया था हाँ काय बरं सर स्पीक समथिंग Hello, hello. Is it audible now? yes sir you are now it is okay sir Yeah. नहीं ठीक है yes sir you can continue Okay. Let me share my screen. Yes, sir. My screen is visible now. yeah sir Okay. So good afternoon, all of you again. Thank you for joining this one-day national workshop, and I thank college and university for organizing this event and giving us an opportunity to showcase drill bit and to talk about plagiarism prevention and how to avoid plagiarism in the academics. Myself, Jayanna Belwadi from Drillbit Softtech India Private Limited. This is Bangalore-based startup company, and we are working on plagiarism software from last 7 years. And we are working with more than 1,500 institutions across 13 countries. So Drillbit is one of the trusted product recognized by UGC and AICTE, and we are working with most of the UGC and AICTE recognized institutions across India. So let me take you through the few slides about plagiarism and how to avoid plagiarism and what is the importance of plagiarism software and what are the guidelines and how to use the software. And to talk about introduction of plagiarism, I think we are all aware what is plagiarism and why do we need plagiarism. One is the rising plagiarism cases. Recent days, because of the internet, easy to access the content from all over the world, and many institutions providing resources to the students. So easily students can access the resources from all over the world and easily can copy from the published work. And other way around, because of the technologies, we are able to detect plagiarism. It's very easy to detect plagiarism if there is any similar content or copied from the published content. And challenges of manual detection, it is very difficult to compare with thousands of databases and check the students report maybe 300 page 400 page thesis. So because of that, plagiarism software is very important. Easily within 10-20 minutes it can compare with a larger database and generate the plagiarism report. And impact on academic integrity, if you're not using plagiarism, if plagiarism software, and if there are plagiarism in the document after publication, that will impact on your academic integrity. And institutions and publisher guidelines, if you notice the plagiarism policy from the universities or the publishers before accepting any article or ebooks, there are policies. So because of all these reasons, plagiarism software is mandatory in all the academic institutions. There is a UGC guidelines says that plagiarism software implementation is mandatory. There should be a mechanism to detect plagiarism and prevent plagiarism in the academic institutions. And every publisher, not most of the publishers is mentioned on their website that plagiarism report is mandatory along with their research article. So these are the few reasons to have plagiarism software in the academic institutions. And consequences of plagiarism, what will happen if there is a plagiarism? Is it really important to avoid plagiarism or prevent it? Yes. So plagiarism is a serious academic offense as per the UGC guidelines and policies, and academic penalties if there are plagiarism in their students paper, project report, thesis, dissertation. There are penalties. Some of the institutions have implemented penalty mechanism, because as per the UGC guidelines there are penalties. So but some of the universities are not yet implemented, but as per the guidelines there are penalties in case of plagiarism. And damage to reputation, it can damage your reputation anytime in the career or the in the working also, either academic or in the working. It can damage your reputation if there is a plagiarism in your thesis, dissertation, or research articles. And legal consequences, if there is any plagiarism in your document, you might have copied from some other author, they can claim, they can go for legal actions anytime during your lifetime. And this is the one of the example in the screen picture. You can see that the Norway higher education minister has resigned because of there was a plagiarism in her master thesis. So this is the one of the good example to avoid plagiarism or prevent the plagiarism.
And who is responsible to avoid plagiarism? This is a question that everyone should understand. Sometimes students says that it's a responsibility of the institutions or the plagiarism tool to avoid or prevent the plagiarism. So if you notice the website of the publishers, they mention very clearly authors are responsible for plagiarism, not the institutions or not the plagiarism tool. It's not the responsibility of the institutions or the plagiarism tool to avoid or prevent the plagiarism. It's the authors are responsible for the plagiarism. Students or author who tries to copy, they can only tell whether they copied or the is the original content, because plagiarism software may sometime may cover those websites or may not cover, but ultimately author is responsible. Sometimes they may use some tricks, manipulations to avoid plagiarism. So there are many cases that even though there is a copy, software is not able to detect, it doesn't mean that it is not a plagiarism. Please understand, if students are copying but they use some tricks or manipulate to avoid plagiarism, it doesn't mean that there is no plagiarism or there will not be any consequences. So it is a responsibility of author to ensure that they're not copying any content from anywhere, even though software is not detecting, but author should ensure they're not copying it. And institutions is responsibility is to bring awareness, workshops, and helping students to avoid plagiarism or prevent, but their responsibility is bringing awareness, bringing providing tools, but authors or students are ultimately responsible to avoid plagiarism or prevent the plagiarism. And about Drillbit. So Drillbit is a cloud-based plagiarism detection software. It is for the students, researchers, faculties, professors, teachers, librarians, all academicians can use the plagiarism tool. So we have used AI learning technologies. Recently, we heard about AI technologies in the industry and machine learning technology, deep learning. So these are the some of the recent concepts are implemented in plagiarism tool. And Drillbit is the proprietary AI-based plagiarism. It's a purely Indian-made plagiarism software, and it detects the similarities, manipulations, grammar mistakes. Now we have added AI detection report and any text formatting irregularities. So these are the main focus of this plagiarism software. And how to access Drillbit software or any other plagiarism tool? How to access the software? One is the login credentials. It's like a Gmail. Using the user ID and password, you can access the software. We create user ID and password. Using that, you can go to our website, enter the user ID and password, and access the software. Other option is like integration on library platform using APIs. Using APIs, integration on library platform. So you can use our APIs and integrate on the software, so that in the same user ID and password you can access the software. And integration and learning management software. There are learning management software, online classes like Moodle, Google Classroom, Blackboard, Brightspace. There are many learning management software where our Drillbit also can be integrated on it. And success story of Drillbit. How to trust Drillbit? Whether is it a recognized software? How to accept Drillbit to use in the institutions? In the 4 or 5 years back, when we asked institutions to purchase Drillbit, they used to ask, how do we trust Drillbit? How it is recognized, whether it is recognized or not, how it is authenticated, whether institutions can use it or publishers will accept the report. These are the questions asked 4 or 5 years back. So Drillbit is now has been selected for the empanelment with AICT NEET program, and we have signed MOU with the AICT chairman, and all AICT institutions can use Drillbit. It is published on the website of the AICT NEET program. So if you notice this link, this is the link of this website, AICT NEET program. This is a special program from the AICT. They are recognizing the softwares or the academic content or the courses for the higher educational institutions. They are recognizing and they're putting on the website that institutions can use these tools or the learning material or the assessment tools in the higher education. So Drillbit is also one of the product has been selected and updated on their website, so that AICT institutions can use the tool. Is kind of a recognition or a authentication of the tool. And success story, one more success story is the national project Shodh Shuddhi under the UGC and Ministry of Education, Government of India. They have a program called Shodh Shuddhi. It is handled by InflibNet Center, Gandhinagar. It is a part of UGC, New Delhi. So they are handling this national project, and Drillbit has been selected for the 1100 universities in India. Most of the universities in India using Drillbit, all thesis, dissertation reports are accepted by the universities. This is one of the recognition. And now Drillbit has been updated on their portal. If you notice the website, shojshuddhi.com, it is a part of UGC program.
and all universities are getting access to the drill bit to check the thesis, synopsis, and research articles, related articles. So this is the website of the Shoshudhi program. Most of the universities getting access to it. And success, this is one more success story outside India, and we are with the VTU. This is a consortium, like university has subscribed. There is a university, Vishweshwarya Technological University in Karnataka. They have subscribed and giving access to all the colleges. All engineering colleges are using drill bit in Karnataka. There are about 211 colleges using drill bit. And compliances, this is very important. Some of the researchers will ask question, how do we trust drill bit whether our data is secured or not, our research content is secured or not, our personal information, user ID, email is secured or not. So drill bit is an ISO certified company, and we ensure that customer data is protected, customer information is protected in the software. And this is SOC 2 certification. We have taken the certification of SOC 2. This is for the US standards. It is ensures the security, availability, and confidentiality of the customer data. And GDPR, this is for the Europe guidelines, General Data Protection Regulation. It talks about the personal information, personal data of the users, like your email ID, your password, your name. So the information will be secured and encrypted. We store it as in an encrypted format, so that users or any others, employees of our company cannot access, or any of the third party vendors cannot access your data. So your research data is secured in the drill bit. And content coverage, this is very important. So when we talk about plagiarism software, what content do we cover, or how do we compare your data with the databases? For example, if you write a thesis, with what content we compare? One is the internet sources. We compare with the internet sources like websites, web pages, and the published journals, publishers, and books and proceedings, conference process. So this is the content. And student submissions, old theses, old dissertations, we compare. These are the main three content coverage we do it. One is the internet content, published journals, ebooks, and articles, and then conference proceedings, and the students' theses, dissertations of the previous years. So these are the major three types of content we compare it. And what sources are not covered? This is also very important to know, all of you, that unpublished articles or papers are not covered. For example, you have written an article but not yet published, so that is not covered. We cannot compare with that. And in-house repositories and databases. If university is maintaining, or a college is maintaining any repository within the university or within the college, but that is not available for the internet or the others, so in that case, that cannot be covered. On printed books, printed articles, anything in printed form which is not available in the internet, we cannot use it for the plagiarism comparison. So these are the some of the content coverage topics. And in terms of number, what are how many numbers in the content coverage? One is the internet content, publishers, journals, repositories, database. These are the types of content we do. And the publishers, what are the publishers are covered? Because we do scholarly content coverage. I would like to highlight difference between the online plagiarism software and the academic plagiarism software. If you go to Google and search, you may get 10-20 plagiarism software. If you go to Google and search, you may get many plagiarism software listed, but those are online plagiarism software. What is the difference between online plagiarism software and academic plagiarism software? In online plagiarism software, they focus mainly on the internet content. They don't cover the scholarly content from the previous premium publishers or the reputed journals content. They don't cover it. They cover only the internet content and websites. But if you notice the academic plagiarism software like Drillbit and others, academic software which are recognized by the UGC or universities, they cover scholarly content. Scholarly content in the sense publishers content, research article, research paper, conference proceedings, theses, dissertations. Major focus is on the academic and scholarly content in the academic plagiarism software. So this is the and we provide the repository. Especially in the academic plagiarism software, we provide repositories. So where you can store your thesis and dissertations and compare against the new submissions. And every day more than 10,000 articles are getting published worldwide, all the languages, not only in English, many different languages. Every day 10,000 articles are getting published, and our database also has been updated on daily basis. Every day we update our databases. So these are some of the numbers like web pages, thesis and dissertation repositories, publishers, journals, regional language. Drill bit specialties, we support regional languages like
Kannada, Hindi, Tamil, Telugu, Sanskrit, Urdu. So most of the regional languages are supported in Drillbit. And key features, what are the features in using the software? One is the, like we have a different products, folder management and classroom management for checking their assignment, thesis, dissertations, and repository concept. This is very beautifully designed repository concept. What will happen in the repository concept is it's a storage. When we say repository, it is a storage concept. Institution can store the previous year's thesis, dissertations, project work, assignment, and current year documents. You can store it in the repository. So why do we need to store? Because theses are getting published in the, at least shows through the website, but dissertation, project work, assignment, so many academic content is not getting published. It is keeping it in the university. But current year students may copy from senior students. Very easy for current year students to copy from senior students. So how do avoid duplication? If content is not published in the internet, the software cannot detect it. But in the PG and UG students, they try to copy from the senior students. So this repository concept will help university or institutions to store the previous year's data and compare against the current year's submissions. And exclusions as per the institutions and publisher. This is very important. What are the exclusions? And nothing but omitting the content from the plagiarism software. Not every content to be scanned in plagiarism tool. If you submit a 10-page or 20-page document, not every content to be scanned. There are some exclusions as per the guidelines. They're like sources exclusions. If any unrelated source, for example, you're doing a research in the management, some sources will come from agriculture, medical. Those are not related sources. Because of the content, similar content, 1%, less than 1% may match from the unrelated sources. So those sources can be removed. Those are not really plagiarism. And quoted works, if anything you write in the double inverted quotes, that content also can be excluded. You can remove it from the plagiarism check. And references and bibliography, if you write any content under the references and bibliography, you can exclude it. You can remove it from the plagiarism check. And common phrases like university name, college name, address, departments, those also can be excluded. And small sources less than 14 words, small sources also can be excluded as per the guidelines from the plagiarism. You can set the number of words, whether you want to go for 5 words plagiarism or 10 words, 12 words. You can set based on the requirement of the institution. You can decide what number of words can be set. And we support multi-language platform. It is not only for English. We support English, regional languages, and foreign languages, and support all types of file formats like PDF, Excel, Word, PPT. So most of the file formats are supported. And detection of manipulated documents. So if you notice, as I mentioned, some of the PG and UG students, they try to manipulate the document. They use some tricks and they try to avoid plagiarism. So this, there are many cases are there. We noticed in the reports that they use a lot of tricks and avoid plagiarism check. But Drillbit has been integrated with AI, and it will be able to detect if any kind of manipulations are in the document. And then new features. What are new features in Drillbit? Recently, you might have heard, or we all know that AI tools, ChatGPT, Gemini, and other. There are so many AI tools have come up, and generative AI. They will generate the text. If you give any topic, they'll be able to generate the text for you. But as per the guidelines, using the AI tool content also is not allowed. Either publishers or academic institutions. As per the guidelines, it is not allowed to copy from other authors, not allowed to take content from ChatGPT or AI tools or from any consultancies, agencies to purchase thesis and other. It is not allowed. It should be your own work, author's own work as per the academic guidelines. So Drillbit has been integrated now with the AI tool, where it will detect if any content is generated from ChatGPT or Gemini and the content is used in the report. So this is one of the example here in the screenshot. If you any copy and paste any paragraph from the ChatGPT or any AI tool, software will detect. Software will highlight that paragraph and say that there is a AI content in the document. It will differentiate the human text versus the AI text. It gives the report. And the report can be downloaded and shared with your supervisor or guides. And accuracy also, we compared a lot of reports, and the accuracy is more than 95%. And there is option to submit multiple submissions, files for submissions at a time. And it's a proprietary model. It is again Drillbit own AI model. And we have Microsoft Word add-ins. There are 2 more features, Microsoft Word add-ins, where you can submit the document from Microsoft Word. And email submission, plagiarism check via email submissions. You can send your document via email also. It is an automated process. You will get the plagiarism report via
email. So this is a screenshot of those features, and we have added recently grammar check also. Like along with the similarity and AI report, the users will get the grammar report also. That is also free of cost. And this is one more slide. We are in the major customers. As I mentioned, Drillbit is trusted by more than 1,500 institutions across 13 countries. Even though it is a startup company, Bangalore based, but we are working with more than 1,500 institutions across 13 countries. So outside India also, institutions are trusted and using Drillbit. And these are some of the customers logos shows to this Indian national project. We're working with them. And why Drillbit? Why the institution should select? One is we are giving AI report and grammar report at free of cost. Only we are charging for similarity report and larger content coverage. We have done a vast content coverage of theses and dissertations, publishers content and repositories, and it is a trusted product. It is secure, trusted, and authenticated product recognized by UGC and AICTE. And there are unique features. If any kind of tricks or manipulations in the document, Drillbit will be able to detect them, and it is affordable price. This is very important because of the budget constraint in the institutions. The cost of the product is very important. So being Indian company, make in India product, we are able to provide the software at very affordable price. And what are the best practice and conclusion? Is it having a plagiarism tool is a best practices? Not really. Not really. It's a best practice to have plagiarism tool. We should encouraging originality and critical thinking. This is very important. We should encourage for originality and critical thinking, promoting a culture of honesty and integrity. In research, integrity is very important. Honesty is very important. So we should promote honesty and integrity in academics, and emphasize on the importance of plagiarism prevention and adherence to policies. We should go through the policies. What are the UGC or AICTE policies on the plagiarism preventions? So these are some of the best practices to avoid and prevent the plagiarism. Thank you. So now let me take you through the product. Yeah, so this is our website, drillbitplagiarism.com, cloud-based application. When I say cloud-based, similar to the Gmail application. If you have the username and password, you can access it from anywhere, anytime, on any device. You can access the software Drillbit on any device, anytime, within the campus, outside the campus, using the login credentials. So here is the place, get started. Click on the get started. Enter the user ID and password. So here we have option to enter the user ID and password. Enter it, user ID and password. This is like we create admin. One of the any in charge in the institutions can use the admin credentials, and then admin can create the login credentials for the faculties and students. So click on the sign in, user ID, enter user ID and password. After that, click on the sign in. So this is the landing page. So when you log into the Drillbit application, this is the landing page. Left side, these are the features like dashboard, my folder, repository, settings, and support. And right side, you can see top side, you can see the username, and the role of this is user role. This is not admin role. This is the user role. So here we can check the plagiarism. We can check the similarity reports. So my folder, first step is to create a folder. We need to create a folder. First step is to create a folder. Click on the folder, enter the folder name. This is the managing the files. This is you can create unlimited folder and any name. You can give any name, no restrictions. You can say PhD reports 2020. Hello. Can you put on mute? I think someone is open the mute. Can you put on please mute? Okay, so enter the folder name PhD reports 2000. Any name you can give, and you can create unlimited folders and submit unlimited documents in the each folder. Enter the folder name, and these are the settings. So these are settings are very important. As I mentioned, as per the guidelines, UGC guidelines, you can go for exclusions. So these are especially for the exclusions. How to exclude references or bibliography in the software? You say yes while creating a folder. You do these settings, so it will take care of it. And then exclude quotes. You can say yes for this. And exclude small sources. Here, as I mentioned, you can set the number of words. For example, while doing a plagiarism check, whether we do 5 words plagiarism or 10 words or 15 words or 14 words. So as per the guidelines, UGC said 14 words. But publishers, most of the publishers are using 5 words. 4 to 5 words they use. So depends on the guidelines. You need to refer the guidelines.
The software is made for all the guidelines. Considering all the guidelines, we have designed the software. But when you are checking plagiarism, please follow the guidelines, either university or the publishers. So here you can enter the 5 words or 14 words. So or 10 words also, depends on the guidelines. You can set 5 words. And then grammar check, yes, if you want grammar, you say yes. And exclude phrases, as I mentioned, if you want to exclude college name, university name, or department names, address, anything, you can just text box will come, you can enter the text phrases here, and it will exclude. And email notification, if you wish to get the email of your plagiarism report, you can say yes for this. You will get the plagiarism report via email. And databases, so as I mentioned, mainly 3 types of databases. One is the student paper. All theses, dissertation, assignment, project work, all are covered in the student papers. On journals and publisher database, especially scholarly content like published research article from the open access, premium publishers, and STM publishers, Scopus, Web of Science, all types of journals and publishers are covered here. And internet content, website and web pages are covered in this database. 3 databases. And institution repository, so this is the dedicated repository for the particular university and institutions. They can store previous year's content, previous years or the current year student papers in this repository. So then they can compare with that also. If in 2024, if there are 100 students, they can copy each other. Same 100 students can do only one project. So how do we avoid plagiarism? How do we check there is a duplication within the students? So this is a repository. You can store previous years and current year reports in the repository. Then you can check the duplications. So these are the databases. You can select yes. And in case if you want to only journals and publishers, you can do it. You can say no for student papers and go for these databases. So this is also possible. So click on the submit. So now we have created a folder. First step is to create a folder and then select the folder. To check the plagiarism, select the PhD folder and then submit. So here is the option to submit the file. Click on the upload file. Here you get options. As I mentioned, this is a multi-language platform. Multi-language platform. You can submit regional languages, English, non-English. So select the English. And here is the upload option. Here you can notice here, you can see the text. Here we have put what are the file formats are supported, like PDF, docs file, text, HTML, PPT, and multiple files you can submit at a time. Document length, each document is allowed up to 800 pages. It can be one page document. If you submit 1 page, it will check plagiarism. You can submit 400 page thesis, it will accept. Up to 800 pages, it will accept. And document size is up to 100 MB. So these are the options for the plagiarism check. So click on the browse file, attach here, go to your computer and select some files, submit for plagiarism check. And here you give the author name and the title of the document. And document type, you can select whether the thesis, dissertation, article, ebook, synopsis, assignment. You can select any document type and enter the guide name and email ID. This is like if you want to get the plagiarism, if you want to send the plagiarism report to your guide or supervisor, you can give their name. Otherwise, it's not required. It's optional. So click on the submit. So after attaching a file, click on the submit. So now we are submitting a file for plagiarism check. You can see here, now we are in the submission page. So this is in the submission page. Here you can notice here, now we have submitted a file for plagiarism check. Author name, title, original file, language is English. Now you can see we are giving grammar report, AI score, and similarity. So 3 types of report we are generating. In a single submission, you will get a document quality in the terms of grammar and AI score, whether it is a human text or AI text, and similarity report. It will give you whether similar content is available or not, or duplications available or not. So this is a unique paper ID and date and time. It may take few seconds for checking the reports, and we are not saving this document. For example, if you submit any document, software will not save it. It will not save the document in the repository. That is very important. Saving the document in the repository is very important. Whether you want to save or not, you can choose. But here, this is not saved. So now you can see the results. This is how the result will be generated. What is the similarity percentage, AI score, and grammar score. So now similarity is 8%. There is an alert message. What is this alert? It means the codes, the document, they have used 16% of the code. As per the guidelines, up to 15% is allowed. But if there is a more codes, intentionally sometimes students will put more codes to avoid plagiarism. So because of that, we are
giving the alert message. So here you can click on the similarity report. It will open the analysis page. So this is, we call it as the analysis page or the result page. Left side you can see the list of sources, nothing but website where the similar content is highlighted, or from where the content is similar content is matched. So because of that, we are giving website links here. With that website link, we can go and see whether the content is already published, who is the author, what is the content. You can compare versus the student submission versus the published content. So this is a similar report. You can see here it is highlighted in different colors, nothing but different websites. The content is matched. This content is matched from one website, this content is matched from the another website. So this is how the report will be generated. We can download the PDF report, or we can download the reports in HTML, and we can send the report via email. Here is the option, email notification. You can send this report. And exclusions, you can select here any source. If you want to remove this source, you can select here and click on the exclude. This 1% sources will be excluded from the plagiarism report. These are the exclusions. So here is the option to download. You can download the PDF report here. If you click on the PDF report download, it will download the PDF report. So let me show you the PDF report. Yeah, so this is the PDF report now downloaded. First page will be with the submission information like author name, title, and details, and the plagiarism percentage, and what types of sources are there, whether it is internet source, student papers, or journals and publication, and how much quotes are there in the document, and small sources, references it will give. And the database selections, what type of database we have selected for plagiarism check, what are the exclusions here, any percentage sources have been excluded or not. So everything can be tracked here. And this is the second page of the report. Here you can see the similarity percentage and how many sources are matched here, and what is the grade of this document. As per the UGC guidelines, we generate the grade. And these are the website links, and this is the percentage of the plagiarism and what type of sources. And in the next, we attach the document also. So we attach the document which is submitted, and we highlight wherever there is a similar content, we just highlight it. You can see here, this is the one of the, so it is matched from the one of the websites, and this is a website number is 4. Website number is the 4. So you can track in the list of the website on the top. So it will highlight, and we generate the report in original format without changing any alignment or the graphs, tables, charts. You can see here it is here one graph is there, table, and it is highlighted. Wherever there is a similar content, it will highlight. And here they will use a lot of quotes here. You can see here a lot of quotations marks they've used to avoid plagiarism. So this is how report will be generated. So this is with our software and plagiarism tool. So if any questions or queries, I'll be happy to answer. Thank you so much. I thank all the organizers and the participant for attending this event and listening to me. And if any questions are there, you can write to me in the email. And if any doubts or anything, you can call us in WhatsApp or email. We will be able to answer. Thank you, sir. First of all, it was an excellent session. Sir, I have one question. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead, sir. Go ahead. The question is, it has been found that in drill bit software, it has been found that many of the nouns, it is showing it as a plagiarism, sir. For example, I am giving the ICICI, LIC of India. Okay, it is also showing them as a plagiarized. Yes, sir. Actually, this is basically, as I mentioned, number of words you set in the settings. Like in the folder settings, if you mention 5 words or 14 words, depends on the set of words it will highlight. It will not highlight only the 1 word or 2 words. When you set it 5 words or 14 words, depends on that, it will highlight. And software doesn't know whether it is a noun or different things. It goes by the text similarity. It will have, wherever there is a similar text, it will highlight. If you want to avoid this kind of the nouns and all, you can put it in the exclude phrases. I mentioned it. There is because of this only we made provision where you can exclude the phrases like university name or college name, department names, or any kind of like LIC of India. So you can mention it. It will exclude, because otherwise software is not aware that what to be excluded.
Now the thing is that, sir, our student does not have the access to access the drill bit because it has been submitted to the university. Yes. So our student does not have any access, and the person who is operating the drill bit software in university, he doesn't know what are the noun that has been used by the researcher. Okay. So But they can share the list, sir. Whenever they're submitting the report, generally we noticed even some students or faculties will check it. They submit, okay, these are the phrases are used in the standard phrases are used in the report, which can be excluded. Even in the UGC guidelines, it is mentioned. It is not like told by drill bit team. It is mentioned in the UGC guidelines. So if anyone whoever checking the plagiarism reports, they should consider these phrases as per the guidelines. So one more thing, sir. Kindly give the mechanism. Kindly give a mechanism where a student should be able to upload the nouns that has been there in his thesis. Yes, sir. There is a provision in the software, as I mentioned, but it is not. See, if you're giving access to the student, they can do it. But since access has been given to the only in charge of the librarian or any other HODs, they should do it. They should enter. They should collect the list of nouns or standard phrases from the students and then put it in the software. We made the provision in the software. Okay, that operator who is operating, he's saying that I'm not able to access because I don't know how the various nouns. So what I'm asking you, is it possible? It is possible, sir. In the software, we made a provision. Whoever is accessing it, there is a provision in the software. They can do it. Please connect with us. Whoever is checking it, we can guide them how to do it. And give an upload facility, sir, so that our student will submit all the nouns in his thesis while submitting his thesis. So what he can do is that he will be able to submit all the nouns that is going to be appearing in thesis. So along with the entire thesis, he will submit separately the noun details. So that will be helpful to the students. Okay, sir. Okay, we'll make provision. Thank you, sir. Thank you. So in the audience, is there any question? Yeah. Okay, thank you very much, sir. Over to organizer. Thank you, sir, for the informative session. Now I would like to request our chairperson, Dr. Rajni Singh, to kindly share her insights on the session. Thank you. First of all, thank you, sir, for demonstrating your software entirely. I must say, it is good and simple to use. And this software has additional features recently added in it, like the grammar correction and sending the final report to your in charge, or you can say the guide via email. Secondly, it is also a good thing, and let us congratulate you and your software, and that AICT and UGC and other universities recognizes your tool and uses your tool right now. And after that, let me tell you, as a Innovative Institute Innovative Activity Coordinator of IIC, I always motivate my students for the critical thinking. So yes, it is good practice to make aware of your students to use their own brain instead of using and copying things. Right. So it is also good thing to impose the penalties to the students, and let's start this from the early stages so that in future they are not going to use the plagiarism things or the copy paste. Thank you, ma'am. Moving forward, we are ready to begin our third and final session of the day, which focuses on AI tools for scientific writing. Thank you, Viravadi sir, for such an informative session. Thank you all. Thank you so much. Moving forward, we are ready to begin our third and final session of the day, which focuses on AI tools for scientific writing and publishing. Our resource person for this session is Dr. K.S. Somyarani. But before we begin, let me invite and introduce the chairperson for this session, Dr. Prajakta Dote ma'am. Dr. Prajakta Ratnaparthi Dote ma'am, with over 20 years of experience in computer science,
holds a PhD from RTM Nagpur University and is UGC NET qualified. Currently an assistant professor at City Premier College, Nagpur. She has taught at various institutions including Tulsiram Gaikwad Patil College and BIP, specializing in design thinking and communication skills. She advocates for women empowerment and digital literacy. Dr. Note has authorized two books, Caillou and Radio Nani, which is available on Amazon Kindle. She won the Global Faculty and Education Excellence Award. She holds 2 patents and has published around 15 research papers. She also contributes to the Hitwada on career guidance. With this, I would now like to request Mr. Santosh Shinde sir, officiating principal of late Dr. I request Note ma'am to please come on the dais. Now I request Mr. Santosh Shinde sir, officiating principal of late Dr. Sachidananda Mungantiwar Knight College, Chandrapur, to felicitate Dr. Prajakta ma'am with memento and a bouquet. Now I request Mr. Dote ma'am, Ms. Dote ma'am to please introduce our today's resource person. Thank you so much. Ma'am, join you again. Soumya ma'am, are you there? Yes, I'm here, but I'm not allowed to turn on my video. So if you grant me the permission, like from your end as a host, I'd be able to. Yes, give me a 5 minutes to introduce a personality like you, ma'am. Just Okay. And then comes the image reveal, I believe. Sure. Okay. So, good afternoon, everyone. So, everyone is present in the hall? Yeah. Sure? Yes. Raise your hand. Oh my God, everyone. Clap for yourself. So, good afternoon, everyone. And I am really feeling very privileged. And I'm very much thankful to all members of organizing this workshop for inviting me for post-lunch session to chair this session. I'm really feeling privileged. And the speciality of privilege is that my mentor is here and my mentee is also here. My mentor, Dr. Kishore sir, and my mentee, our Santosh Shinde. He is my student, and getting felicitated by your student is a very special kind of a thing and a feeling. And today, I experienced this feeling very, very elated. You know, I do not have any words. Thank you, Kishore sir, for this. So let me introduce to our today's resource person for this session. As we all know that AI, generative AI, no one can neglect it right now. Although the research process, publication process is too much daunting, it's too much exhausting. But yes, you must congratulate yourself and you should feel privileged that you are having access to the various generative AI tools. And for that, we are having today with us Dr. K.S. Soumya Rani ma'am. She is a distinguished editor, entrepreneur and speaker with over 6 years of experience. A former DAAD Young Ambassador, she has edited 1,500 plus scientific documents in biotechnology, genetics, and molecular biology. Dr. Soumya is the founder of Soumya's Academic Writing Workshop, a startup incubated under IIM Bangalore's Women Startup Program. She has qualified for multiple national level exams, including GATE, DBT, and CSIR JRF. HAV, and again, she is having published around 6 research papers. Her published research focuses on RNA-based
Pest control. Dr. Soumya has also delivered talk on NEP 2020. AI in research and manuscript writing at top institutes like IIT Madras and NIT Delhi. So I will not take too much time. Soumya ma'am, you are there? Yes, yes, right here. Handing over to you. Had I left everything else? No, you did a very wonderful job. Thank you for the warm welcome. Really enjoyed. Over to you, ma'am. Okay, so thank you and good afternoon, everyone. I know this is post lunch. We all feel a bit sleepy, so let me try to keep it as short as possible and also as engaging. Hopefully, I'm starting by sharing my screen. Just let me know if you can see my screen and hear my voice all right. Yes, madam. It's okay. Great. So how many of you here recognize the face that you see on the screen? If you're young students, scholars, there is no excuse for not recognizing the face, even if you are faculty from a slightly different era. And if you have kids, then this should be a household face, because this is the face of Dr. Strange of the Marvel series, and also that of Sherlock Holmes in one of the best adaptations of this novel. This actor, an amazing actor at that, Benedict Cumberbatch, also went on to do yet another amazing project called The Imitation Game. So this movie is set in the World War times, World War II to be precise, when the Nazis had the upper hand, the Germans had the upper hand. And today, you and me, we have encryption of our personal messages we send through WhatsApp. But once upon a time, a few decades ago, this was a privilege that was reserved only for military communications. And one of the very pioneering missions that made this encryption of messages possible was called Enigma. And the Germans had this mission Enigma. They had built it wonderfully. And having this mission definitely added to their confidence and to the atrocities that they unleashed on the world. It is at this juncture that an amazing English mathematician and his team walk into the war scene, and they help break the code of Enigma, which leads to the end of the war. And this movie is all about this mathematician and his team and how his life proceeds from there. And that mathematician happens to be Alan Turing. And Alan Turing, I'm sure several of you are from the computer science background here, and you know Turing much better than me with all these Turing's laws for artificial intelligence, Turing test for artificial intelligence, and so on. So that is exactly the reason why we are talking about Alan Turing on this wonderful day, when we want to delve into what AI tools have to offer in the academic writing, scientific writing, and publishing space. So Alan Turing lived during the World War II times, which is like 6 decades ago. He was not just a simple computer genius, a simple mathematical genius, but he's also considered as one of the founding fathers of artificial intelligence. This story is just to drive home the fact that the terminology and the technology of artificial intelligence has existed for 6 decades. But not all of us were talking about artificial intelligence. So 2 years ago, if I talked about artificial intelligence, I would be classified as a nerd. So what exactly are you talking about? Why are you talking about robots and all this hi-fi, sci-fi kind of stuff? Would have been the reaction from most of the quarters. But today, any social gathering you walk into, there are a group of people who are talking about artificial intelligence, its pros and cons and everything around it, thanks to this amazing tool called ChatGPT that was unleashed on us somewhere around 2 years ago. We cannot talk about artificial intelligence in any context without starting the talk with a brief intro into ChatGPT. And here we are. So ChatGPT was unleashed on us in November 2022 by this company called OpenAI. And interestingly, Elon Musk was one of the earliest investors in the company. He left the company in 2018 or so. 4 years down the lane, they have this amazing product. So ChatGPT at the interface, at the user interface, is basically a chatbot. And we are not new to chatbots. If you have ever ordered your food from any of the food aggregators like Swiggy, Zomato, for instance, you know chatbots. Chatbots have been around. We have used them quite extensively also.
But then why were we all so excited? We are still excited about these ChatGPT class of chatbots because unlike your Swiggy chatbot, which can interact with you in very minimal ways, you can place your complaint about your food, ask the chatbot where your food is, maybe complain a bit until you are put on to a human contact. But unlike that, on a chatbot like a Gen AI like ChatGPT, I can ask about the dish I'm interested in, ask for the recipe, ask for the ingredients, ask for the culture and history around the dish, ask where I can find these ingredients and how to cook the particular dish and whatnot. So it is this versatility and intelligence and human-like conversations which make these tools very popular. And because these tools started out on the shoulders of giants like Google, they started out as a multilingual tool, which means they were not accessible not just to the English speaking community, but also to the non-English speaking community as well. Even when it started out, ChatGPT could converse in around 5+ different Indian languages. That brought it much more closer to us at home. So it is not that we were not using internet before ChatGPT and GenAI, though it appears or it feels so when we look back. Imagine the Google we had 2 years back, not the AI Latin version that we have today. Imagine the older version of Google that we had 2 years ago, and we have been using the older version for quite some time, for decades at least. And we used Google so extensively that we created a verb called Googling to refer to finding information from the internet. But then ChatGPT walks into the room and we all shifted our loyalties from Google to ChatGPT because we are very lazy beings at our core. When you ask a question to Google, yes, Google gives you an answer. But then the older Google, it is not going to give you an AI-generated answer, but rather it will give you a set of resources, sometimes a huge number of resources, which you are expected to process through and get the information you're looking at. But with ChatGPT, ChatGPT is this pampering, spoiling parent that all of us have. They want to keep us happy, want to keep us tantrum-free, so they'll do pretty much anything to achieve that. That's what happens with ChatGPT. You get your information in a very concise, easily digestible way, and we all love that, don't we? And the problem here is the focus of these Gen AI is to keep you happy, and therefore what they give you might not be always completely true. So say you ask a question to ChatGPT and it tells you, I do not know the answer. You don't want to take no for an answer. You keep pushing the tool. You keep rephrasing your question and pushing the tool over and over. At some point, it believes, okay, so I know A, maybe I lack some components of B, but I can still extrapolate the information to C. So it takes the information that already exists and it tries to extrapolate and give you an answer which is not backed by the right resources. It is not backed by any sources at all sometimes. And this can lead to a lot of problems. And this process is what we call hallucinations. And hallucinations have been one of the top concerns about using Gen AI, especially when we are using AI for something as serious as academic research or scientific writing. The popularity of AI tools is undeniable, and ChatGPT is definitely or has definitely been leading the way. Just 1 year after ChatGPT was introduced, somewhere around 1 year, ChatGPT could still garner 14.6 billion visits just within a span of 1 year, which is a huge number of footfall for any tool, for any website. And just among the top 50 AI tools, we have spent our time giving them around 24 billion visits in this 1 year span, which speaks for itself to the popularity of these tools, to the functionality and also the use cases that are possible with these tools. And this is just the tip of the iceberg. So AI is not just Gen AI, and definitely it is not just ChatGPT. It is much more than ChatGPT, Gemini, Claude, your Microsoft Copilot. These are just the tip of the icebergs, and this tip is not even as useful as the other other tools at the bottom of the list when we think in an academic writing perspective. So at the front end, at the user interface, these tools are chatbots. But at the back, at the core, what are these tools? They are something called large language models, which are AI that can
access large amounts of information that are already available on the internet, process them in certain ways, and bring back information concisely, depending on what you ask these tools, to put it very simply. The problem here is they are not creative in the truest sense. They only work when they have this training data, they have this training information. But when you want to work with these tools in something as creative, as novel as research, so research is basically finding something new, pushing the boundaries into all this unknown terrain, then AI is limited by how they operate, by the basic structure of them being dependent on the test data or the existing data. Yet another limitation comes from the data they learn from. So where do they get all this data they are being trained on, they work from, and so on? So they gather this data. The AI tools get their data from human-generated data. And we humans are highly biased creatures. The moment someone walks into a room, even before they open their mouth, we have a judgment on them. We judge people on just so many impossibly high number of ways, by the way they look, by the way they speak, where they come from, their religious faiths, their gender, their political affiliations, and what not. Through the decades, consciously or subconsciously, we have embedded all of these biases into the data that we have generated. So when a human looks at a data that is biased, I know there is a bias because I have real world experience of the same information. But when an AI looks at biased information, it looks at these repeating patterns of bias and it assumes that these are the fixed rules that have to be followed to generate a particular set of data, particular information, particular image, and it picks on these biases, amplifies them, and throws it right back at our faces, which is a huge limitation. So now let's look at a few amazing images that AI had created like 2 years or so ago, I believe, almost 2 years ago. So these images were created by this popular tool called Midjourney, if I'm right. And there, all you have to do is just give a very small prompt describing the image that you have in your head, and the tool can convert this textual prompt, or rather take the information from this textual prompt and create a composite image. When this happened for the first time, then we did not have Adobe Firefly, we did not have Canva doing its Magic Studio stunts. Therefore, this was amazing. We were awestruck. Wow, that makes our life pretty easier. Okay, it does. But after we have acknowledged that, let's take a pause, let's take a breath, and look at these images once again. And let's all assume we are sitting somewhere in the US this fine afternoon. Even then, do you think all prisoners would look like that? Or to rephrase my question, are majority of the prisoners in the US people of color, Black people and also other people of color? How many of you would be treated by a nurse who looks like that? The more important question is, why should a nurse look a certain way, and why should a cleaner at the other end look something completely different? Just a moment. Okay. So where did the tool learn that a nurse should have these features, should have these components, while a cleaner should come from a completely different race, completely different ethnicity? The user did not introduce this bias into these images, but this bias comes from the training data that the tool had access to. And this is yet another limitation of AI, especially when you're working in research. This means that the dominant voices will get amplified. The dominant theories, the most popular theories, will keep getting pushed up, whereas these marginal theories, which could turn out to be groundbreaking discoveries, the marginal inventions, they could keep being pushed down, and the divide between the haves and the have-nots in the arena of data and information could actually widen because of the use of AI, and this definitely is a concern. And today, AI is everywhere. It has found its way into every single industry, and as a student, as a faculty, or as a professional, we are all moving at a pace where we want to find ourselves useful enough and not be replaced by AI. But the pace with which AI is developing is not always caught up
by the pace with which the legal implications and the ethical considerations are catching up. So for us to accept AI, it has to at least assure for every single AI tool, it has to at least qualify for a certain set of criteria like transparency, like data protection, and so on. But unfortunately, this is like a race between Bolt and everyone else. So the technology is bolting right across the field, and the ethical considerations, the policy making, and the legal guidelines are still trying to catch up, and they are definitely not catching up. The distance between Bolt and the other participants definitely has been widening. The technology is somewhere, the regulations are somewhere, and this has to be definitely bridged in the coming months, years, and so on. So before we jump into checking out a handful of AI tools that can help you make your academic writing process a bit less painful and more enjoyable, it is important to acknowledge that this AI world is complex. It's multi-layered and it's evolving every single day. We humans do not understand all parts of this evolution, and that calls for a lot of caution alongside the super excitement that we already have for these AI tools. And coming to the bit of an introduction, I know I already had a beautiful introduction, but there are some parts that don't always go into my CV. I'm Dr. Soumya, and I enjoy doing three things in my life at the moment, at least. The first is that of being a parent to a 10-year-old and all the stray birds and pets that she has brought along. The second is that of being an editor with this company called Editage, which is a part of Cactus Communications, where I edit scientific manuscripts somewhere around the life sciences arena. And I have been associated with Editage for 3+ years now, but my editing journey is much longer at 6+ years now. The third role that I donned pretty recently is that of an entrepreneur with my startup called Swami's Op, where we train faculty, researchers to write better, to formulate better research questions, do better research, write better, and also end up publishing better through webinars, just like the one we have at the moment. And we also have expanded programs that run for 5 days, 10 days, very intensive programs where participants learn about the entire process of scientific writing and publishing. And at each step, we introduce appropriate AI tools so that they have a good hold on the basics, but then they are also updated to what is happening in the latest news when it comes to AI for academia. And we support these programs through our manuscript editing services because at the core, we come from an editing background. And we work with clients on their grant proposals, on their manuscripts, sometimes on other kinds of scientific documents, also to improve the content, improve the structure, and to tailor make it to the agency the submission is being made to, or the journal the submission is being made to. So anything and everything I say during the session comes from these experiences, comes from the feedback of our clients and participants across the past few years and so on. So one of the first places as a researcher where you can use AI is in literature search and review. And a simple switch that you can make is to move your search from Google Scholar to Semantic Scholar. Yes, Semantic Scholar is sometimes limited in the fields that it covered, but maybe there will be an expansion on what it covers. So how is Google Scholar and Semantic Scholar? How are they different? Google Scholar, they pretty much the interface, the functionality, they look, work, and feel similar, but they have a fundamental difference. Google Scholar works based on keywords, which means it takes individual keywords and looks at them for what they are as silos. But Semantic Scholar works based on semantics, which means it is going to pick out keywords, look at relationships between them, look at the frequency with which they appear within text, all these complex underlying interconnections. Therefore, when you use a semantic-based tool to find your literature, not just Semantic Scholar, you can also find other semantic-based tools depending on the field you are in, and that will allow you to have lesser number of results, but results that are much more relevant. Instead of having 10,000 papers on Google Scholar,
you might only end up having 500, 600 results on Semantic Scholar, but these 500, 600 papers will be more relevant, saving you a lot of time in the initial stages of screening for your literature. This is the interface, nothing fancy, pretty much the same as your Google Scholar. So that is finding literature as silos. But when we talk about literature, when we talk about synthesizing literature for your papers in the form of your introduction sections or discussion sections, then it is not about individual papers. Literature is about tracing the story, tracing the backstory of your work. So this story started when someone discovered something new, or someone came up with a new hypothesis, or someone invented something new. And from this seminal discovery, invention, or a paper, the research started progressing. And as a researcher, when you enter into the field, do something, you want to trace this complete story and present it in a very concise way before you talk about your own. That is the purpose of literature review. And one of the simplest ways in which you can trace this story is through the references and citation networks on your paper. Say, for example, I am interested in a particular paper that was published in 2017. So this is a core paper that I have to talk about in my own thesis or grant proposal. And this paper already has around 50 references, which means by default, this paper is linked to 50 other papers that were published before it. 2017, now it's 2024, that is 7 years down the lane. And maybe 20, 30 other papers have cited this paper of interest in 2017. Now, all these papers that are linked primarily, they form the backward and forward citations. And if I can just trace and find out all these 80 plus papers, I already have a good part of the story for the, that forms the base of my book. I go to the references, and then one of you have to unmute yourself, I believe. Okay. So then I go do a search. I find the paper, scan the abstract, scan the title, the keywords, maybe skim through the paper slightly, and decide if that paper is relevant for me or not. If it is relevant, save it into a folder. So this process of citation mining or citation search is pretty straightforward. It's redundant. It has a set of rules, no creativity whatsoever required. Anytime a process is this redundant and repetitive, AI can do a much better job than you can. And that is why you can outsource this process of citation mining or finding your literature to AI tools like Litmaps. So on Litmaps, you can pretty much start with a keyword, a set of keywords with an author name, or even a set of papers if you already have them. And Litmaps is going to build a literature map for you. The initial map called the seed map is going to have somewhere around 20 papers. And from there, you can decide which paper has to be further expanded or has to be added into the next set of searches. And you can keep iterating the number of papers one after the other set to expand your literature. So how is this literature map-based search different from a Google Scholar search or a semantic search? So the basic search that we are used to is a top-down approach, where you start with a huge number of papers and then you apply filters subsequently to narrow down on the papers that you are interested in. But literature mapping tools, they work the bottom-up approach, where you start with papers that are very relevant, vetted papers, selected special papers, and then at every iteration, at every single stage, you apply filters to make sure that you only have papers that are relevant to you. So you start with 20 papers. Next step, you add maybe 10 papers. Next step, you add 7 papers. At the next step, you add 9 papers and whatnot, which means you don't spend hundreds of hours scanning through papers that are in no way related to the research that you are trying to do, or are only marginally related and don't really deserve your time. So when we talked about getting information from ChatGPT like Gen AI tools, we talked about a few limitations. So when you ask a serious academic question to ChatGPT, the first problem is it could hallucinate. It could bring you information from the wrong sources. It will give you the right information, but without the sources. Such information is of no use to us in the scientific writing business, because
an information without a source is as good as having nothing. And again, these tools, they are not built for academia. Therefore, they are going to have a lot of limitations. With the advent of custom GPTs and also with the introduction of projects in Claude, of course, I understand that you can train the tools to act appropriately, to bring the appropriate information, the citations and references. Yes, it is possible. But why do you want to do that when there are AI tools that are built specifically for this purpose? And a simple switch you could do here is to move from asking questions to Gen AI to academic AI tools like Consensus. When you ask a question to Consensus, it is going to give you a short summary answer, and then it also gives you something called a consensus meter. So this tool gives you resources, gives you answers, but also could develop as a tool that can help you validate your research questions. I'm not going deep into it, but once you explore the tool, you'll understand what I mean. And with the introduction of this feature called Copilot, where you have a much more elaborate summary, and this is the default setting. So you don't have to tell Consensus that, so when I'm using ChatGPT, I have to tell ChatGPT, okay, please give me information only from Scopus index journals. And also make sure that every single sentence has a citation. Don't forget to generate a reference list at the end of the information. When I use Consensus, I don't have to tell or instruct the tool. So because this is the default, and the tool gives me a summary which comes from relevant sources. It cites the appropriate references on each of these sentences as well, which means all I have to do is just click or hover my mouse over these citations, and I'll see all the references listed just below the summary. So is this summary copied from all of these papers? Not necessarily, because AI tools are not built for copying, but then they are also probability models. AI does not understand the information. It only takes intelligent guesses as to what the next set of words could be once you provide them with a few set of words, which means the information that you see in these kind of summaries, they are synthesized summaries. They are not copied information. So can I use the summary as it is on my grant proposal or on my manuscript? Yes, go ahead, but on your zero drafts or on your first drafts, not on your final drafts. Though majority of this content will not come under the category of plagiarized content, it is still AI generated content, and with Turnitin and other such plug check tools, we now have AI content detectors as well. So this will show up as AI generated content, but you can very well use this template summary as a crutch to write your content. You can model your content based on these summaries. That I feel is the right approach to use these AI tools. So the second stage where we all struggle when it comes to tackling this academic writing process is in extracting information from multiple papers. So I have collected 100 papers. It's all sitting there on a nice yellow folder on my computer. But now, how do I get very specific information from across these papers? Say, for instance, I'm looking for the limitations in all these papers so that I can pick out a good research gap, a good research question for my own work. Or say I am looking for certain models from all of these papers. I'm looking for certain specific methodologies from these multiple papers. I have to go into hundreds of these papers, open hundreds of PDF files, and then search for this information manually. That is where AI tools like Elicit make your life easier by just pulling out all the key information in a tabulated format. And you get to decide what columns you want to add. You can even add custom columns. And once you're done making all the columns you want, making this table, all you have to do is just add the headings. The tool will find out this specific information from hundreds of papers and tabulate it or populate the table. Once you're done, you can work on the Elicit interface. If not, you can also download the information as a Word document, as an Excel sheet, and then use it. Right. So reading scientific papers is not always fun. So let me just see if I can get rid of this. Okay, unfortunately, no. It's okay. Let's go along with it. So reading scientific papers is not always fun, right? Because
Scientific papers, they are like the middle part of a story. Don't always give you all the components that happened earlier. If you're a novice researcher, then jumping directly into a paper might be difficult. Also, we are people from a country where English is not our first language, and it's okay if we lag slightly in our English proficiency. But that definitely hinders the way we understand papers and write papers. What if we can have a mentor who can walk with us 24/7, and anytime we have a question, say I'm reading a paper, I don't understand certain sections of the methodology, I can just turn to them and they'll explain every single terminology in this particular paragraph and connect it with so many other terminologies so that I understand this concept much better. We would be blessed to have someone like that. With the advent of AI, that has become possible for most of us. And I have a slight request. I think none of you should be touching the screen because there are, there's a green tick there. There are a few crooked lines here. So make sure you're a bit careful when you're trying to hover your mouse over the screen. So that mentor that we are looking for, have always earned to have, is this tool called SciSpace Copilot. So SciSpace is a conglomerate of so many different functionalities, but I'm just going to touch upon this feature called Copilot. So all I have to do is just upload the PDF version of the paper I'm reading. And anytime I don't understand a certain section, I can just drag my mouse over the section, highlight the section, and now the tool is ready to help me summarize this section, give me a detailed explanation of what all this is about. And the beauty here is that it not only works for text, it can also work for your math, your equations, your tables, because these are some of the things that are the most difficult to fathom and figure out in most of the cases. And it also helps you find related papers. Say, for instance, I find a very nice information on a paper, but I cannot just pick information based on one paper and put it into my own writing. I would need a bit more of substantiation and I want more papers talking about the same thing. Then I can use this feature called related papers. In addition, if you have used ChatGPT ever, then the Copilot also has this ChatGPT version where you can ask any question about the content from this paper. You can also do this with a more number of papers, not just from one paper. There's an option where you can extract data, interact with multiple papers, also making it pretty easier for you to get information from papers, understand information much more clearly. So 10 years back, imagine you are packing your bags for a train journey or a flight journey. What was that one quintessential thing that most of us packed? Usually it was a hard copy book. At least I definitely would have done that. But now we no longer do it because anytime we move, we have at least a minimum of 3 screens. So I have a phone, my smartphone, I have a tab, then I have a laptop. I need at least these 3 screens to survive anywhere. So this entire landscape of reading has definitely changed. And we are no longer interested in reading. We are more interested in audiovisual content. We love our Instagram reels. We don't even read the captions below the reels. And we are not interested in blog posts. We are interested in podcasts. And this is okay. This is the way we evolve with technology. But why hasn't the way we read papers evolved in the same pace? Why hasn't it not? Because nobody publishes papers as podcasts. What if nobody had to publish it as podcasts? You can use tools like listening.io to convert any paper into listening material. You just have to upload your paper into such AI tools. MS Word also has an option where you can read through content or you can ask the tool to read aloud for you. But then this takes it a bit one step further where you can quickly transcribe your recorded videos, transcribe YouTube videos. You can also upload the PDF version of your papers in Speechify, listening.io kind of tools and listen to them as you're doing something else, as you're driving to your office or as you're cooking, as you're gardening, as you're hitting the gym. This helps you be the multitasker that we have always wanted to be. Yeah. So once you're done reading, listening to papers, the next step is to convert the content into appropriate notes. Here again, AI tools like Scholarcy can come in handy where you can just upload your papers, one or multiple papers,
say when you use tools like Pop AI, for instance, and these papers would be summarized into very nice summaries that you can use on your own drafts, or you can use them as a template to write your drafts. And with tools like Scholarly, they also double up as your kind of draft PPT making tools, where you can summarize a paper into something called the flashcards and then download these flashcards as a PPT. And now this PPT will be your skeleton. You can quickly add the content, add images, and your PPT making process becomes easier. So this particular feature works when you have your own papers, which you're trying to present at a conference, or say you're trying to present at any kind of a gathering, and you want to convert the PDF version of the paper quickly into a PPT, then Scholarly is definitely a tool you can check out. Writing papers is not just about synthesizing existing information, it is also about adding your own thoughts. And here again, you don't have to sit and write pen to paper. You don't have to be always at your desk to type in these amazing eureka moments that you have. Instead, you can just have an app like AudioPen on your phone, and then this AI tool is your personal assistant that tags along with you wherever you go. Anytime you have an idea or anytime you're writing, you're a bit cluttered, you can just speak your thoughts into these tools, and such AI will convert your voice notes into text, which can be downloaded as an MS Word document. They don't just convert the voice notes, they also clean it up a bit. Some of these tools are also good with doing a basic grammar check, proofreading, and organizing your content, making your life pretty easier. And when it comes to making images, Midjourney was definitely one of the AI that has been talked about a lot. But when it comes to images in academic documents, AI still has a lot of limitations. You can generate images using AI, but not all of those images can actually go into the main text of your paper. You can use AI to get suggestions, get creative ideas, or get some basic structure. So if you're talking about circuit diagrams, then yes, AI might work. But if you're looking at a more composite image, then AI might have its own limitations. And if you're working with quantitative data, statistical analysis is definitely a pain point for any researcher. There again, AI can help. Most of the business analytics tools can develop as your research analytics tools, provided you know what your data is all about, what is the endpoint you're looking at. Then tools like Tableau come in handy. And not just quantitative research, even with qualitative research tools like Insight and Keynote help you work on focus group data, survey responses, and so on. So managing references is the elephant in the room always. And I always lead my sessions, the workshops that I was talking about, with reference management. My first session is always on reference management, because you can use any of these amazing AI tools to find your literature. It could be lit maps, it could be connected papers, it could be semantic scholar. But what do you do with all those papers? You can, of course, save your papers in Google Scholar or in lit maps. But at the end of the day, saving my papers into these tools is not going to help me with managing my references in my actual paper. That's why you should always start your work by mastering a reference manager like Keynote, which is not free, but if you have institutional access, great, go for it. If not, there are free tools like Zotero, Mendeley, which you should be using. These are not AI tools. They are conventional tools. I personally feel we don't need AI to manage references. Once you have a reference manager, you are set. No other worries. But if you did not do that and you end up having 200 references that have to be converted from one style to the other overnight, because you were unfortunate enough to be rejected by one journal, and then you have to move your paper to a completely different styled journal, then the AI called Tricks can come in handy, where you can upload your manuscript for citation reference check, but then you can also just copy paste your reference list and work. Language is again an Achilles heel for researchers who come from countries where English is not the first language, and we are right there. So we definitely need some help beyond Grammarly to take care of the language issues, to keep our writing concise, cohesive, and also to tackle these word count reduction issues.
So I am known for my prowess for word count reduction, though it's like tooting my own horn. I'm very proud of it because when it comes to editing, I'm ruthless. You give me a paragraph that has 300 words and give me 1 hour, I would break it down into 150 words, make it concise, consolidate it to 150 words. That's what I do on a daily basis. Even then, there are days when those last 5-10 words would simply not budge. No matter how hard I try, I'll not be able to remove those final few words without compromising on the information provided by my client. And those days are difficult. And this for someone who edits, reads, and works with manuscripts day in and day out for 6 + 7 years almost. Now, imagine for someone who writes 1 or 2 papers in a year. And especially when it is your own writing, it's very difficult for you to work on the language because your brain is saturated. You can no longer cut down words. That's when AI tools can come in handy. And one of the popular options is Quillbot. But Quillbot is not the end of it. You have much more academically relevant tools like PaperPal. So PaperPal is from Editage, and this is the same company where I work as an editor, but not with the PaperPal team per se. I work on a different team on a different level. But PaperPal is definitely a tool you should check out because it is the tool where you can start from your ideation. The tool can write your drafts. It can help you tackle your grammar. It can even do a bit of review and checks. So the next tool you could try out is Trinka. And when it comes to language tools, so up until now, when we are talking about tools for literature review or data extraction, there is not much of a question of data breach because all of this information is already on the internet. You're only using tools to pick out the relevant information. So all is cool. But in such cases where you want to check the grammar and language for your own information, for your own manuscripts, you have to be a bit careful about where you upload your manuscript or what kind of tool you use, because even with Turnitin, we have heard cases where papers have been stolen and published elsewhere, data being stolen and published elsewhere, and whatnot, when the shared, cheap Turnitin accounts are being used. So similarly, when you want to upload your manuscript anywhere, you should check for the authenticity of the AI tool. How do you do that? Look for how long the tool has been around. Also look for who is behind the tool. What team owns the tool? What is their reputation? So in this case, PaperPal is from Editage, 20-year-old company, and they have a lot at stake when there's a data breach. So they are going to be careful. Trinka is from yet another language editing company called Inaugural. Therefore, they have a reputation to say. So when you have committed teams, then the reliability of the AI tools definitely goes up a notch. But anywhere, anytime you upload your own information, there is definitely a slight risk which you should be aware of and taking measures against. So yet another small plugin you can try out is called Writeful. Most of these language tools, they come as plugins. You can just add to your MS Word applications and start using them right away. And then comes these magic wand AI tools that write entire papers. All you have to do is just describe your paper in 15-20 words. Works well for review papers, right? And the tool will write your entire paper from the title to generating your reference list with appropriate citations all through. And one of the very popular tools that can do this is Jenny. And it's popular because this tool was kind of the pioneer to start it. And then there came a lot many tools. Now you have SciSpace, which has an AI writer. PaperPal also has an AI writer. Several of the AI tools, they are jumping on the bandwagon to include AI writers. So this looks amazing. So you can just give a prompt, grab your popcorn and coffee, sit back and relax. And in the next 5 minutes, with very minimal interventions from you, the tool would have completed writing your paper. Great to watch as a movie, but then the content generated by such complete writing tools will be flagged as AI written content. You cannot use them as it is. So what is the purpose of introducing this tool if we cannot use it? These tools serve yet another purpose. These are great sounding boards, great places where you can ask the tool to write in different perspectives on the same topic, because
there are so many different ways you can present the same information, and doing that with an AI tool will save you a lot of time, and you end up with one perspective that makes a lot of sense to you, and you can go ahead with completing your paper, getting ideas, getting your skeletons, your say the TOC out of these tools and what. Once you're done writing your manuscript, say we have finished doing all of that, then it has to be checked, not just for the main text, but there's a lot of front matter, lot of back matter. There are declarations, there are references to be checked, citations to be checked, so many other things. Here, you can use tools like manuscript check functionality from PaperPal, which will check your manuscript for all of these different aspects. So and this feature is free. So several of the tools that I talked about today, they are freemium tools, which means they have some free features to offer. But if you want to check out or use the entire functionality, you will have to go for the paid or pro version of the tool. But this functionality, last I checked, was free on PaperPal. So you can upload your manuscript, and the manuscript will be checked these different aspects, close to 40 different aspects, and the tool will give you a report telling you where you should place more attention to make it better for your initial submission to the journal. No matter how careful you are in checking your manuscript and writing your manuscript, we always end up having our papers reviewed by a reviewer too, the famous reviewer who just kills our paper, who criticizes it to no end and just shreds our paper to pieces and also our hearts along with it. What if we can hire this reviewer too beforehand, even before you submit your manuscript to the journal? Hire reviewer too and ask them to do a thorough peer review, a very critical peer review of your paper, so that you get to know the flaws. You can make changes to address these concerns before you even do your initial submission. This means your paper has a much better chance of moving into the peer review process because you've already done a peer review. And the peer review process might also be a bit more mellow because you have pretty much tackled all the key concerns around the paper. Makes your life easier, gives you a better chance at getting your paper published. So where do you hire these peer reviewers? Are they for hire? Is there a website where I can register? You don't have to have a human do it because there is an AI that can do that for you. And that AI tool is called Paper Wizard. Not the only tool, there are others as well. So these tools give you a very critical, very thorough peer review of your paper, which helps you get your paper into a much better shape for the actual peer review process. And somewhere down the lane, be it you're a student, scholar, or a faculty, making presentations is a quintessential part of academia. There is no running away from that. And if you're bored of using PowerPoint presentations, you have amazing alternatives like Canva, Prezi, for instance. But if you want to go full-blown AI, you should check out tools like Dectopus, Pop AI, Gamma AI, where all you have to do is just describe your presentation in a small prompt, answer a few questions about the presentation maybe. And these tools, they give you your entire deck. The images are there, the content is there. And if you're talking about a very generic topic, you can take the presentation, go start speaking on the classroom podium, maybe not on a huge audience stage. Then you might want to tweak it, add more specific information before you can actually present it. And yes, some of these tools also offer a possibility where you can upload your own document, your own notes, and then convert them into the presentation, making it more precise, custom made for you, saving you a lot of time. And because we have faculty in the room today, being a faculty is no longer about just teaching. You're also expected to do research, bring in the money necessary for research, and also get it published frequently in good journals, adding on to the different metrics, right from the 2% Stanford list that is being talked about very much this week, and every other metric there is. Here again, AI can come in handy to help you create your draft ideas, soundboard your ideas, help you with structuring the different activities that have to go under each of your aim statement, each of your hypothesis statement, whatever it is, your problem statements,
And then they can also help you with budgets. Maybe most of them are still a bit attuned to the European US systems, but we could still tweak them to help with the Indian system as well. And one tool you could try out is HyperWrite. This is not a very specific field specific proposal generator, but HyperWrite has this huge conglomerate of so many different tools. Any requirement you have around writing or other content creation, you will find that HyperWrite has a solution for you in the form of an AI tool. So if you have not tried it out, you definitely should. So we have been talking about research, publishing, grant proposals, and so on. We cannot forget that being a faculty also has a teaching component to it. And here again, AI can come in handy from creating the lesson plans, creating your assessments. And I'm not talking about MCQs. You can even create subjective assessments, provide the key answers to these questions, and make the students take these assessments online. So the tool will deliver the questions, evaluate the answers, assign grades, and keep track of these grades over years to make sure that you have an idea of how a particular student is progressing, where the student need helps, or which of these classes need you to add more extra efforts to make the entire process a bit more easier. And all of us, be it in the form of students, scholars, or teachers, we could all help take or use some help in being better communicators, both in our professional lives and our personal lives. And especially as students, it is important that you are good communicators when you stand up there on stage for your thesis defense, and also when you sit for your placement interviews. Here again, AI can come to your rescue in the form of tools like Voiced, where these tools, they sit with you on video calls, look at the way you present, the way you talk, and tell you where you can improve both the content, your body language, and everything. Now that we have dashed through 15 AI tools, at least I believe 10, 15 tools, somewhere around that, the question is it ethical for me to use any or all of these AI tools on my next academic writing project? The answer is yes and no. Yes, if you're trying to use these tools as your support systems, as your assistants. But no, if you want to use them as replacements to yourself, then you are headed down a very wrong path. So what do institutions have to say about the use of AI? Institutions are still formulating the guidelines, and several institutions have set up these AI guidelines committees at the moment. And I have had the opportunity to interact, contribute to some of these committees in helping them frame better guidelines. But then that is a lot of work still in progress. We are yet to see a very unified set of guidelines. But when it comes to the journal publishers, they are very clear because they have had a bitter taste of the medicine of AI. When ChatGPT was introduced for the first time, some authors thought it's a great idea to use ChatGPT to generate large parts of their manuscript and then add ChatGPT as one of the co-authors. That's what we do. When someone contributes to our paper, we acknowledge them by giving them authorship. This did not sit well with the journals. So there are very clear guidelines stating that you cannot use AI to generate large chunks of information, and you cannot ever add AI as a co-author. And this is agreed upon across multiple publishers from Elsevier, Nature, Springer, and whatnot. And anytime you use an AI, so if you use AI just for a language check, for a grammar check, you don't have to declare the use of it because you have been using editors such as myself to polish your manuscripts for more than 2 decades now. Journals are okay with you using editorial services to improve your manuscripts. They are okay with you using Grammarly. But when you use an AI to do anything more than a simple language check, simple grammatical check, simple proofreading, make sure you declare the use of AI, and all the journals will have a standard, or most of the journals at least, give you a standard declaration statement, something similar to what you see on the screen, that you can use to declare the use of specific tools. You should mention the name of the tool, the purpose why the tool was used, and also assure the editors, reviewers, and the readers that a human verified all the information that came out of an AI. Now let's talk about
the AI content detectors. I know you just finished a session on plaque detection using Drillbit in the previous session, and that was not perfect, right? As in, the concept of plaque detection is not perfect. Let's all agree that there's a lot of limitations, shortcomings, be it any tool. So you talk about Turnitin, you talk about Authenticate, as boastful as plaque checks are, there are limitations. By it's a limitation because that's the nature of human writing. So we tend to be inspired by writing from others, and we tend to be inspired by what we read, and we tend to use the same sentence structure, same kind of words, and that is not always intentional plagiarism. So that has been an inherent limitations in plaque checks. But now we have yet another log called the AI content detectors. They are new. They are still looking for ways in which they can differentiate between human writing and AI writing, and they are not perfect. This applies to copy leaks. This applies to the Turnitin's AI detection feature, which depends on or which backs up on copy leaks, I believe. So I did a small experiment to see how they work. So I wrote a content using an AI called Jin, which we saw a few slides earlier. And then I put the content into copy leaks. It tells me 100% of the content was generated by AI. Okay, I'm happy. Now, when ChatGPT started started growing, we had these anti-GPT tools or these content detectors. And when these content detectors started growing, we started having yet another set of tools that can bypass these content detection, and that set of tools are called as humanizers. Humanizers are basically AI that take AI generated content, rephrase it in such a way that it cannot be detected as generated by AI by a detector. Very confusing world we live in, but that's how it is. So I used a humanizer called StealthWriter. So I write a content using Jenny, put it through this tool called StealthWriter, pick the output and put it back into copy leaks, which is an AI content detector. And now this tool feels that 100% of this text was written by a human. I promise you, I did not add a single full stop or change anything from this content. This is 100% AI written content, but the content detector could not catch it because I used a humanizer. Therefore, so 2 points here. One, content detectors are not flawless, but they are here to stay. So you have to be careful when you use AI generated content, and when your own content shows up as something generated by AI, find ways in which you can interact with your editors, interact with the people in charge to sort it out. The second, this is in no way an invitation to you to use humanizers to fool these content detectors, because yes, there is 0% AI score. But when you read through the content, there's a very clear difference between human written content and AI written content, and an experienced eye will be able to spot it. So this is just a fun exercise, and let's leave it at that. That's better. So will AI change the way we know life, the way we employ people, the way we work, the way we develop our skill sets to be employable? Very much, because AI has already started taking away so many jobs. And the very close to home example is that of Tukan, a company in Bangalore, where one fine day this young CEO wakes up and sees that AI does a much better job at customer care than the humans. He fires the entire or majority of the customer support team, and people have lost their jobs to AI all across the world. Even with teaching, there definitely is a threat of AI taking over teaching, and several institutions across the globe have already experimented with using AI features, AI robots, AI apps to replace part of the teaching process. So no matter which job you're aiming for, ask yourself, train yourself to make sure that you develop a core set of skills that are required for the positions required for your career ahead, that cannot be replaced by AI, at least in the next half a decade or 1 decade, if you want to really survive this AI wave. So will humans as a race be replaced by AI? Possible, not by robots, but maybe by humanoids who have this combination of human skills and the machine advantage.
The world is split on this question of AI. Is AI good? Is it bad? Should we use it? Should we not use it? And Elon Musk is a naysayer here. He is a very vocal opponent of AI. On one hand, he hates AI, and then he goes on and starts a company called Neuralink, where these humans are embedded with these small chips, and this chip enables the humans to control their devices. So this chip takes the thoughts in your head. You don't have to speak, you don't have to utter a command, you don't have to touch a screen, you just have to think. Your thoughts are converted into commands by this chip that are communicated to your devices, be it a laptop, be it your smartphones, and the device responds to your command instantaneously. And if this is not the next step of human evolution being replaced by, this is definitely the first step to creating these full-fledged humanoids, I believe. So we definitely are already on the verge of looking at that next step in the human life, I believe. Yeah. So I would like to end this session, leave you all with this thought that AI is not the villain. So if you're interested in these Greek mythologies, you know that once upon a time, fire belonged only to the gods. And this young god called Prometheus was very fond of humans, brings the fire down to humans, and he is punished for that. I'm not sure if it is true or not, but when fire was discovered for the first time, I'm sure not all humans were happy. Some humans could see the potential of fire, but several of us would have definitely feared the destruction that fire could bring to humankind. And today, the new fire that we have amongst us is AI. It is here to stay. It is not going anywhere, and it has its own set of good and bad. But make sure that you approach it with an open mind, especially in the arena of academic writing, but also make sure that you don't cross the path between ethical and unethical uses of AI, and you should be fine. And AI is definitely making life in the academic writing and publishing spheres a bit easier. On that thought, this is where you can reach me beyond the session. So this QR code is going to lead you to my LinkedIn page, where I write at least twice, thrice a week about different aspects of scientific writing and publishing. I also curate AI tools. As new AI tools come, I test them out. I curate them into these small 5-tool lists, which will help you know about these new tools and also how to use them, where to use them, and so on. I'm not good with calls. You saw that happen during the session because I'm traveling, talking to people just like you for most part of my week when I'm not on vacation at least. But I'm great with WhatsApp. So you can drop a message on WhatsApp and I'll get back to you by the end of the day. And if you're looking for any of the manuscript editing services or support services I talked about, you can drop a mail and someone from the team will take it up and get back to you. And this is a much more important QR code, which will lead you to a feedback form where I would like to personally hear your thoughts about the session, what could be added to the session, sessions coming up and so on. And also where we'll be able to reach you out with announcements for our upcoming longer form workshops, 5-day, 10-day hands-on workshops and so on. And as a thank you note for taking out the time to fill the form, we'll send you across a PDF version of the list of AI tools, the tools that I talked about, and also additional tools that you can use in your academic writing and publishing journey so that you don't have to go back to your handwritten notes that you took during the session. You'll have a ready-made list that you can refer back to anytime you want to have these tools ready with you. So on that note, thank you yet again. So I'm going to go back and start picking questions. I'll start with the ones in the chat box if there are any. Okay. So Pratiksha could not hear my voice, but I believe that was a local issue and the rest of you could hear it clear. Any questions? I'm not sure if you can unmute yourself. If not, you could just drop the question into the chat box and I'll be happy to take it up from there. Thank you, Bharati. Glad you enjoyed it.
हेलो बोल के Thank you, Dr. Sonia. I now request our chairperson, Dr. Prajakta Tote ma'am, to kindly share her insights on this topic. Thank you so much, Soumya ma'am, for your very insightful lecture, full with all the practical notes and everything, right from the literature review to summarizing the whole work. So the various tools which are applicable, you explained it very well. So thank you so much, and I hope everyone who is present in this hall will join your LinkedIn page and will be connected with you. Thank you so much, ma'am. So I enjoyed being here today. Hope to see you all on some other session. And thank you for having me here. Have a nice evening. Bye. With that, we conclude this session. I would like to remind everyone that after a short high tea break, we will be gathering for the valedictory function. So please join us after the break for the final segment of the workshop. Thank you. हाँ हो गया नाही सेशन छान होता पण कधी कधी बोर वाटत
का जो टेक्स्ट है वो भी कहीं भी मिसमैच नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको एक टूल बताया था, आपको ओवरलिप बताया था मैंने, लेटेक्स या जो भी, वो यूज करने पे फायदा ये होता है कि आपका कंटेंट कभी भी मिसमैच नहीं होता है। एक और टूल था जो पेड है, साइज के जो बताया था इन्होंने अभी, आप वो यूज कर सकते हो, लेकिन अगेन उसके लिए फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेके पे करना होगा। पूरा नहीं, पूरा पेपर जनरेट नहीं होता, वो कुछ पेजेस जनरेट करता है स्टार्टिंग के 12 में, लेकिन पूरा पेपर नहीं करेगा, एक स्ट्रक्चर बना के देगा स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस का। तो बेटर है कि आपने क्या ओवरलिप यूज करो, कंटेंट कभी मिसमैच नहीं होगा। और इजी पब्लिकेशन अगर चाहिए तो कॉन्फ्रेंस के थ्रू करिए जर्नल के लिए, जैसे स्प्रिंगर कॉन्फ्रेंस के थ्रू करोगे। अब उसमें भी इंडेक्सिंग में सुपर इंडेक्सिंग की गारंटी अब कोई नहीं ले रहा, सब लोग लिख देते हैं our conference will send the papers for indexing, but subject to quality check by the Springer or IEEE. तो जर्नल पब्लिकेशन बहुत टफ है, ऐसे रैंडमली पेपर पब्लिश नहीं होंगे जब तक कोई अलग डेट ना हो या फिर आपको लगता हो, लेकिन कॉन्फ्रेंस पेपर फोकस भी जा सकते हैं। बाकी अगर अच्छा है तो आप कर सकते हो। थैंक यू। सभी लोग क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो लेट मी स्टार्ट। 10 साल पहले क्या था? 10 साल पहले हम ये बोलते थे कि अगर ISBN में हमारा पेपर पब्लिकेशन हो गया तो इसका मतलब बेस्ट, ठीक है। बाद में फिर सिनेरियो ऐसा आया कि ISBN नहीं सफिशिएंट, अभी हमको क्या चाहिए? पीयर रिव्यू चाहिए, मतलब आपके पेपर को कितने लोगों ने रिव्यू किए है, वो खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आया इम्पैक्ट फैक्टर। भाई इम्पैक्ट फैक्टर मतलब क्या? उस जर्नल को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने स्कॉलर फॉलो कर रहे हैं, दैट इज व्हाट बेसिकली इम्पैक्ट फैक्टर। वो सिनेरियो चेंज हो गया। उसके बाद क्या आ गया? आपका I10 इंडेक्स, मतलब आपका खुद का पेपर, इसको बोलते हैं येट इंडेक्स। आपका खुद का पेपर को कितने लोगों ने फॉलो किया, मतलब उस जर्नल को कितने लोगों ने फॉलो किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर को कितने जनों ने फॉलो किया। मतलब ये सिनेरियो जो है ना, ये सब बेसिकली क्वालिटी के नए नए टूल्स आते जा रहे हैं। हर हर चीज में आपको नए नए टूल्स आते जाएंगे। तो अभी हम क्या बोलते हैं? ओपन में पेपर पब्लिश हो गया तो क्या मतलब? क्या? दैट इज द बेस्ट पेपर। Okay, so this is how the scenario is changing day by day. So what is exactly now Scopus? Scopus is what? The high standard journal. Again, it is what? Basically a high standard journal where your papers are going to be published. जहाँ पे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट सभी लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ पे पेपर पब्लिश कर रहे हैं। Now क्वेश्चन आ रहा है कि आपका पेपर सही में उतने क्वालिटी का है या नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दैट इज द बेसिक थिंग। सभी लोग पेपर पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन आपका खुद का पेपर उस क्वालिटी का है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको 2 टूल बताऊंगा। एक है पहला टाइप टेस्ट, जो अभी अजय सर ने आपको बताया। उसमें करना क्या रहता है? आपके पेपर को खाली अपलोड कर दो, आपके पेपर को वहां पे अपलोड कर दो। वहां पे बाय डिफॉल्ट 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके पेपर से रिलेटेड। मतलब आप ये पूछ सकते हो उस पेपर को कि आपके पेपर के खुद के पेपर के लिमिटेशन क्या है, खुद के पेपर का क्वालिटी इंडेक्स कितना है, खुद के पेपर को आप कितना मार्क देंगे। आप ये पूछ सकते हो कि भाई मेरे पेपर को आउट ऑफ 10 आप कितना मार्क दे रहे हो, किसको पूछ रहे हैं आप? टूल्स को। तो उसके थ्रू आप क्या मालूम कर सकते हो कि आपका उसका पेपर कहाँ तक, मतलब कौन से क्वालिटी तक आप उसको मेंटेन कर पा रहे हो। उससे आप मतलब आपको क्या आइडिया मिल रही है? उससे आपको ये आइडिया मिल रही है कि आपके पेपर को और कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। तो दैट यू कैन फॉलो द टाइपेस इंडेक्स। सेकंड टूल ChatGPT तो है आपके पास, ChatGPT है, जेमिनी है। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं? अपने पेपर को अपलोड कर दो और फिर आप क्वेश्चन पूछते रहो अपने पेपर से ही। मतलब आप क्या कर रहे हैं? अपने खुद के पेपर को ही रिव्यू कर रहे हैं, किसी और के थ्रू रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। खुद के थ्रू आप अपना खुद का पेपर रिव्यू करके देख सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। कुछ नहीं क्या करना, खाली आपके पेपर को अपलोड कर दो। इट मे बी इन PDF फॉर्मेट, मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट? PDF फॉर्मेट। पर अगर आपका पेपर वर्ड में है तो क्या करो? PDF में कन्वर्ट कर दो। इट्स वेरी सिंपल। सेव एज करते हैं, वर्ड में जाके सेव एज करो, वहां पे क्या करो? आप PDF में उसको सेव कर दो। सेव करने के बाद उसी फाइल को क्या करो? यहाँ पे अपलोड कर दो और फिर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना उससे रिलेटेड पूछते करो। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू चेक और टू रिव्यू योर ओन पेपर। क्लियर? So these are the 2 tools that you can follow in order to check the quality of your own paper. Okay. Now थ्री बिट का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ क्या है बेसिकली। ये मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा है? सर ने तो बहुत कुछ बताया था थ्री बिट के बारे में, लेकिन हमारे पास एक्सेस नहीं है कि उस टूल को हम यूज करें। हमने ये तो देख लिया कि वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, ये हमको समझ में आ गया, लेकिन वो एक्सेस करने का प्रूफ हमारे पास है क्या? नहीं है। बेसिकली वहां पे प्रॉब्लम सब आती है नाउन्स में,
फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एसबी किशोर, अब ये एसबी किशोर ये प्लेगरिज्म है या नहीं है? ऑब्वियसली आप बोलेंगे नहीं है, लेकिन टूल क्या करता है कि एसबी किशोर कहीं दिख गया उसको कहीं किसी जगह, तो उसको भी प्लेगरिज्म में वो डाल देता है। मतलब किसी के पेपर में अगर आ गया होगा एसबी किशोर, वो क्या हो गया बेसिकली प्लेगरिज्म में आ गया। लेकिन हमको तो मालूम ये नाउन है, लेकिन टूल को कोई समझ में नहीं आता, तो उसमें क्या किया गया, एक ऑप्शन दिया गया है इसको, मतलब जो टूल यूज कर रहा है उसको, वो क्या कर सकता है वहां पे जितने भी नाउन्स है वो वहां पे डाल सकता है। लेकिन ऑपरेटर क्या होता है हमारा इंग्लिश का, मुझे क्या मालूम कि आपके थीसिस में कौन कौन से नाउन्स है, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं कि आपके पेपर में कौन कौन से नाउन्स है। जैसे पहले कोई अगर मैनेजमेंट में काम कर रहा है या फाइनेंस में काम कर रहा है, वो बोल रहा है कि LIC ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ICICI, ऐसे बहुत सारे क्या है हमारे बैंक के नाम है। ऑल द पार्टिसिपेंट काइंडली ज्वाइन इमीडिएटली। तो ऐसे बहुत सारे नाउन्स है, तो हर एक सब्जेक्ट में नाउन क्या रहेंगे, वेरी होंगे। मतलब नाउन को मतलब प्री डिफाइंड तो है ही नहीं है, सबके इसमें सब्जेक्ट के क्या रहेंगे, नाउन अलग अलग रहेंगे। तो उसके पास भी ऑपरेटर के पास ऑप्शन क्या है, खाली वो 10 नाउन अपलोड कर सकता है। लेकिन अज्यूम करो कि अगर आपकी थीसिस में 100 के ऊपर ज्यादा नाउन होंगे तो फिर क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, प्लेगरिज्म दिखा देगा। ठीक है, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, सिंपल जो मैंने बताया उनको कि आपको मतलब जो रिसर्चर है उसको क्या मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए, जो नाउन की एक पूरी लीड बना ले उसे, जो भी यूज कर रहा है, और उसको क्या करेगा, वो अपलोड करेगा, थीसिस सबमिट कर देगा, तो उससे क्या हो जाएगा, जो नाउन वाले वर्ड है वो प्लेगरिज्म में नहीं है। तो उन्होंने वो मान्य किया कि भाई ऐसा ऑप्शन अभी उन्होंने किया नहीं है, तो हो सकता है कि वो आगे में देख। ठीक है, दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड आस्किंग दिस नाउन फाइल। क्लियर? तो ऑलवेज यूज कि अगर आप सिंपल तरीका है, आपको अगर आपका प्लेगरिज्म चेक करना है तो बहुत सारे टूल्स है, आप खुद का पेपर रिव्यू करके देख सकते हैं, खुद का पेपर का प्लेगरिज्म करके देख सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, स्मॉल एसईओ टूल, स्मॉल एसईओ टूल, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना 8 पेज का मतलब 1000 वर्ड इज इक्वल टू समवॉट अराउंड 5 to 6 पेज, जो आपका रिसर्च पेपर सफिशिएंट है। तो वहां पे आप जाइए, जाके क्या करेंगे, आप अपने पेपर को अपलोड कीजिए और प्लेगरिज्म चेक करिए, तो आपको बताएगा कुछ ना कुछ परसेंटेज है ना। अज्यूम करो प्लेगरिज्म का बहुत बार किया आंसर आता है कि भाई मैंने वहां पे चेक किया तो मुझे 10% आया, यहाँ पे मैं चेक करूँ तो 15% आ रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम एक सॉफ्टवेयर में अगर चेक करें तो 10% आ रहा है, दूसरे सॉफ्टवेयर में चेक करें तो कुछ कम ज्यादा हो रहा है, ऐसा व्हाट इज द बेसिक रीजन? अगर आपको याद होगा कि डिक्शनरी, इंग्लिश की डिक्शनरी सभी ने देखे हैं, एक कॉमन डिक्शनरी में सभी वर्ड आते हैं क्या, सभी डिक्शनरी में? क्यों? इसका मतलब सबका अपना अपना खुद का एक डेटाबेस है। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो प्लेगरिज्म वाली जो सॉफ्टवेयर है उनका सबका अपना खुद का क्या डेटाबेस है, खाली उतने ही जो क्या करते हैं वो चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ स्कोपस के पेपर या IEEE जनरल के पेपर, मैं अगर फ्री टूल्स में अगर यूज करके देखता हूँ तो वो मुझे कभी भी चेक नहीं करेगा कहाँ पे पेपर जो पब्लिश हुआ है, IEEE में जो पेपर पब्लिश हुए हैं उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कभी भी चेक नहीं होता है। ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे आप पेड वर्जन में कर रहे, फ्री वर्जन में ये सब मिलेगा नहीं आपको। इसलिए हो सकता है कि जब आप फ्री में चेक कर रहे हो तो आपको आ रहा है 10%, और जब पेड वर्जन में जब चेक हो रहा है तो पता चला कि आपका परसेंटेज कितना है, 20-25 आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे पूरे डेटाबेस में चेक कर रहा है। दैट वाज द बेसिक रीजन। तो इसलिए याद रखिए, ये मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, आपको बेसिकली आइडिया है कि आपका कितना परसेंटेज आ रहा है। अगर आपका 10% आ रहा है तो समझ आना कि हायर वर्जन में, पेड वर्जन में 15 to 20 के बीच में आएगा। अगर आपका पेड वर्जन मतलब फ्री वर्जन में अगर 1 or 2% होगा तो इसका मतलब कहाँ पे कितना आएगा, ऑलमोस्ट 8 to 9, 10। ओके, फ्री सॉफ्टवेयर में यूज करने का बेसिक सेकंड एडवांटेज क्या है कि आप जो पेपर पब्लिश कर रहे हो मतलब चेक कर रहे हो वो कहीं पे भी डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा है। डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा है, मतलब क्या है कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। अजूम बोलो आपने कहीं पे कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश किए, किसी जर्नल में पब्लिश किए, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो वेबसाइट में आ गया, कहीं ना कहीं वेबसाइट में आ गया। इसका मतलब क्या है, पब्लिक डोमेन में है। जब आप चेक करोगे तो क्या होगा, उस पेपर के अगेंस्ट में क्या होगा, आपका प्लेगरिज्म कितना आएगा, हाई परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो जो फ्री वाली जो टूल्स है वो कहीं पे भी पब्लिक डोमेन में सेव नहीं करते, वो सब कहाँ पे रहते हैं, आपके लोकल डेटा, मतलब कहीं पे भी सेव नहीं होता आपका डेटा। इसलिए आप क्या करते हैं, वहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो।
Don't ever try to check using the Urkun software. आप उर्कून पेपर के थ्रू अगर अपना पेपर चेक कर रहे हो या अपना थीसिस पेपर चेक कर रहे हो तो क्या होता है, पूरा का पूरा थीसिस आपका पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। और बाद में जब आप यूनिवर्सिटी में थीसिस सबमिट करोगे तो आपका परसेंटेज प्लेगरिज्म कितना आएगा? 100%। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर को हमको यूज नहीं करना है जो पब्लिक डोमेन में यूज रखता है डेटा को। हमको यूज करना है जो लोकल में या फिर कहीं भी सेव नहीं होता, वहीं पे हमको चेक करना है। क्लियर? यस, एनी मोर क्वेश्चन? प्लीज, बिल्कुल ओपन क्वेश्चन है। आपको जो जो टूल पूछे पूछते चलो। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए, एनालिसिस के लिए जो जो टूल पूछे पूछते चलो। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए मैंने दो टूल बताया आपको। ठीक है, गूगल स्कॉलर तो है ही आपके पास। सिमेंटिक स्कॉलर बताया मैंने। सिमेंटिक स्कॉलर में क्या है, आपको एक्यूरेट डेटा मिल जाता है। एक्यूरेट आपका पेपर, आपने जो टॉपिक का नाम दिया उसी से रिलेटेड आपको पूरे पेपर मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत बार ये होता है कि मैंने जो टॉपिक पे काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड पेपर में कैसे आइडेंटिफाई करूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे टॉपिक का नाम है XYZ। अब मुझे XYZ से रिलेटेड मुझे क्या चाहिए, जिन जिन लोगों ने XYZ पे काम किया है उससे रिलेटेड मुझे पेपर चाहिए। तो ये मैं कैसे ढूंढूंगा? और मुझे ये भी मालूम है कि मेरे जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो 5 साल से पुराना नहीं रहना है। ऐसा क्यों? 5 साल क्यों? व्हाट इज द बेसिक, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस 5 फिगर? 10 साल या 6 साल 8 साल ऐसा क्यों नहीं है? मतलब रीजन क्या होता है? हम जल्दी ना करूँ, रूल ऑफ थंब ये बोलते हैं कि 5 साल से पुराना नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 3 साल सबमिशन के लिए, 2 साल अवार्ड के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो 5 साल के बाद इसका मतलब क्या हो गया? वो जो भी आपने कॉन्सेप्ट बता रहे हो 5 साल से पुराना होगा तो इसका मतलब आउटडेटेड हो गया है। ठीक है, तो दैट इज द रूल। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो पेपर पढ़ना चाहते हैं वो 5 साल से पुराना ना हो? तो उसके लिए आप कौन सा टूल यूज कर सकते हैं? लिट मैप, जो मैडम ने बताया आपको। लिट मैप नाम का एक टूल बताया मैडम ने, जहाँ पे अपने टॉपिक का नाम दिखा दो और वो पूरे लिस्ट ऑफ पेपर बता देगा आपके टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पेपर थे वो सब बता देगा। साथ में ये भी बताएगा कि वो कौन कौन से ईयर में पब्लिश हुए, कौन कौन से ईयर में पब्लिश हुए, ये भी आपको बता देगा। तो इससे आपको क्या मिल रही है? एक आइडिया मिल रही है कि अभी अपने को कौन से पेपर पे काम करना, कौन से पेपर को इग्नोर करना। तो दैट इज व्हाट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल दैट आई कैन से, लिट मैप, जो आपको पूरा बताएगा, ग्राफिकली बता रहा है आपको पूरा। ठीक है, साथ में वो ये भी बता रहा है कि उसके साइटेशन कितने हैं, मतलब उस पेपर के लिए कितने लोगों ने साइट किए। साइट किए का मतलब क्या बेसिकली? एनीवन? साइट किया मतलब खाली पढ़े नहीं, साइट किया मतलब उस पेपर के कुछ कंटेंट हमने हमारे पेपर में यूज किए। दैट इज व्हाट साइटेशन। ओके, तो उस पेपर को कितने लोगों ने साइट किए ये भी हमको वहां से लिट मैप टूल से मालूम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए भी आप क्या कर सकते हो, उस टूल को यूज कर सकते हो। क्लियर? एनी मोर डाउट? जो भी आया दिमाग में, जो आया रिलेटेड टू सबमिशन, रिलेटेड टू ये वो जो भी पूछना पूछते करो, बिल्कुल ओपन है। कितने पेपर पब्लिश होना चाहिए मालूम है? कितने पेपर पब्लिश करना है आपको? 2 पेपर पब्लिश करना है। कितने कॉन्फ्रेंस अटेंड करने हैं? तो कितने जगह पेपर पब्लिश करने हैं? प्रेजेंट करना है, पेपर को प्रेजेंट करना है। तो अटेंडेंस और प्रेजेंट सेम नहीं है। हाँ, आप बोलेंगे भाई प्रेजेंट किया तो क्या होगा? अटेंडेंस तो रहा ही होगा। हमारे लिए तो वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड नहीं है वो। यूनिवर्सिटी बोलती है आपने प्रेजेंट किया, क्या होता है? अटेंड है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो इसलिए आपको प्रेजेंटेशन के भी 2 अलग रखने हैं और अटेंडेंस के भी आपको 2 अलग रखने हैं। ओके, अलग अटेंडेंस का सर्टिफिकेट अलग लेना है, प्रेजेंटेशन का सर्टिफिकेट मतलब आपको कोई भी एक ही यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज हम सर्टिफिकेट देंगे आपको, तो हो सकता है कि जो प्रेजेंट कर रहे हैं उनको प्रेजेंटेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जिन्होंने प्रेजेंटेशन का नहीं किया होगा तो उनको क्या मिलेगा? खाली अटेंडेंस का सर्टिफिकेट मिलेगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है। गोंडवाना यूनिवर्सिटी अपने साथ है तो वैलिड रहेगा ही। यस, एनी मोर? परफेक्ट। यस, चैप्टराइजेशन जब भी होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट के टाइम पे, गाइड ऐसा बोलते हैं कि जब भी आप सबमिट करते हो अपना आपका डेटा तो आप प्लेगरिज्म निकाल के लाइए सर।
तो प्लेगरिज्म निकाल के जब सबमिट करते हैं और एट दी एंड वो पूरा अपना बंच से सारे जब उसको सबमिट करेंगे उसका फिर से प्लेगरिज्म निकालना पड़ेगा क्या सर? तो फिर उर्दू में अगर करेंगे तो पूरा 100% प्लेगरिज्म शो करेगा ना। अपनी यूनिवर्सिटी का गुरुद्वारा यूनिवर्सिटी का फिर 2 एप्लीकेशन में से ही करना है ऐसा बताया थे गाइड बिल्कुल और एक तो अभी एसपी कॉलेज से उर्कुल से ही किया जाता है शायद। डन हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो एक मिनट बता देता हूँ। तो चैप्टर वाइज करना है क्या प्लेगरिज्म, ठीक है। अब गाइड जो कहता है तो ऑब्वियसली गाइड को हम बिल्कुल ना बोल सकते क्या? नो, तब हो गया। तो गाइड ने अगर आपको बोला है कि चेक करना है तो बिल्कुल चेक करना है, लेकिन याद रखना कि उर्दू में मत चेक करना है, क्योंकि उर्दू में जब चेक करेंगे तो क्या रहेगा, वो पब्लिक डोमेन में जाएगा, और पब्लिक डोमेन में अगर चला गया तो फिर क्या होगा, आपका 100% एग्जाम आएगा जब आप पूरी फाइनल थीसिस सबमिट करेंगे। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी उर्दू छोड़ के कोई भी टूल ऐसा यूज करो जो पब्लिक डोमेन में सेव नहीं कर रहा है। पब्लिक डोमेन में मतलब क्या, वो क्लाउड पे सेव हो रहा है कहीं ना कहीं। When I'm saying public domain, it is what? It is stored somewhere in a cloud. जिसका डेटा हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो वहां पे आपको निकाल। ओके सर 2.5 साल में प्री सबमिशन डाल सकते हैं क्या? या गुड। आफ्टर देखिए वैलिड है 3 साल का, आपका क्या है पीएचडी का ड्यूरेशन है, तो आफ्टर 27 मंथ, ठीक है, यू आर एलिजिबल टू सबमिट प्रोवाइड टू द परमिशन फ्रॉम द वीसी। वीसी अगर आपको परमिशन देता है 27 महीने के बाद सबमिट करने का, अदरवाइज कितना लगता है आप लोग को, 36 महीने लगते हैं, ठीक है। लेकिन आपका वर्क बहुत हाई क्वालिटी का है, सब कुछ है, तो वीसी के परमिशन के थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं। लोग पूरे प्रोसेस में 5-6 महीने लग जाते हैं, तो तब तक आपका क्या आ जाता है, 3 साल खत्म हो जाते हैं, तो आप सबमिट कर सकते हो। सर क्वेश्चन ऑफ प्लेगरिज्म के लिए जैसे 10% एग्जेम्पशन दिया है, 10% तक चाहिए। एज अ लॉ स्टूडेंट मैं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू कुछ प्रोविजन है, कुछ लॉ है जो यूनिवर्सल है, अगर कुछ डेफिनेशन वहाँ पे एक्सप्लेन करें या कुछ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट वहाँ पे एक्सप्रेस करें, तो ऑन दैट बेसिस वो जजमेंट पूरा मेंशन करेंगे तो प्लेगरिज्म में ऑलरेडी शो हो जाएगा। तो 10% के जो लिमिटेशन दिया है वो तो काफी बढ़ जाएगा, तो फिर वो एविडेंस कैसे करेंगे? तो वही पे हमको क्या है, साइटेशन का कॉन्सेप्ट। साइटेशन का मतलब क्या है, उसको प्रॉपर्ली साइट करना है। आपको क्या करना है, एज इट इज अगर आप उठा रहे होंगे, एज इट इज कंटेंट, कुछ भी चेंज नहीं किया आपने, तो उसको डबल कोट में लिख दो। ओके, मतलब जो भी डेफिनेशन या फिर जो कुछ लॉ प्रोविजन है स्टार्टिंग में और एंडिंग में उसको डबल कोट में डाल दो, ठीक है। अगर आपने डिलीवरी का किसी अगर चेक किया होगा तो वहां पे आता है कोटेड करके, रिपोर्ट में लिख के आता है कि आपका कोटेड डेटा कितना है। तो अगर आपको लगता होगा कि वो एज इट इज है तो आप उसको डबल कोट में डाल दो, लेकिन डबल कोट में कितना डालेंगे, तो आप तो पूरा का पूरा थीसिस भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी अलाउड नहीं है, प्रोविजंस के बेस में काफी बड़ा रहेगा, तो पता है, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा तो डाल नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करना है, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन को क्या करें आप बिल्कुल प्रॉपर कोड करके एंड करेंगे उसको, ठीक है। तो जनरली 14 वर्ड का लिमिट रहता है यूजीसी का। मतलब हम प्लेगरिज्म मतलब कैसे पहचान सकते हैं ये प्लेगरिज्म है। अज्यूम करो कि सपोज मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया कि भाई ये सेशन करेगा था, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं क्या प्रोबेबिलिटी 1-2% रहेगा कि सबका कॉमन रहेगा, सबके आंसर क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो इसका मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता कि भाई उन्होंने जो लिखा मेरे दिमाग में वो इसी से आया। ऐसा हो सकता है क्या कभी? अगर मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ तो 100% यूनिक ही रहेगा सबका कंटेंट। तो लेकिन डेफिनेशन हो गए वो क्या हो गए, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो रिफॉर्म चेंज नहीं कर सकते। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, साइट एक टेक्निक है, साइट करो प्रॉपर्ली। साइट कैसे करना ये नहीं मालूम तो उसको सिंपली डबल कोट में डाल दो, खत्म। सिंपली डबल कोट डालो, कुछ भी मत करो, किसने बोला क्या बोला, सिंपली उसको डबल कोट में डाल दो। क्लियर? दैट इज द वन वे। एज इट इज सेम टेक्निक डबल कोट में डाल दो। हाँ, प्लेगरिज्म से रिलेटेड आपने बताया कि डिलीवरी और एक हो गया, तो अभी जो हम लोग प्लेगरिज्म करते हैं तो टर्निटी से करते हैं जो कॉलेज से पे किया जाता है, तो सबमिशन के टाइम पे वो एक्सेप्टेबल है या नहीं? 10% के बिलो होगा तो यूनिट में एक्सेप्ट करिए, आप किसी से भी चेक करो, कोई इशू नहीं है। और सर एक सबमिशन से रिलेटेड बात पूछना था कि
जैसे 4.5 years कंप्लीट हो गया है बट सबमिशन के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो कब तक ये देखिए आपको बाय डिफॉल्ट 5 साल तक का लिमिट है। 5 साल से अगर आपका ज्यादा आ रहा हो तो आपको परमिशन देना पड़ेगा। 3 महीने पहले 3 महीने पहले आप अपने यूनिवर्सिटी में अपलोड करेंगे, अपने रिसर्च सेंटर में लेटर सबमिट करेंगे रिसर्च हेड के नाम से कि मेरा वर्क कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे एक्सटेंशन किया जाए, तो आप यूनिवर्सिटी में फॉलो मतलब भेजा जाएगा और आपको 1 साल तक का एक्सटेंशन मिलता है। ओके याद है सर कुछ बोलना चाहते पर्सनली पॉइंट से याद आ गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बेसिकली जैसे मान लो आपने रिसर्च पेपर लिखा और उसके बाद हमें लगता है यार कहीं साइटेशन का प्रॉब्लम हो रहा है या कहीं हमारा टेक्निकल का इशू है या पेपर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, सर ने बताया कि आप चेक कर लो, सर ने साइंस पे बताया, आप और भी कुछ देख सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपका कंटेंट मैच कर रहा है, मतलब इसके आपके ऑब्जेक्टिव से या एम से, तो मैं ये चाहूंगा कि सारे लोग अपने पेपर प्लीज पुट करिए जर्नल में। हाँ, इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एडिटर रिजेक्ट, यानी कि पहले लेवल का रिजेक्ट। 3 लोगों ने बोल दिया एडिटर रिजेक्ट, मैं समझ जाना कि पेपर कोई काम नहीं है, मतलब अपने बंदे थोड़ा कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि लोग सबसे ज्यादा सीखते हैं अपने एक छोटे अटेम्प्ट से। जितने बार भी रिजेक्शन आएगा उतने बार आपको उसके बहुत अच्छे से पढ़ के लोग रिव्यू देंगे। एक्चुअली पेपर सुधरता तब ज्यादा अच्छे से जब नीचे हमें कोई बताता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि कितने अच्छे से रिव्यू होगा, लेकिन जिस जर्नल को भेज रहे हो और वो अच्छा जर्नल है तो दे विल गिव बेटर रिव्यूज। लंबे लंबे 2-3 पेज के रिव्यू आते हैं। और अगर आप लोगों ने सही में आपके पेपर में थोड़ा भी दम है तो लोग रिव्यू लिखेंगे, अदरवाइज एडिटर आपका सीधा रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आपको रिव्यू आया, इसका मतलब आप अपने आप में पॉजिटिविटी लाइए कि आपका पेपर सही में अच्छा है। सिर्फ उसे पॉलिश करना है, उनके रिव्यू के कंटेंट को तुरंत लीजिए और फिर उसे मॉडिफाई करके रिसबमिट कीजिए। ऐसे केसेस में उनके एक्सेप्टेंस रेट 50% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब मान लो पहले रिजेक्ट किया, रिजेक्ट मींस विद सब सजेशन बोला है तो नेक्स्ट। कई बार क्या होता है कि आपने चॉइस करते वक्त अच्छे से एम नहीं पढ़ा, ऑब्जेक्टिव आपको पता नहीं और आपने सबमिट कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर मान लो अगर वो रिव्यूअर पढ़ लिया या एडिटर ने पढ़ लिया तो बताता है कि हमारे जर्नल में ये थोड़ा रेलेवेंस कम है, तो वो आपको रेकमेंड करेगा अदर जर्नल। अगर वो सेम प्लेटफॉर्म पे, जैसे पेजर है सेम प्लेटफॉर्म है, पब्लिशिंग हाउस है बहुत बड़ा, वो क्या करेगा अपने रिलेवेंट जर्नल को लिंक देगा और वो आपका पेपर डायरेक्ट उनके सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब आपको जो आपने प्रोसेस की पूरा अपलोड की कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो रेकमेंड हो जाएगा। और रिकमेंडेशन में भी मोस्टली 50 से 60% चांसेस एक्सेप्टेंस के आते हैं। तो एक पॉजिटिविटी बोलना ये है कि निराश होने के बजाय अपने पेपर को सबमिट करने की कोशिश कीजिए। और एक चीज है, एक साथ मल्टीपल जगह पे सेम पब्लिशिंग हाउस में मत करिए, वो अनएथिकल प्रैक्टिस है। अगर किसी ने आइडेंटिफाई किया तो वो एक तरह की रेड वार्निंग ऑरेंज वार्निंग देके बोलते हैं कि इट इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है तो आप किसी अदर पब्लिशिंग ट्राई कर सकते हो, लेकिन देखिए कि कैसा हो रहा है। और कॉन्फ्रेंस तो पक्का करिए, पब्लिश कॉन्फ्रेंस में पेपर डालिए, इसका फायदा काफी अच्छा है और आपको आपके पेपर इंडेक्सिंग के चांसेस मिल जाते हैं। अब इंडेक्सिंग पूछी करना ऑलरेडी बता दिया, तो थैंक यू। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग मराठी वाले हैं, उनको भी बहुत सारे डाउट्स हैं, मुझे मालूम है, ठीक है। तो जो मराठी सब्जेक्ट पे है, मतलब हिस्ट्री होगा, भूगोल होगा, ज्योग्राफी होगा, प्लेन मराठी होगा, तो देखिए आपको समरी सबमिट करना रहता है इंग्लिश में। अब सवाल यह था कि मराठियों में है तो इंग्लिश में कैसे करेंगे काम, इतना बड़ा काम, ठीक है। सिंपल टूल है ChatGPT, ठीक है। अपने PDF फाइल को ChatGPT में अपलोड कर दो, वहां पे लिखो सिंपली ट्रांसलेट इन मराठी, पूरा मराठी में आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा सिंपल। खाली एक ही वर्ड लिखना है, ट्रांसलेट इन मराठी। अपने फाइल को अपलोड कर दो इंग्लिश में, PDF फाइल को, और बोलो ट्रांसलेट इन मराठी, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, कन्वर्शन करते समय जो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ, इसलिए एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट मत रहो। ऐसा क्या टूल है, ठीक है, तो इसको एज इट इज बिल्कुल यूज मत करो। थैंक यू, प्लीज तो इसलिए उसको एज इट इज बिल्कुल यूज मत करो। बस एक बार
ट्रांसलेट कर लिया, उसके बाद एक बार खुद पढ़ के देख लो कि प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है. दैट इज अ यूजफुल टूल फॉर ऑल दोज पीपल हु आर बिलोंग फ्रॉम नॉन इंग्लिश, तो उनके लिए ये टूल है, क्योंकि हम समरी सबमिट करना है हमको इंग्लिश लैंग्वेज में. क्यों? क्योंकि हमारी थीसिस कहाँ जा रही है? आउट ऑफ अदर स्टेट. क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी का रूल है कि 3 जो है आपके 3 नाम हमको कहाँ से देने पड़ते हैं? महाराष्ट्र से, और 7 नाम देने पड़ते हैं हमको आउट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, तो ये 3 में से किसी भी एक जन के पास जाएगा, मतलब स्टेट में जो है 3 में से किसी एक के पास जाएगा, और बाकी के 2 कहाँ जा रहे हैं? आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं. अब आउट ऑफ स्टेट जाते समय फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर ने एग्जाम्पल बताए थे मॉर्निंग में कि मराठी का जो थीसिस है वो कहाँ होगा? साउथ इंडिया में. तो उनको बिल्कुल आती नहीं है. तो ऐसी केसेस में क्या, तो इसलिए हमको क्या चाहिए? इंग्लिश में चाहिए. तो इंग्लिश में तो हमको उतनी है ही नहीं हमारी इंग्लिश, तो हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको. ट्रांसलेट करके हम क्या करेंगे? उसको सबमिट करेंगे. Yeah, so that is one small tool that you can use. ChatGPT is really good tool. लेकिन अभी ऐसे भी आ रहे हैं टूल, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ रहा है आपको, डिस्क्लेमर लिखना पड़ रहा है कि मैं ChatGPT से ये नहीं बनाया है. देखिए टूल आ गए, टूल के साथ साथ हमको कहीं भी मेंशन भी करना पड़ता है कि डिस्क्लेमर कि हमने ChatGPT का यूज नहीं किया है. ओके, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं, मतलब लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं. या एनी मोर? Okay, I'm always available in SP College. Whenever you have a doubt, you can ask me. Thank you. The moment where once we start the valedictory function, we're just declaring the result of the paper, what's the presentation actually? Yeah.
Good afternoon, everyone. Respected dignitaries, I would like to request all the dignitaries to please take their seats on the dais. President of today's valedictory program, Dr. Anil Bordawal sir, ex-president of Maharashtra State Library Association, Government of Maharashtra. Chief guest, Shri Rajeshwar Surawar sir, Secretary, Shri Mata Kanyaka Seva Sansthan, Chandrapur. Online, we are having guest Dr. Abha Khandelwal, founder of AACST Nagpur, organizer and convener Dr. Dinesh Gabne sir, principal of Rajiv Gandhi College of Management, Mumbai, organizer and convener Shri Santosh Shinde sir, officiating principal, late Dr. Sachidanand Mungantiwar Knight College, convener Dr. S.B. Kishore sir, president AACST. All the dear participants, as we approach the conclusion of this enlightening and productive day, I would like to extend a heartfelt welcome to all who have been an integral part of this one-day national workshop on innovative research methodology and plagiarism prevention techniques. It has been an enriching experience. And before we officially close, we have a few more memorable moments to share. To begin the valedictory ceremony, let's welcome our guest by presenting a bouquet. I request Manish Deshpande sir to welcome the president of today's program, Dr. Anil Borgamwal sir, with bouquet. Thank you, sir. I request Nishan Shastakar sir to please welcome Shri Rajeshwar Surawar sir. We extend a warm welcome to Dr. Abha Khandelwal and Dr. Dinesh Gabne with heartfelt word of appreciation. I request Sandeep Gudeliwar sir to welcome Shri Santosh Shinde sir. Thank you, sir. Lastly, I request Divakar Chaudhary sir to welcome Dr. S.B. Kishore sir. Thank you, sir. I request Dr. Dinesh Gabne sir, Principal of Rajiv Gandhi College of Management, Mumbai, to deliver the valedictory remarks. He has been a visionary leader and an inspiring educator, and we are honored to have him with us today. Over to you, sir. Thank you so much. Yeah. Okay. Can you hear me? Hello? Can you hear me? Can you hear me? I'm audible? Okay, thank you. Very good evening, esteemed guests, faculty members, and fellow participants. As we gather here to conclude this enriching workshop on innovative research methodologies and plagiarism prevention techniques, I feel honored to share a few thoughts on our journey together this workshop today. Firstly, I would like to extend my heartfelt gratitude to our facilitators and speakers who have guided us through a wealth of knowledge. Your insights have not only enlightened us, but have also sparked passion for ethical research practices and innovative methodologies. Throughout this workshop, we have explored various innovative research methodologies that challenge traditional approaches and encourage creativity in our work. From mixed methods to participatory action research, we have learned how to harness these techniques
to not only enhance the quality of our research, but also to ensure that our findings are relevant and impactful. Equally important has been our deep dive into plagiarism prevention techniques. In an era where information is readily accessible, understanding the ethical implications of our research is crucial. We have discussed the importance of originality, proper citation practices, and the use of plagiarism detection tools. The discussions have underscored a very vital truth, that is, integrity is the cornerstone of credible research. As we move forward, I urge each one of you to take the knowledge and skills we have acquired here and apply them in your respective fields. Embrace innovation and uphold ethical methods, standards in your research endeavors. Remember, the impact of your work extend beyond academia. It shapes societies, influences policies, and can even change lives. Let also commit to fostering a culture of collaboration and support as we continue our research journey. Let's share our experiences, mentor one another, and cultivate a community that value creativity and ethical practices. In closing, I want to thank each one of you for your engagement and enthusiasm throughout this workshop. Your diverse perspectives and experiences have enriched our discussions and made these experiences truly remarkable and memorable. Let's carry forward the lessons we have learned and inspired others in our pursuit of knowledge. Thank you, and I wish all the best in your future research endeavors. Thank you so much for this time. Thank you so much, sir, for your insightful and motivating words. Your remarks beautifully capture the essence of today's workshop and inspire us to implement the lessons learned. Next, it's my privilege to welcome and invite honorable guest, Dr. Abha Khandelwal ma'am, founder of AACST Nagpur, to share her valuable thoughts with us. She is a pioneering figure in the academic community, and we are privileged to have her presence elevate with this occasion. Over to you, ma'am. Thank you, Sheetal. I will try to. I have some throat problem. Still, I will try my level best because I want to. So, namaste, everyone. Chief guest, Dr. Kavli, Dr. Anil, Dr. Dinesh Gabane, convener, Dr. S.B. Kishore, and entire organizing committee. As the proverb says, great things are done by a series of small things brought together. This workshop is a reflection of that, with each speaker contributing their knowledge and insights, making it a valuable experience for everyone involved. The first session was by Dr. Ajay on innovative research methodologies was truly eye-opening. He highlighted the critical importance of managing and saving vast amount of research data, which often goes wasted or lost if not handled properly. His approach was clear, relatable, and grounded, guiding through research data management, leading to prevent confusion and maintain clarity in research, which is a must. Next, we had an impactful session on plagiarism prevention technique by Drillbit, an AI-based startup that has gained significant ground in just 7 years. As he narrated, their role in academic integrity, especially with various universities and AICTE, adopting their tools is commendable. However, as we know,
plagiarism detection can sometimes be a double-edged sword. While protecting the truth, it occasionally creates hurdles for researchers who face challenges with common terms and definitions has been discussed again and again. They are being flagged by such tools. So wisdom is knowing what to overlook. I request DILBIT to further enhance users training, which is also an integral part of our organization. Further, they should try to further enhance users training, ensuring their tools are both fair and precise, especially in cases where standard terms are mistakenly marked as plagiarism. Dr. Soma Viyarani's session on AI tools for scientific writing and publishing truly opened a new horizons. Her work in developing a tool to assist researchers is revolutionary. We know one saying we used to say till now, the pen is mightier than the sword. But from today's session, workshop onwards, I would like to say AI tool is mightier in helping researchers writing and publishing their findings more efficiently and with clarity. This is very important for few who are not very good at English, but they carry on deep knowledge otherwise in their own subject. So taking a help of such kind of tools will be a boon for such participants, for such researchers. You have certainly set the stage for the future of academic writing. Dr. Rani, you are certainly setting the bar high. And finally, I cannot close without acknowledging Dr. S.B. Kishore, whose dynamic guidance in making all to understand the PhD process has been invaluable. Dr. Kishore's mentorship has undoubtedly helped many on their PhD journeys. In conclusion, I extend my sincere thanks once again to convener and organizers to invite me and also bearing me with less, rather with very low voice clarity. This workshop has truly empowered us, and I believe we are leaving today better equipped to advance our research with integrity and innovation. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. In spite of your health is not good, your words are really inspiring and insightful for all of us. Your message truly highlights the importance of innovation and integration in research. Thank you very much, ma'am. It's now time to recognize the efforts and achievements of the participants in the poster and paper presentation. We will now proceed with the prize distribution. I request Dr. Borgambar sir to please give away the prizes. The first prize goes to participants are there. Okay. So yes, more than 28 papers and posters were we received that, and we have just get 3 prizes. So the first prize goes to Akhil Chattamgiri in the management field. He is doing investment banking from IIM Ranchi. Akhil. Second prize goes to Payal Madhukar, Environmental Studies. I request Suravan sir to please give away the prize.
And third prize goes to Dayanand Dahipaye sir in sociology. Congratulations to all the winners. We are proud to have such talented individuals as a part of this workshop. Next, we take a moment to appreciate the tireless efforts of the organizing committee members who worked behind the scenes to make today's event a grand success. Now I request Dr. Anil Borgamwar sir to please felicitate the visionary leader behind the success of this program, Shri Santosh Shinde sir, by presenting a token of appreciation. Thank you, sir. I request Shri Rajeshwar Surawar sir to please felicitate Dr. S.B. Kishore sir, President of ASCST, All Association of Computer Science Teachers. Dr. Kishore sir is a driving force and a support system to this entire workshop. He is a visionary leader for his forward-thinking approach and leadership. His commitment to the field of computer science is appreciable. Now I request Borgamwal sir again to please felicitate Assistant Professor Meghraj Jogi sir from Gondwana University, Gadchiroli. He is also convener of this program. I request Surawar sir to please felicitate Ms. Rajeshwari Dayalwal ma'am. I request Borgamwal sir to please felicitate Ms. Shweta Salame ma'am. I request Surawar sir to please felicitate Ms. Vaishnavi Halkare ma'am. Let me interrupt. Today's workshop has never been a success if Sheetal madam not conclude the front of the program. Okay, she has done very great job for us. Okay, and she has bound us throughout the day. So I request Surawar sir and Burgamar sir, please felicitate Sheetal madam with a flower of the can moment.
Thank you and congratulations once again to the entire organizing team for your dedication and hard work. We now come to a special moment, the felicitation of President of today's program, Dr. Anil Borgamwal sir, ex-President of Maharashtra State Library Association, Government of Maharashtra. I request Shri Santosh Shinde sir and Dr. S.B. Kishore sir to please felicitate Dr. Borgamwal sir. Thank you. And now I request sir to please deliver the presidential speech. या राष्ट्रीय कार्यशाळेच्या समारोपीय कार्यक्रमाला उपस्थित कर्णकार सेवा समितीचे सन्माननीय सचिव आणि ज्या सभागृहात आपण बसलेले आहात त्या संस्थेचे माझे सहकारी सन्माननीय सर पुरावारजी, माझे गुरुवर्य डॉक्टर किशोर सर आणि या डॉक्टर सच्चिदानंद मुनगंटीवार रात्रबाई महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय शिंदे सर, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली, सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपूर, सच्चिदानंद मुनगंटीवार रात्रबाई महाविद्यालय चंद्रपूर आणि नवी मुंबईच्या महाविद्यालयाच्या वतीनं एक दिवसाची ही जी राष्ट्रीय कार्यशाळा घेतली, या राष्ट्रीय कार्यशाळेमध्ये आपण सगळे उपस्थित झालात. मी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी वाचनालयाच्या वतीनं या सभागृहात आपल्या हृदयापासून मनापासून अंतःकरणातून स्वागत करतो. संस्थेचे 2 पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. याही पुढे राष्ट्रीय कार्यशाळा जेव्हा केव्हा होईल तेव्हा आम्हाला आपली सेवा करण्याची संधी द्याल अशी अपेक्षा करतो. आदरणीय सुरावरजी, मला सांगताना आनंद होतो की 1 वर्षाच्या पूर्वी डॉक्टर सच्चिदानंद मुनगंटीवार रात्रबाई महाविद्यालय चंद्रपूर शहरात सुरू झाले, पण या 1 वर्षाच्या कालावधीमध्ये या संस्थेने अनेक राष्ट्रीय स्तरावरच्या कार्यशाळा घेण्याचा एक उपक्रम सुरू केलेला आहे. जुलै महिन्यामध्ये याच सभागृहामध्ये ग्रंथालयाची राष्ट्रीय कार्यशाळा झाली आणि 2-3 महिन्याच्या अंतराने पुन्हा एका अत्यंत महत्वाच्या टॉपिक वरची एक राष्ट्रीय कार्यशाळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे. सरदार पटेल महाविद्यालय आणि नागपूर विद्यापीठ आणि आता गोंडवाना विद्यापीठ, मी अभिमानाने सांगू शकतो त्या महाविद्यालयाचा माजी विद्यार्थी म्हणून की विद्यापीठात सर्वाधिक सांस्कृतिक उपक्रम जर कोणत्या महाविद्यालयात होत असेल तर ते सरदार पटेल महाविद्यालयामध्ये होतात. आणि त्याच धर्तीवर त्यांच्या मुशीमध्ये त्यांच्या सहवासामध्ये तयार झालेले त्यांचे विद्यार्थी सच्चिदानंद मुनगंटीवार नाईक कॉलेजला प्राचार्य आहेत. ही गुरु शिष्याची जोडी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या नव्हे महाराष्ट्राच्या या सांस्कृतिक चळवळीमध्ये अनेक उपक्रम पुढे घेतील असा मला विश्वास. मी एवढा विश्वासाने याकरता सांगतोय की 2 वर्कशॉप या सभागृहात झालेत. अत्यंत शिस्तबद्ध आयोजन शिंदे सर आपल्या संपूर्ण टीमने केलेलं आहे. सरदार पटेल महाविद्यालय, गोंडवाना विद्यापीठ आणि डॉक्टर मुनगंटीवार रात्रबाई महाविद्यालय या सगळ्यांचं, त्यांच्या संपूर्ण टीमचं मी अंतःकरणातून मनापासून अभिनंदन करतो. आणि येणाऱ्या काळामध्ये उत्तमोत्तम कार्यशाळा, आज संपूर्ण दिवसभर मला या ठिकाणी राहण्याची काही संधी मिळाली नाही, पण मला सांगण्यात आलं की 40 विद्यार्थ्यांनी पेपर प्रेझेंटेशन केलं. 240 विद्यार्थ्यांची या ठिकाणी उपस्थिती आहे. आणि केवळ ही कार्यशाळा या ठिकाणी केवळ कागदापुरती मर्यादित न राहता
मला विश्वास आहे की शिंदे सर त्याचा फॉलोअप सुद्धा घेतील आणि येणाऱ्या काळामध्ये या सभागृह उत्तम कार्यशाळा होतील असा मी विश्वासानं सांगतो. या ठिकाणी मला निमंत्रित केलं, कुठल्या पार्श्वभूमीवर केलं मला माहिती नाही, कारण मी ग्रंथालय चळवळीतला कार्यकर्ता, या महाविद्यालयाचा विद्यार्थी आणि यांचा स्नेही, पण तरी आपण माझा या ठिकाणी एक कार्यक्रमाचा अध्यक्ष म्हणून मला निमंत्रित केलं, माझा सन्मान केला. मी सदैव आपल्या ऋणात राहील. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना मनापासून शुभकामना देतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये जेव्हा केव्हा नॅशनल सेमिनार घ्यायची असेल तर मी सुराळ सरांच्या विश्वासानं सांगतो, त्यांच्या परवानगीनं सांगतो की डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी वाचनालयाचं सभागृह सदैव आपल्या स्वागतासाठी तत्पर राहील. पुन्हा एकदा आपल्या अभ्यासक्रमाचे मनापासून आभार. धन्यवाद. Thank you, sir, for your powerful and inspiring words. Your words of wisdom are the perfect way to bring the workshop to a close. Finally, to conclude this wonderful event, I would now like to invite Ms. Rajeshwari Dayalwal ma'am to deliver the vote of thanks and express our gratitude to everyone who makes the day a success. Thank you, ma'am. Good evening, respected dignitaries, intimate guests, faculty members, dear students and researchers, participants. In our honor and privilege to extend a vote of thanks for the valedictory function of the today's one national workshop on innovative research methodologies and plagiarism prevention techniques. This workshop has been enriched experience for everyone involved. We are grateful for the collective efforts that made it possible. Firstly, I would like to express our sincere gratitude to Dr. Anil Borgamwar sir, ex-president of Maharashtra State Library Association, for his inspiring and enlightening speech. For your words have truly highlighted the importance and innovation and integrity in a research motivation all of us to strive for higher academic standards. Our heartfelt thanks to our chief guest, Dr. Shriram Avade sir. Special thanks to Shri Rajeshwar Surawal sir, Secretary of Mata Kanyaka Seva Sanstha Chandrapur. Your guidance has added immense value to the workshop. We are deeply appreciate your support. For a gracing, heartfelt thanks to Dr. S.B. Kishore sir, event with your presence and sharing your valuable thoughts with us. We are deeply grateful to Dr. Aba Khandelwal ma'am, our honorable guest, of your esteemed presence and contribution to today's event. Your words of encouragement have further inspired both faculty members and students alike. A special note of thanks to Dr. Dinesh Gabne sir for delivering the valuable remarks and bringing this fruitful day to close. Your reflection on this session, combined with your words of wisdom, have provided the perfect conclusion to this insightful workshop. Our gratitude extends to the organizing institute, led Dr. Sachidananda Mungantiwar Knight College and its teaching staff, Sardar Patel Mahavidyalaya Chandrapur, Rajiv Gandhi College of Management Studies Sansoli Navi Mumbai, Gondwana University Gadchiroli, for their dedicated collaboration in hosting this comprehensive workshop. We also thank to Assistant Professor Sheetal Bora ma'am, our anchor, for guiding us through today's workshop to seamlessly and ensuring the program's smooth execution. Finally, I would like to thank all the participants, faculty members, researchers, and students for your active involvement throughout the day. Your enthusiasm and engagement have been crucial in the workshop success. As we conclude the remarkable day, I hope the knowledge and idea exchange will continue, inspire the guide us in our research endeavor. We look forward to see the positive impact to this discussion in the day of to come. Thank you everyone for your time and contribution. We hope to meet again future events of a similar success. And special thanks to our technical and a non-technical team for a technical support, Adil Sheikh sir, and our backbone of a workshop, Sumit Petkule, Shital ma'am, Shubham Divse, Jai Bharat Dubdube, Nikhil Mosamwar, Sadhna ma'am. Now over to Shital ma'am. Yes, sir, all those who have directly or indirectly supported us in making the event successful. So thank you to all of them all. We hope today's discussion will inspire you to embark on innovative research with integrity,
With that, we come to the official close of today's workshop. The program will be concluded with national anthem. विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे कामे तव जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. Certificate will be given on the counter. Kindly collect it. Santosh sir. क्लोज कर दो इसको क्लोज कर दो.